हाउस नहीं आते, तो ये नोट कर लिया जाए कि हम लोग तो पूरी आदर के साथ आप करते हैं सर, वो थोड़ी सा अवहेलना करते हैं। टाइट करिएगा, आज जब आए डांटिएगा। ऐसा है, अ वेरी सीनियर मिनिस्टर, a very capable minister, Sri Dharmendra Pradhan ji is present here. The government is duly represented by a very, very senior minister. Papers to be laid on the table. Papers to be laid on the table. Sri Nityanand Rai. कार्यवाही के क्रमांक संख्या 1 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। श्री अजय कुमार। कार्यवाही में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। डॉक्टर सुभाष सरकार। महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यवली सूची की क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। नमस्कार। रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। A copy in English and Hindi of the 25th report of department related parliamentary standing committee on external affairs, 17th Lok Sabha, on action taken by the government on the observations and recommendations contained in the 20th report of the committee on demands for grant of the Ministry of External Affairs for the year 2023-24. Report of study visit of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Dr. Sumer Singh Solanki. माननीय सभापति महोदय, मैं अपने नाम के सामने उल्लेखित अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के दिनांक 24 अगस्त 2023 से 29 अगस्त 2023 तक हेवलॉक द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, महाबलीपुरम और मुंबई के अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर रखता हूँ। Statements of the department related Parliament Standing Committee on Social Justice and Empowerment, श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 6 पर यथावत सूचीबद्ध सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति 2023-24 का 36वां, 47वां और 49वां प्रतिवेदन की अंतर्दृष्टि टिप्पणियां / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद। Matters raised with permission, Shri Khiru Mehto demand to reschedule Rajdhani Express running between New Delhi to Ranchi. महोदय, आपके संज्ञान में देते हुए माननीय मंत्री रेल से निवेदन करते हैं कि रांची राजधानी जो रांची से चलकर है सो नई दिल्ली आती है और नई दिल्ली से रांची जाती है, उसमें जन सुविधा के लिए हम निवेदन करते हैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से कि है सो इसकी समय को है सो घटाया जाए। जो 5 बजे खुलती है और एक तरफ से गढ़वा तरफ 6 बजे खुलती है, उसको जो है सो 3 बजे किया जाए, जो समय पर है सो नई दिल्ली 9 साढ़े 9 बजे पहुंच सके। अभी 11 साढ़े 11 12 बजे तक पहुंचती है। हम निवेदन करते हैं आसन के माध्यम से कि रेल मंत्री इसको सुधारें, समय को चेंज करें। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय खीरू जी। माननीय श्री राजीव शुक्ल जी, कंसर्न ओवर पुअर स्टेट्स ऑफ अंडर ट्रायल्स। Thank you, Deputy Chairman, sir.
I rise to bring to the attention of this August House the alarming state of under trials in India and the imperative for judicial reforms in light of the 70th report of the Law Commission and data from the National Crime Report Bureau. Over the past decade, the under trial population has consistently risen, peaking in 2021 to 76% of all prison inmates. The concerns surrounding under trials are multifaceted, from the disproportionate arrest of resourceless individuals to the prevalence of violence and abuses in jails, the criminalization by prison authorities leading to potential fatalities adds a critical dimension to this crisis. सर, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि 76 जितने कैदी हैं देश भर में 76% अंडर ट्रायल हैं। अदालत 4-4, 5-5 साल ले रही, कोई फैसला नहीं करती हैं। और अभी संजय किशन कौल ने सुप्रीम कोर्ट्स के जो जज हैं उन्होंने कहा कि भाई जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं, जमानतें दें लोगों को। 4 साल बाद आप फ्री करते हो, क्विटल कर देते हो, उनको रिहा कर देते हो। 4 साल उनकी ज़िंदगी के बर्बाद हो गए। तो ये अंडर ट्रायल्स की समस्या इतनी बड़ी है जुडिशरी में, और जुडिशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने भी कई बार ये बात कही है। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स होते नहीं, क्रिकेट में रिफॉर्म्स, हॉकी में रिफॉर्म, मेडिकल काउंसिल में रिफॉर्म, सब चीज़ में जुडिशरी कहती रिफॉर्म करो, लेकिन मेरे यहाँ कोई रिफॉर्म ना करो, जुडिशरी में कोई रिफॉर्म ना हो। जैसा चल रहा है वैसे ही उनका जो है वो चलता रहे, कोलिजियन सिस्टम जैसा चलता रहे, जो जज जैसे बनते रहें, और किसी चीज़ में अपने यहाँ कोई रिफॉर्म नहीं। बाकी जगह पे खुद इतना जस्टिस डिले करते हैं कि 76% अंडर ट्रायल्स हैं कैदी, जो बाद में तमाम उनमें छूट जाते हैं, रिहा हो जाते हैं, अपराध साबित नहीं होता, लेकिन वो जेलों में पड़े रहते हैं। और 80-80, 90-90 साल की महिलाएं बंद है बेचारी, चिड़िया भी नहीं मार सकती, लेकिन आरोपों में बेवजह बाद में रिहा करते हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। मैं लॉ मिनिस्टर से, भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस समस्या का कोई निदान निकालें, और ये जो अंडर ट्रायल्स हैं, जिनका ट्रायल तो चल रहा है लेकिन जो है वो डिले की वजह से जेलों में पड़े हुए हैं, इसका कोई रास्ता निकालें। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राजीव जी। डॉक्टर शांतनु सेन जी, डिमांड फॉर इंस्पेक्शन by teams of central government in different states to check the implementation process of different government projects. Good morning, sir. As you all know that maintaining the basic essence of cooperative federalism provided by the Constitution of India, though it is hardly maintained nowadays, several projects run in several states in which there is certain central share, there is certain state share. But unfortunately, in the name of investigation, we have seen that this investigating team, they are serving the basic political interest of the ruling party of the center. Let me cite you certain examples, sir. In the name of national level monitors and in the name of central team, I will cite you 4 examples. So far, this MGNREGA project is concerned in our state of West Bengal. 16 central team led by Government of India, that too above the rank of joint secretaries, they have visited. 32 national level monitors, which constituted several NGOs and persons, of course appointed by Government of India, they visited. Action taken report submitted in respect to all observations of those committees. Last action taken report was submitted on 27 June 2023. Unfortunately, no response since then. 22 lakhs of people, they are getting deprived of their basic rights, which it's amounting to nearly 7,500 crore rupees, sir. Sir, unfortunately, they are raising the question of corruption. This payment is being paid by direct benefit transfer mechanism through banks. So where is the scope of corruption, sir? Sir, so far the complaint of fake job card is concerned. Let me tell you, our state, West Bengal, ranks second. 99.68% job card and Aadhaar link has been done in our state of West Bengal. Only Andhra Pradesh, which is having 99.7%. Let me cite you some example of double engine Sarkar. In Gujarat, it's only 53%. In Assam, it's only 57%. In Maharashtra, it's only 43%. But it's only Bengal which is being deprived time and again, sir. So far the Awas Yojana is concerned. Let me tell you, 69 teams visited the state of West Bengal in the name of inspection of this Awas Yojana project. Our Minister of West Bengal, he came to meet the Central Minister on 7th November 2022. On 24th of November, an allotment of 11,36,000 households were given. In due course of time, within a month,
all the documents were uploaded in the portal. Then several teams visited once again. There were several queries in the month of May 2023. Action taken report submitted in June 2023. Then there was a silence of 6 months. Then once again on 5th of November, several questions were given and that were answered on 20th. Time is over, Dr. Saab. No, not going on record now. It's already, time is over. I have nothing in my hands. Please, Dr. Saab, thank you. माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी, ये सिर्फ 3 मिनट समय पहले से तय है, हम चाहे भी तो एक्सटेंड नहीं कर सकते. प्लीज 3 मिनट बोले. धन्यवाद उपसभापति महोदय, मुझे महत्वपूर्ण बातों को उठाने के लिए आपने समय दिया. कोरोना 2021 के बाद 22-23 में अचानक 11% बढ़ गया और बढ़ने के कारण इसमें 45 से 60 वर्ष के लोगों की जान गई. ये 36 राज्यों का आंकड़ा है और केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा ये आंकड़ा उठाया गया है. हम सरकार से ये मांग करते हैं कि कोरोना ऐसी महाबीमारी को रोकने के लिए और जो बच्चे हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कोरोना के बाद जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं, उस पर लगाम लगावें और समय सीमा के अंदर 36 राज्य और खासकर बिहार में इस बात की जानकारी लें कि ऐसे मौतें कितने हुई है बच्चों की और उस पर निगरानी करके उसका इलाज समुचित हो, इसकी व्यवस्था करें. यही हमारी मांग है. धन्यवाद. धन्यवाद माननीय रामनाथ जी. Honorable Sri Ajit Kumar Bhuyan, your subject is concern over threats to Tulsi River in Assam. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving this opportunity to raise an important issue pertaining to national importance. The Tulsi River in Assam, a habitat of the endangered Ganges River dolphin, but illegal sand and mining and the existence and construction of bridges are altering the water flow regime, posing a serious threat to the aquatic mammal and to the riparian communities that depend on the Tulsi for their livelihoods. Indiscriminate and illegal mechanized sand mining, unplanned industrial growth, and construction activities have destroyed the Tulsi River, the unique habitat of the endangered Ganges River dolphin, sir. The Assam government declared the river dolphin the state aquatic animal in 2008, and the central government notified it as the national aquatic animal in 2009. A report brought out by the Wildlife Institute of India, Dehradun, Uttarakhand, titled Status of Ganges River Dolphin in Tulsi River, Assam 2021, states based on long-term observations in Tulsi and elsewhere, it is now understood that dolphins prefer habitat where depth is greater than 2 meters. During our recent survey in Tulsi River, so where the average water depth was less than equal to 1 meter. An internationally recognized river dolphin expert who has been monitoring the dolphins of the Tulsi for the past 17 years as a part of his research work on the dolphins of the Brahmaputra River system, said that India accounted for 90% of the global population of the Ganges River dolphin, and Assam accounted for 30% of the dolphin population in the country. The mere restoration of the flow of water could not restore the ecology of dolphins in the Tulsi River. There has to be a strict ban on harmful anthropogenic activities in Tulsi for a specific duration so that the river gets the time it requires for the restoration of its entire ecosystem. I urge the government through you, sir, for comprehensive and sustainable interventions for protecting Tulsi River as well as the habitat of the national
aquatic animal liver. लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ? कहाँ तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा और लोकल ट्रेन वाला बुलेट ट्रेन में यात्रा करेगा। ऐसे नारे हम सुनते रहे और धरातल पर स्थिति ये हो गई कि रेलवे की पुरानी यात्री सुविधाएं भी रसातल में चली गईं। महोदय, देश में रेल को आम जनता का यातायात माना जाता है। क्या सरकार इस सस्ते सार्वजनिक परिवहन को असुरक्षित, असम्मानजनक और असुविधाजनक बना देगी? उपसभापति महोदय, आम जनता के लिए वेटिंग टिकट की समस्या इतनी बड़ी त्रासदी है कि इसे रेल मंत्रालय शायद समझना ही नहीं चाहता। महीनों पहले भी अगर ट्रेनों का टिकट लेने का प्रयास करिए तो अधिकांश टिकट वेटिंग में ही मिलेगा या फिर तत्काल के नाम पर आपकी जेब लूटी जाएगी। आजकल तो डायनामिक फेयर के नाम पे डकैती चल रही है महोदय। अभी पिछले महीने नवंबर में मुंबई से पटना जाने वाली सुविधा एक्सप्रेस में सेकंड एसी का फेयर 9,300 शब्द। ठीक है सर, मैं उस शब्द को वापस ले रहा हूं। मैं पुनः लूट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। डायनामिक फेयर के नाम पे लूट चल रही है। अभी पिछले दिनों नवंबर में मुंबई से पटना जाने वाली सुविधा एक्सप्रेस में सेकंड एसी का फेयर 9,395 रुपए पहुंच गया था। बेस फेयर 2,950 रुपए था, उस पे 5,900 का डायनामिक फेयर। गजब की लूट है। क्या रेल मंत्रालय ऐसी कोई तरकीब विकसित नहीं कर सकता जिसमें वेटिंग टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए अलग से कोच लगाया जाए? उपसभापति महोदय, रेलवे में सुरक्षा और रेलवे की सुरक्षा आजकल दोनों भगवान भरोसे हैं। रेल दुर्घटनाओं की बाढ़ आ गई है। उड़ीसा के ट्रेन हादसे में मारे गए सैकड़ों यात्रियों के परिवारों के आंसू अभी सूखे नहीं है। पहले रेल हादसे होते थे, रेल मंत्री जवाबदेही लेते थे, जमीर की आवाज पर इस्तीफा दिया करते थे। अब शायद जमीर की आवाजें नहीं होती हैं क्योंकि रेल मंत्री जवाबदेही नहीं लेते, इस्तीफा नहीं देते। भाजपा की सरकारों में इस्तीफे नहीं हुआ करते। यात्रियों की सुरक्षा की सुध भला कौन ही ले जब मंत्री जी को फुर्सत ही नहीं है। 25 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुंगावली स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार कर रही महिला से जीआरपी अधिकारी गैंगरेप करता है। रेल मंत्री जी वंदे भारत के वीडियो ट्वीट करके अपडेट करते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि कभी पटना, लखनऊ, इलाहाबाद से दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों के डिब्बों का वीडियो शूट करा करके आप ट्विटर पे डालिए, तब समझ में आए कि असलियत कहां पर है और सच्चाई कहां पर है। बुलेट ट्रेन की बाढ़ जो रहे इस देश के पास, लोकल ट्रेनों की सुविधाएं लगभग समाप्त हैं। आरपीएफ का जवान चेतन सिंह ट्रेनों में पूछ करके लोगों को गोली मारता है, लेकिन सरकार एक ट्वीट तक करना गवारा नहीं समझती। मंत्री जी एक शब्द बोलना नहीं चाहते। इन सुविधाओं को सुधारा जाए, मेरा यह अनुरोध है। धन्यवाद। माननीय श्रीमती ममता मोहंता जी, डिमांड टू स्टार्ट रेलवे सर्विसेज फ्रॉम बारीपदा टू बालासुर इन ओडिशा। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। महोदय, किसी भी अंचल का विकास तभी संभव हो जब वही अंचल को यातायात का संपूर्ण सुविधा हो। देश के किसी भी स्थान से वही अंचल को सुविधा में पहुंच जा सके, वो विमान सेवा हो या रेल सेवा हो या बस सेवा हो, कोई भी सेवा हो। ओडिशा के मयूरभंज जिला में कप्तिपदा सब डिवीजन है जहाँ के लोग रेल सेवा पाने से वंचित है। भारत के स्वाधीन होने के 75 साल हो गया। दुख की बात है ये है कि ये जिला के कप्तिपदा सब डिवीजन के लाखों लोग रेल सेवा से वंचित है। इस इलाका के लोग रेल सेवा पाने के लिए 100 किलोमीटर दूर यातायात करते हैं। मेरे रेल विभाग से प्रस्ताव है और अनुरोध है कि बारीपदा से खुंटा, उदला, कप्तिपदा, नीलगिरी होके बालेश्वर स्टेशन तक रेल कनेक्ट किया जाए। ये रेल कनेक्ट होगा तो इस इलाका के लोग रेल सेवा पा सकते हैं और भुवनेश्वर, दिल्ली जैसे देश के सभी जगह सुविधा में आ जा सकते हैं। इस अंचल के रेल सेवा होगा तो ये अंचल का विकास भी होगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मोहंता जी। नाउ डॉक्टर अमर पटनायक जी, डिमांड फॉर होम्स टू द पुअर ऑफ ओडिशा अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। Thank you, Chairman, sir. Chairman, sir, the Centre launched the Prime Minister's Awaaz Yojana with the very laudable objective of housing for all, to provide pakka houses with basic amenities to the homeless or those living in dilapidated kacha structures. So under this,
Orissa government proposed housing assistance to be covered under the PMOY for 15 lakh houses. This included houses to be provided to a large population of scheduled tribes and scheduled caste, and also to people who were affected by Fani cyclone. Sir, in December 2021, Honorable Chief Minister Naveen Patnaik wrote a letter to the Prime Minister seeking more houses for cyclone-hit Fani families and also the poor in the tribal and backward districts of the state. So, but unfortunately, after 3.5 years, despite persuasion by all the members of parliament in both the houses of the Biju Janata Dal and also submitting a memorandum to the concerned minister, only 8 lakh houses have been sanctioned and still 7 lakh houses have been left behind. The result is that there is a large chunk of people in these tribal areas who could not get houses even now. In order to support those deprived of their right to shelter, the government of Orissa, under the leadership of Honorable Chief Minister Naveen Patnaik, has come out with the Mo Ghar scheme, that is My House scheme, in 2023. It's a credit-linked subsidy scheme. Now, this was done because there was a large chunk of people who could not be covered under the central scheme. So now, under this scheme, the loans up to 3 lakh rupees are being provided, and most significant thing is persons with disabilities are being covered, which is not being covered under the Prime Minister's Awas Yojana. And the financial implication is that in 2 years, rupees 2,150 crores are proposed to be met from the state budget. So now the request, I would like to, through you, urge the government that these 7 lakh houses, which have not been provided by the central government, could be provided to those people in Orissa who have been deprived of this. This would actually ensure that the people who are actually in the lower strata of society in rural part of Orissa get this benefit, and the objective of housing for all actually gets achieved. In a state like Orissa, which is having a population, large population of rural, living in rural areas, this would actually help them to, come up to a stage in life when their basic capabilities would also improve because of this facility. Thank you, sir. Thank you. Dhanyawad, Dr. Amar Patnaik ji. Mani Dr. Sasmit Patra ji need to address the issues of the development and welfare of tribals in Odisha. माननीय अध्यक्ष महोदय, मोर मातृभाषा ओडिया रे कहिया पे मते सुजोग देइथवारु आपनको अनेक अनेक धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक सबु बेले आदिवासी भाई भौणी मानकर विकास पाई चेष्टित रहिचंती एवं से विषय रे अनेक कार्यक्रम ओडिसा रे ग्रहण करा जायछि। जेहेतु समर स्वल्पता विषय रे मु विशेष किछि से विषय रे कहि पारु नाही, किंतु तीनिटी प्रमुख प्रसंग रहिछि आज मध्य ओडिसा रो आदिवासी भाई भौणी मानकर आपणक माध्यम रे मु सरकार को पाखरे रखिया चाहूछि। प्रथम विषय होछि 5टी भाषा जहाकु कि हमर आदिवासी भाई भौणी माने ओडिसा रे कुहंती हो, मुंडारी, भूमिज, कुई एवं सौरा भाषा। एई 5टी भाषा को 8म अनुच्छेद रे भारतर संविधान रे लिपिबद्ध करिवार अंतर्भुक्त करिवार आवश्यकता रहिछि। एहा पई माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक बारंबार चेष्टित रहिचंती एवं चिट्ठी लिखिचंती एवं ओडिशा कैबिनेट मध्य कुई एवं सौरा भाषा को नेइकिरी कैबिनेट रो अनुमोदन मध्य रहिछि। द्वितीय प्रसंग सेटा होछि 169 कम्युनिटीज ओडिशा रे आज मध्य अछंती जो माने कि अनुरोध करथिले सरकार को माध्यम रे एवं ओडिशा सरकार मध्य केंद्र सरकार पाखु पठेइथिले जे सेमानकु ओडिशा रो एसटी लिस्ट रे अंतर्भुक्त करा जाऊ। आज पर्यंत से कार्यक्रम मध्य करा जाय नाही। माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक बारंबार अवगत करैचंती चिट्ठी लिखिकिरी एवं आज पर्यंत जेहेतु सेटा हेई नाही सेमानकर आशा आकांक्षा रहिछि कि ए कार्यटी तुरंत करा जाऊ। तृतीय एवं शेष गोर विषय रहुछि सेटा होछि केंदु पत्र को नेइकिरी पाखापाखी 18% जीएसटी लागू करा जाउछि केंदु पत्र उपरे। मान्यवर ओडिशा रे पाखापाखी 10 लाख लोक एवं विशेष करी हमर आदिवासी भौणी माने केंद्र पत्र तोलाड़ी भाव में ताकर जीवन निर्वाह करिथांती कि जो 18% जीएसटी जो लागू करा जाइछि एते ताकर जीवन जीविका व्याघात होछि। सेति पई माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक
केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखिंट एवं अनुरोध करिसेंती ये 18% जीएसटी को संपूर्ण भाव में विड्रॉ करा जाऊ। एथिपाई मोर आपणक माध्यम रे सरकार को अनुरोध हो मुंडारी भूमिज सौरा एवं कुई भाषा को 8म अनुच्छेद रे स्थान दिया जाऊ संविधान रो। द्वितीय रे जो 169 कम्युनिटी रही से एसटी लिस्ट सामिल करा जाऊ। एवं तृतीयतः जो केंदुपत्र उपरे 18% जीएसटी लागू करा जाइछि ताकू संपूर्ण भाव में छाड़ करा जाऊ। आमर नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक बारंबार चेष्टित रही आमे आशा करूछु सरकार एप्रति ध्यान देवे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर सस्मित पात्रा जी। माननीय श्री नगेंद्र राय जी, इशू ऑफ फेंसिंग ऑन बांग्लादेश बॉर्डर। थैंक यू उपसभापति महोदय। मैं भारत एवं बांग्लादेश के जो बॉर्डर है इसका बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बड़े दुख की बात है कि हमारे बांग्लादेश बॉर्डर में इलीगल माइग्रेंट होता है जो इंडिया में आके अपना वोटर लिस्ट में नाम लिखाता है। जैसे तृणमूल का लीडर हमने सब इंडिया का आदमी सुना है कि बांग्लादेश के नागरिकों को इधर इंडिया में ले आके इसको वोटर लिस्ट में लगाता है, जिसका जैसे ऐसा कर रहा है कि भाई ये फॉरेन अफेयर्स का काम कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। देखिए ये जो एक्टिविटी हो रहा है एंटी सोशल एक्टिविटी चल रहा है, ये भारत के लिए बहुत खतरा है। तो सर ये ऐसे इसलिए हो पा रहा है कि ओपन फेंसिंग जो अनफेंसिंग इलाका है, अनफेंसिंग इलाका में दीनदार लोग घुसा जाता है इंडिया में। जैसे कैटल स्मगलिंग होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जब अनविजिबल होता है तब ये ज़्यादा होता है। और बॉर्डर में लाखों लोग इकट्ठा होके, हजारों लोग इकट्ठा होके ये काम करता है। तो देखिए बॉर्डर में जो अनफेंसिंग इलाका है, मैंने उसमें जाके देखा और मैंने बीएसएफ को कमांडर को पूछा भाई अनफेंसिंग क्यों है। बोलता है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट नहीं दे रहा है, 6 साल से लैंड अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए स्मार्ट फेंसिंग नहीं हो पा रहा है और जैसे स्मगलिंग नहीं रुका जाता है। तो मैंने पूछा तो आप गवर्नमेंट से क्यों बात नहीं किया, जो बोला हम लोग डीएम साहब से बात किया लेकिन नो रिस्पॉन्स। फिर मैंने जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का डीएम साहब का ऑफिस में गया, डीएम साहब से मिलना चाहा तो उन्होंने डिनाई कर दिया, बोला मैं काम में व्यस्त हूँ, आप एडीएम से मिलिए। तो मैं एडीएम से बात किया तो एडीएम से भी मैं वो कमांडर साहब से मिला दिया, बात करवाया, जल्द से जल्द इसको होना चाहिए। तो सर देखिए वो हमें आश्वास दिया कि देखते हैं, लेकिन सर इस तरह चलते रहेगा तो देखिए रिसेंट है वेस्ट बंगाल जो हमारे पुलिस है वो बांग्लादेशी को पकड़ा, वो उत्तर दिनाजपुर साइड में। तो सर देखिए वेरी डेंजरस, हमारे भारत के लिए बहुत खतरा है। तो किसी भी हालत में इसका जल्द से जल्द रुकना चाहिए। और अलॉटमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को भारत सरकार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जल्द से जल्द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इसको लैंड अलॉटमेंट दे दे। और सर इंटरनेशनल बॉर्डर में बांग्लादेश का इंटरनेशनल समय आपका खत्म हो गया। धन्यवाद। माननीय श्री सतीश चंद्र दुबे जी। माननीय सतीश, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय सतीश चंद्र दुबे। धन्यवाद सभापति महोदय। रेलवे सर्विसेज बिटवीन वर्ष 2007 में सितौनी तमकुही रेल लाइन का शिलान्यास तत्कालिक रेल मंत्री उस समय के द्वारा किया गया था। पनियाहवा से छितौनी होते हुए रेल लाइन नारायणी नदी के किनारे होते हुए बिहार प्रांत के मधुबनी, धनाहा, खैरवा टोला इत्यादि स्थानों से गुजरेगी तथा कुर्शीनगर के तमकुही रोड रेल लाइन स्टेशन पर एक कप्तानगंज थावे रेल लाइन से मिल जाएगी। वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक जब मैं लोकसभा का सदस्य था, अनेकों बार पत्राचार किया, सदन में आवाज़ उठाया, धन स्वीकृत भी हुई, कार्य भी कुछ हुए, अभी तक ठोस कार्य नहीं होते हुए दिख रहा है। अधिकारियों से वार्ता करने के बाद बताया गया कि धन के अभाव में कार्य पूरा नहीं हो रहा है। इस रेल लाइन के निर्माण से नारायणी नदी के इस पार स्थित बिहार के निवासियों को बड़ी राहत
होगी और आवागमन अच्छी सुविधा सुलभ हो जाती है। हर साल आने वाले बाढ़ से अस्थायी तौर पर बचाव भी होगा। आग्रह है, चंपारण हमारा सत्याग्रह की धरती है और वहाँ के लोग आज भी 4 ब्लॉक के रेल से वंचित हैं। इस रेल लाइन से काफ़ी उम्मीद जुटी हुई है। अतः आपसे आग्रह है, निवेदन पूर्वक आग्रह है कि इस रेल लाइन को पूर्ण करवाया जाए, अधिक से अधिक धनराशि देकर। आपका संरक्षण सर, आपका संरक्षण मैं उपसभापति महोदय चाहता हूं। इस रेल लाइन को धन देकर और निश्चित रूप से इस रेल लाइन का काम पूरा कराया जाए, क्योंकि गांधी का सत्याग्रह की धरती है और चंपारण का ये बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। अतः आपसे आग्रह है कि इसको अधिक से अधिक कम समयों में अधिक से अधिक धन देकर पूरा करवाया जाए। धन्यवाद माननीय सतीश जी। Honorable Sri S. Selvagan Vethi demand to streamline the admissions to the professional arts and science courses. Honorable Deputy Chairman, sir, I rise to request the Government of India to streamline the admission process for professional courses like medicine, paramedical and engineering courses which are completed very late, extending up to October. However, the academic year of arts and science courses in all colleges and universities normally commences in June, and the admissions are normally completed in the month of July. The first semester in arts and science colleges ends in November. It's being followed by the examinations. But those who are admitted to science courses leave the institution in the middle when they get seats in professional courses. It leaves the number of vacancies in arts and science courses, which is a waste of public exchequer. Even if the universities extend the date of admissions to arts and science colleges, those who are admitted in those vacancies have very little time to prepare for their first semester examination. Sir, almost all higher secondary examinations, which are the portals for engineering and medical courses, are completed by the central and state board well before April. Mostly, the results are also published in the month of May. They spend 1 or 2 months in coaching centers which charge huge fees. This is sheer commercial exploitation. This also gives an added advantage to the well-privileged and the wealthy sections of the society. But many poor people cannot afford this. This is my opinion, is a denial of natural and social justice. Sir, this can be avoided easily if the national level G and the NEET examinations are conducted immediately a week after the qualifying examinations. Then admissions to medicine and engineering courses to be completed before the end of July itself. Only then arts and science courses will run with its full strength. Therefore, sir, I urge the government to take immediate steps to narrow the time gap between school exams and college entrances so as to ensure equal parity between all students. This would also ensure that the admission process in professional and graduation courses are conducted simultaneously, thereby resulting in reduction of dropout students in science and arts colleges. Thank you very much, sir. Thank you. Mani Shri Niranjan VC ji, regarding the establishment of a Kendriya Vidyalaya in Titlagarh, Odisha. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir, for allowing me to raise the matter of an urgent public importance regarding establishment of Kendriya Vidyalaya at Titlagarh in the district of Balangir, Odisha, in coordination with and financial support of the East Coast Railway, Bhubaneswar, Odisha. I would like to draw the kind attention of Government of India through you, sir, that the District Administration and Education Department had arranged temporary accommodation at Bhubaneswar Government Upgraded High School for the functioning of Kendriya Vidyalaya at Titlagarh. However, despite fulfilling prerequisites since November 2020, no further action has been made by the Government of India towards the establishment of Kendriya Vidyalaya. Titlagarh, being an underprivileged area, urgently requires educational support, especially through a Kendriya Vidyalaya, to benefit the children of central government employees working under
working in the Department of Railway, Postal, Bank and Insurance, Bharatiya Khadya Nigam, BSNL employees, also employees working under the government of Odisha. Hence, I urge the kind attention to direct the Kendriya Vidyalaya Sangathan authorities to expedite the pending process swiftly, ensuring the establishment of Kendriya Vidyalaya at Titlagarh in time for the upcoming academic session. The initiative aligns with our commitment to providing quality education in underdeveloped region, fulfilling the educational needs of the students belonging to the employees of Government of India and employees of the state government. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय निरंजन जी। माननीय श्री दीपक प्रकाश जी, इशू ऑफ ब्रेन ड्रेन और कोयला, तांबा, सोना, ग्रेनाइट, यूरेनियम, लिथियम, बॉक्साइट, ऐसे अनेक खनिज संपदा से परिपूर्ण प्रदेश है सर। लेकिन मैं आज इस विषय को आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि वहां पर जिस प्रकार से खनिज संपदा से परिपूर्ण वो प्रदेश है, लेकिन वहां की राज्य सरकार की नीति और नियत में खोट है सर। केंद्र सरकार के लगातार सारे फॉर्मेलिटी पूरा करने के बावजूद वहां की राज्य की सरकार आयरन और एक भी वहां पर खोलने के लिए, वो एक तरह से बंद करने के लिए विवश कर रही है सर। वहां एक भी आयरन और खुला हुआ नहीं है सर। साथ ही साथ हम सबको जानते हैं कि कोयले की यहां पर ऑक्शन होने के बाद लोगों को लीज मिल रहा है, लेकिन जमीन का अधिग्रहण उस राज्य की सरकार के नियत में खोट होने के कारण नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उद्योग और उद्योग के माध्यम से रोजगार का जो सृजन होता है उसमें कुल मिलाकर के बाधा पड़ी हुई है और वहां से उद्योग और उद्योगपति लगातार पलायन कर रहे हैं दूसरे प्रदेश में। और रोजगार के अवसर में जो लोग बेरोजगारी को तो झेल ही रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे कई अपराधी, संगठित अपराधी गिरोह में अपने आप को शामिल कर रहे हैं सर। चाईबासा उसका उदाहरण है सर। इसलिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सर। और मूल कारण क्या है महोदय कि वो माइनिंग लीज होने के बाद भी और आयरन और का जो माइंस नहीं खुलता है, उसके पीछे संगठित अपराधियों का एक गिरोह है जो इलीगल माइनिंग करते हैं, जिसका सीधा संबंध और संरक्षण वहां की राज्य की सरकार से बनता है। सबसे दुखद बात है सर। दीपक जी ध्यान रखें, जो आप कमेंट कर सकते हैं हम इसी विषय सर। अब पलायन, वहां के लोग पलायन कर रहे हैं सर। उसके पलायन के मूल कारणों को तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम केरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम केरल की बात नहीं कर रहे हैं, केरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार की भी बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ के जमीन घोटाले की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ के शराब घोटाले की भी बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर कोयले घोटाले की भी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जी आपका समय खत्म होने वाला है, आप अपने मुद्दे पर बोलिए, अपने मुद्दे पर बोलिए। महोदय, हम सब कोई जानते हैं रोजगार के सृजन के लिए। टाइम खत्म, आपका समय खत्म हो गया। माननीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, माननीय नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, इशू ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स। माननीय अशोक वाजपेयी जी, इशू ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका ध्यान ऐसे गंभीर और महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, देश में लगभग 25 लाख से अधिक चिकित्सक हैं और धरती पर जिन्हें देवता के रूप में माना जाता है कि चिकित्सक धरती का देवता है, लोगों के जीवन बचाने का, जीवन रक्षा का काम करता है। लेकिन मान्यवर, जो जिसे हम धरती का देव कहते हैं, लोगों के जीवन की रक्षा करता है, स्वयं अपना असुरक्षित जीवन व्यतीत करने का काम करता है। आए दिन ये घटनाएं बढ़ रही हैं कि अस्पतालों में जाकर अगर कहीं कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उस पेशेंट के परिवार के लोग आकर डॉक्टर के साथ जिस तरीके का मिसबिहेव करते हैं, मारपीट करने का काम करते हैं, उससे डॉक्टर अपने को असुरक्षित महसूस करता है। मान्यवर, आज हिंदुस्तान के डॉक्टरों का दुनिया में जो सम्मान है, तमाम दुनिया के विकसित देश भारतीय डॉक्टरों पर भरोसा करते हैं और उनके सम्मान के साथ अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को देने का काम करते हैं।
लेकिन हमारे भारतवर्ष में भी डॉक्टरों ने जब कभी ऐसी परिस्थितियां बनी, आप देखें कि कोविड जैसी महामारी के समय जिन्हें हमने कोविड वॉरियर कहा और सम्मान देने का काम किया, तमाम सारे लोग जब घरों में बैठे थे, डॉक्टर मरीजों के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी असुरक्षित महसूस करके काम करने का काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी इन डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। मेरा ये अनुरोध, वैसे तो मान्यवर ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं राज्य का विषय है, लेकिन भारत सरकार इसके लिए कोई विधेयक लाए और जिस विधेयक के माध्यम से कम इन चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिनको लेकर कि कोर्ट में चिकित्सकों को साथ मारपीट की गई और उसके बाद सीआरपीसी के अंतर्गत अगर डॉक्टर अपना मुकदमा कायम कराए तो उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया होती है, डॉक्टर का ट्रांसफ़र यहाँ से दूसरे अस्पताल हो गया और उसमें कभी भी कन्विक्शन नहीं होता है, न दोषियों को दंड दिया जाता है। इसके लिए अगर कोई मेडिकल ट्रिब्यूनल बने, जैसे तमाम और सेवाओं में ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, जिसमें पेशेंट का भी पक्ष सुना जाए, डॉक्टर का भी पक्ष सुना जाए, स्पेशलिस्ट भी होंगे कि डॉक्टर का कृत्य उसमें कोई निंदनीय है तो उसको दंडित किया जाए, अगर डॉक्टर निर्दोष है तो एक्सपर्ट के माध्यम से वो सारी सच्चाई सामने आ सकेगी। मैं समझता हूँ उससे डॉक्टरों की सुरक्षा भी बढ़ेगी और ज़्यादा मनोयोग के साथ वो अपना काम कर सकेंगे। मानवर तमाम ऐसे समय होते हैं, एक्सीडेंट के डॉक्टर एक्सीडेंट को झेलने का काम करता है, डेथ हो जाती उन परिस्थितियों को भी हैंडल करने का काम करता है। तमाम ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां होती हैं जिनसे डॉक्टर जूझता है, लेकिन डॉक्टर की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। माननीय, मैं आपके माध्यम से सदन से अपील करना चाहता हूं, देश के उन 25 लाख से अधिक चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा विधेयक सरकार ले आए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे, इनसे भी मेरी प्रार्थना है कि कोई ऐसा विधेयक लाए जिससे कि हम। धन्यवाद डॉक्टर अशोक वाजपेयी। माननीय एलओपी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इशू ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड्स इन वेरियस स्टेट्स इंक्लूडिंग कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल एक्सेट्रा। Sir, I wish to raise an important matter of utmost importance to the people of Karnataka and neighboring states. Karnataka is currently grappling with one of the most severe droughts in the last 123 years. A staggering 2,223 out of the total 226 talukas in the state have been adversely affected by these drought conditions. Among these, 196 talukas are experiencing severe consequences, while the remaining 27 talukas face moderate effects. The damage to crops ranges from 40% to 90% in many cases. Total estimated loss due to crop damage in the state of Karnataka is pegged at 35,162.05 crores. Compounding the severity of the situation, Karnataka is confronting a new challenge referred to as a green drought, where crops have matured yet there is no yield. In response to this critical situation, the state government has sought assistance amounting to 18,171.44 crores from the National Disasters Response Fund. This financial support is crucial for providing input subsidies, a gratuitous relief, and implementing other immediate drought relief measures. Due to low rainfall, water in various reservoirs is also at an alarmingly low level. The water storage is at its lowest in the last 5 years. Going forward, the state will also see shortage of drinking water for cattle and people. Thus, the government should realize the precariousness of the situation and under Manrega
the state has already achieved 98.15% of its percentage generated target for this year. The state government has also requested for an increase in number of working days under 150 days. टाइम खत्म हो गया 3 मिनट का ही ऑटोमेटिक The government has released various amounts 3 मिनट्स ऑटोमेटिक to provide immediate relief and assistance to the people of state. The government has taken several decisions to help farmers and people in the state, including crop damage. Sir, though my time is still 35 Sir, finished. seconds. It's already finished. No, I request you, because not only the drought in some areas, but the flood is also serious in Chennai, in our particularly our Kerala and other places, and Vidarbha is also suffering from drought in various places. But the funds from central government is not going. Though the chief ministers are coming and asking, requesting, but BJP government is not taking any interest because they have won the election. But that's why I think that people are fully supporting them. But their sufferings, they are not ready to redress it. So therefore I request you, sir, through you, I request them, please respond for these points and release the funds necessary. Thank you. Mani Dr. Ashok Kumar Mittal, concern over rising cases of human trafficking. Please send your name here. Not present. Mania Srimati Seema Dwivedi, issue of wild animals damaging the agriculture crops in Uttar Pradesh. माननीय सभापति महोदय, आज मैं सदन में किसानों से जुड़ी समस्या को सदन में रखना चाहती हूँ। महोदय, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर प्रायः किसान अपनी जीविकोपार्जन खेती के माध्यम से करते हैं। महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय कैसे दुगनी हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जैसे किसान सम्मान निधि, किसान ट्रैक्टर योजना, किसान मित्र योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आज चल रही है। प्रदेश सरकार ने भी गांव-गांव में पशुशाला को खोल करके एक पशुओं को रोकने का एक अच्छा कार्यक्रम कर रही है। महोदय, मैं आपके सामने ये कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में जौनपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, प्रयाग, सुल्तानपुर, तमाम ऐसे हमारे ज़िले हैं जो बिल्कुल नदी के किनारे रहते हैं और वहाँ पर आवारा पशु और नीलगाय, जंगली सूअर, इन सबों का इतना आतंक है कि किसानों की भारी संख्या में फसलें बर्बाद हो रही हैं। महोदय, मेरा अपना मानना है कि सरकार तो नियम बना रही है, सरकार का काम बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन महोदय मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जन सहभागिता होनी भी ज़रूरी है। जैसे लोग अपने छुट्टे पशु को छोड़ देते हैं और वो जा कर के खेतों को, फसल को बर्बाद करते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहती हूँ, जो हमारे जंगली जानवर हैं और इनको रोकथाम के लिए और जन सहभागिता बने, जन सहयोग की भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए भी कोई ऐसा ठोस कानून बनाया जाए कि लोग अपने पशुओं को न छोड़ें। मानवर, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहूँगी, किसान हमारे अपना बड़ी परिश्रम के साथ फसल को करता है और हमारे यहाँ भारी संख्या में आलू की फसल, गन्ने की फसल, गेहूं की फसल, धान की फसल, अरहर की फसल, भारी मात्रा में हमारे यहाँ ऐसी फसल पैदा होती है। लेकिन महोदय, जो मैंने देखा है आज की तारीख में, गांव-गांव में किसान अपने खेत खलिहान को रात भर जाग जाग करके इनसे रखवाली करता है, रात भर जाग जाग करके उसको घेराबंदी करता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको यह भी देखने को मिला होगा कि जो ये नीलगाय होते हैं कभी कभी सड़क को ऐसे क्रॉस करते हैं कि भारी संख्या में एक्सीडेंट होता है, बहुत लोगों की अकस्मात मृत्यु भी होती है। तो महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहती हूँ कि सरकार इसके बारे में कोई ठोस कदम उठाए और जन सहभागिता को भी साथ में लेकर के इसके बारे में रोकथाम करे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। माननीय श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, रिक्वेस्ट टू स्टार्ट वेलफेयर स्कीम्स फॉर कारपेंटर्स।
धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। मान्यवर, मैं एक देश के कारीगर समाज से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाना चाहता हूं। आपने मौका दिया, आपका धन्यवाद। मान्यवर, देश का बढ़ई समाज आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के संकल्प को तो पूरा करता ही है, साथ ही साथ छोटे ग्रामीण कारीगरों को रोजगार भी देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से इस वर्ग के कल्याण के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। मान्यवर, मैं इनकी मूलभूत समस्या पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, एनजीटी के नियमों की आड़ में अफसरशाही ने इस कारीगर समाज के काम में अनावश्यक नियम थोप दिए, जिससे इनके लिए काम करना दूभर हो गया है। इनको काम करने में प्रयोग में आने वाली छोटी आर मशीनों का वन विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि ये जंगल से कोई लकड़ी काटते ही नहीं। ये तो वन विभाग के द्वारा काटी गई लकड़ी ही के लट्ठे लेकर उन्हीं से फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाते हैं। कोई ये जंगल से लकड़ी नहीं काटते हैं, लेकिन इनकी 12 मशीनों को सील कर दिया जाता है तो चाह कर भी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि 10-15 किलोवाट तक का छोटा बिजली का कनेक्शन लेने वाले और तैयार लकड़ी से सामान बनाने वाले बढ़ई समाज के कारीगरों को एनजीटी और वन विभाग के नियमों से मुक्त किया जाए और इनको लाइसेंस प्रथा से छूट दे दी जाए, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर और भारत मेक इन इंडिया के सपने को ये साकार कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर अम्मी याग्निक जी, issues need to implement laws strictly in public spaces for safety and security of women. Thank you, sir. So the latest NCRB data has said that there has been a 4% rise in crimes against women. And it is talking about all the data of all the states where there is domestic violence on the rise, many criminal acts on the rise, violence against women. But, sir, the most important fact is public spaces where women have a right to freedom, where women have access to enjoy the same rights as everyone, cannot move freely. And acts like harassing them, lewd remarks, modesty outraging, and also committing physical violence. We have the data on rape, which I would not like to give right now, but the violence against women in public spaces is a big detrimental effect on the development of this particular nation and economy. Sir, there have been directives from the Honorable Apex Court that there should be policies, there should be schemes where you have PCR vans on the roads, continuously monitoring, CCTV cameras. There should be people on the road where they can always have some kind of a surveillance, and so that these kind of crimes don't take place in public spaces. Sir, there have been these directives for a long time now. Many states are implementing. There is very poor lighting on the footpaths and public spaces, and women do not get the right protection. Despite helplines and despite WhatsApp helpline numbers, when the victim is harassed, she does not have access to these particular helplines available to her. And that is why these crimes are occurring in public spaces all the time. Sir, I request the government, I urge through you, sir, that they see that all these strict policies, strict laws are implemented and women feel safe and secure in public spaces. Thank you. Thank you, Dr. Ami Yagnik ji. Now, Dr. Anil Sukhdev Rai Bonde ji demand to install centralized solar dryer system in the district of Amravati to dry medicinal plants. माननीय महोदय, अमरावती जिले में पिंपरी की लताएं लगाकर इस पिंपरी औषधीय पौधे की खेती लंबे समय से की जाती रही है। वर्ष में एक बार होने वाली ये फसल है। यह वेल जनवरी माह में लगाई जाती है। इस वेला के लिए हेटा या पांगरा सहायक वृक्ष लगाए जाते हैं। कई बार इस पिंपरी के फलों को निकालने के बाद में धूप में सुखाया जाता है, लेकिन बेमौसम बारिश से नुकसान की संभावना होती है। इस साल बेमौसम बारिश के कारण कटी हुई पिंपरी गीली हो गई, उस पर फंगस आया, जिससे ये औषधि वनस्पति पिंपरी किसी काम की नहीं रही। पिंपरी के इस वेली को यंत्र के माध्यम से सुखाया गया तो प्राकृतिक खतरे से बचा जा सकता है। आमतौर पर 150 से 250 हेक्टेयर पर पिंपरी का उत्पादन होता है और पूरे देश भर में आयुर्वेदिक के इसमें यूटिलाइज किया जाता है।
तो इससे सौर ऊर्जा पे आधारित सुखाने के मशीन से इसका बचाव किया जा सकता है। ये पिंपरी वेल के आधार के लिए हेटा और पांगरा वृक्ष लगाए जाते हैं। इनके पन्ने जानवरों का खाद्य करके उपयोग में लाया जाता है, लेकिन कुछ सालों से पांगरा के ऊपर बुरशीजन्य बीमारियां आ रही है। उसकी वजह से यह पांगरा के वृक्ष विकसित नहीं होते। उनका परिणाम पिंपरी के ऊपर भी होता है। पिंपरी वैली के ऊपर भी मर बीमारी का प्रादुर्भाव ज़्यादा हो रहा है तथा वायु जल परिवर्तन के कारण पिंपरी उत्पाद के ऊपर भी बहुत परिणाम देखने को मिल रहा है। इसलिए सरकार से विनंती है कि औषधि वनस्पति पिंपरी पे आने वाला मर रोग, आधार वृक्ष हेटा और पांगरे पे आने वाला बुरशीजन्य बीमारियाँ तथा वायुजल के परिवर्तन से होने वाले नुकसान, इनके लिए अधिक संशोधन किया जाए तथा पिंपरी यह औषधि वायु जल के परिवर्तन पर आधारित बीमा में अंतर्भूत की जाए, ताकि औषधि वनस्पति का उत्पादन करने वाले किसान परंपरागत पिंपरी का उत्पादन जो कर रहे हैं उनको संरक्षण मिलेगा। उसका उपयोग आयुर्वेद में हो रहा है, वह निरंतर शुरू रहेगा और किसानों को होने वाले नुकसान को संरक्षित करने वाले बीमा के माध्यम से किसानों को बचाया जा सकेगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, अमरावती जिले में पिंपरी औषधीय पौधों की फलों की कटाई के बाद में सुखाने के लिए एक अभिनव योजना के रूप में सौर सुखाने का केंद्र सोलर ड्रायर शुरू करें और पिंपरी को हवामान आधारित बीमा में अंतर्भूत करें। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले माननीय सदस्य को मैं आमंत्रित करूं, उसके पहले एक सूचना माननीय सदस्यों के लिए। ऑनरेबल मेंबर्स, एज यू आर अवेयर, the short duration discussion on the economic situation in the country was not concluded yesterday. Considering the interest generated, it has been decided to allow the honorable members who wish to participate in the discussion to give their names to the table office through their party leader / whip by 1 p.m. today. Dr. Sikandar Kumar, concern over insufficient supply of electricity in Pangi Valley of Himachal Pradesh. धन्यवाद सर। माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के पांगी घाटी में विद्युत आपूर्ति की कमी के बारे में दिलाना चाहता हूं। आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी पांगी घाटी जनजातीय क्षेत्र में विद्युत की कमी है। घरों की जनसंख्या करीब 25,000 है तथा विद्युत आपूर्ति 950 किलोवाट है, जबकि घाटी की जरूरत लगभग 11-12 मेगावाट की है। उपरोक्त 950 किलोवाट भी करीब 12 वर्ष पहले बहाल की गई थी, लेकिन आज दिन तक कोई सकारात्मक पहल इस संदर्भ में नहीं की गई है। 7-5 होकर 33 किलोवाट लाइन, जिसका कुछ खंड भूमिगत स्वीकृत था, लेकिन करीब 8 वर्षों से उपरोक्त कार्य बंद पड़ा है। विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि उक्त 33 किलोवाट पर करीब 35 करोड़ खर्च हो गए। ना तो संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया और ना ही आज तक उक्त 33 किलोवाट को पुनः आरंभ किया जा सका है। विद्युत बोर्ड बिल्कुल मौन है। घाटी में करीब 8 नाले तथा चंद्रभागा नदी बहती है। उक्त नदी नालों का दोहन किया जा सकता है। अगर एक नाले पर कहीं भी पावर हाउस का निर्माण किया जाता है तो विद्युत की यह समस्या हल हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से क्वेश्चन नंबर 31 श्री राकेश सिन्हा। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभा पटल पर रख दी गई। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री राकेश सिन्हा। सभापति महोदय, वनरेबल ट्राइब जो विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय हैं, उनकी स्थिति 1947 से लगातार कमज़ोर होती गई है, लेकिन 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर विशेष ध्यान दिया और जनजातीय जनमन योजना लागू की गई। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, चूँकि इस योजना को 75 विशेष रूप से कमज़ोर ट्राइब के लिए लागू किया गया है, विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा इसे लागू किया जाता है, उसका कन्वर्जेंस होता है, इसमें जनजातीय मंत्रालय क्या कर रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य राकेश सिन्हा जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सदन में लाया है और माननीय सांसद राकेश सिन्हा जी शोध कार्य के साथ काफ़ी जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं और अभी भी मेघालय के कई गांवों को
कोंगथोंग, संखासी, मांग जैसे कई गांव को जो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है उस पर गोद लेकर के काम करते हैं। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, ये बात सही है कि यह पहला अवसर है देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जब एक संवेदनशील सरकार, संवेदनशील व्यक्तित्व और संवेदनशील कार्यक्रम का सूत्रण करने का एक बृहद कार्य योजना तैयार किया गया है। और इसकी पृष्ठभूमि में इस समय देश में जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया है उनका भी काफ़ी संवेदनशील पृष्ठभूमि इस दृष्टि से कि राष्ट्रपति महोदया देश के सर्वोच्च नागरिक के पद पर आसीन होने के बाद लगातार देश के अंदर विभिन्न राज्यों में उनका जहाँ भी कार्यक्रम बना समय निकालकर स्पेशली प्रमुखता के साथ उन वर्गों के साथ जिन्हें देश ने पीवीटीजी के रूप में पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप वैसे लोगों के साथ मिल कर के इस बात की जानकारी भी ली और उनके बारे में चिंता जाहिर की। और एक संवेदनशील प्रधानमंत्री होने के नाते इस देश में पहली बार प्रधानमंत्री जनमन यानी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का 24,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का गणनांकित करते हुए इस योजना को प्रारंभ करने का इसी वित्तीय वर्ष से प्रारंभ किया है। सभापति महोदय, मैं इसके थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना 1971-72 के समय में एक विशेषज्ञ समिति बनी थी और एससी दुबे के अध्यक्षता में, और बाद में एक रांची यूनिवर्सिटी के बहुत प्रख्यात एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर एलपी विद्यार्थी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स की गठन की गई थी। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में एक इस बात को देखा गया कि जिस तरीके से देश की पंचवर्षीय योजनाएं चल रही है और जिस तरीके से प्राथमिकताएं तय हो रही है उसमें समस्त देश के जनजाति क्षेत्र पिछड़ रहे हैं। पिछड़ने के कुछ कारण इस तरीके से कि सुदूरवर्ती क्षेत्र, पहाड़ी एरिया, उनके जो डेमोग्राफिक पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। और दूसरा, जो उन दिनों में सत्ता में रहे वो अपनी प्राथमिकता को ज़्यादा तय किया बजाय उन लोगों के जिनको आवश्यकता थी। और इसलिए उस समय में एक नीति निर्धारण की गई 74-75 में कि टीएसपी एरिया, ट्राइबल सब प्लान एरिया, राज्यों को भी और सेंटर भी टीएसपी के आधार पर राशि आवंटित करते हुए सुनिश्चित करेगा। लेकिन उसमें भी इस बात को ध्यान नहीं रखा जा सका, इस बात के लिए उसमें मूल्यांकन किया गया, उसमें सारी चीज़ें देखी गई, एक आबादी निर्धारित किया गया कि जो 500 की टोले होंगे, बस्ती होंगे, 300 के बस्ती होंगे, ऐसे आबादी क्षेत्र जो ट्राइबल होंगे, सामान्य क्षेत्र से अलग, उनको प्राथमिकता दिया जाए। लेकिन मैं इस सदन में आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को आज लक्ष्य बनाकर जनमन योजना के तहत, पीएम जनमन योजना के तहत किया जा रहा है, उसमें वो 300-100 से भी कम, यानी जो पिछले 75 वर्ष में हमेशा पिछड़ते रहे, जिनकी आबादी 100 से कम है एक एक टोले में, पीवीटीजी टोले में, और वो अंडमान निकोबार से लेकर देश के विभिन्न राज्यों के 75 पीवीटीजी ग्रुप को इस योजना में सम्मिलित करते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि सामूहिक रूप से हमारे जो मंत्रालय हैं, 9 मंत्रालयों के माध्यम से उनके लिए जो मापदंड है उसको रिलैक्स करते हुए योजनाबद्ध तरीके से कि अमृत काल में
हम वैसे गांव तक पहुँचे जहां आज़ादी के बाद कभी देश का कोई भी व्यवस्था पहुँच नहीं पाई थी। और इसके तहत मैं सभापति महोदय बताना चाहता हूं कि जैसे ग्रामीण विकास के माध्यम से देश में पीएम आवास योजना चल रही है। इन समुदायों के लिए पीएम आवास योजना में लागत भी बढ़ाई गई है और दूसरा पूर्ण रूप से उन गांवों को आच्छादित करने का सुनिश्चित किया गया और 4,90,000 नए आवास इन परिवारों को दी जाएगी जो पीवीटीजी समुदाय के हैं। इसी तरीके से 1,000 मोबाइल हेल्थ वैन प्रारंभ किया जाएगा इन गांव के लिए। 500 नए छात्रावास एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से 500 नए छात्रावास इन परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा में नए तरीके से इनको अवसर देने का काम करेगा। तो इसी तरीके से 2500 नए आंगनबाड़ी केंद्र, जहां पर आबादी बहुत कम है वैसे गांव में 2500 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। और इसके साथ साथ ही हमारे मंत्रालय के द्वारा बंधन केंद्र के माध्यम से रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम के लिए 500 केंद्र खोले जाएंगे। स्पेशल तरीके से टेलीकॉम डिपार्टमेंट के माध्यम से 3000 गांव में नए टावर लगाए जाएंगे ताकि वो गांव जो इन सारे चीज़ों से अछूता रहे हैं वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। और सही तरीके से जो पीएम जनमन है यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को अमृतकाल में सफल किया जाए। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री राकेश सिन्हा। सभापति महोदय, मैं थोड़ा आश्चर्य में हूं कि ट्राइबल इशू पर विपक्ष क्यों नहीं सुनना चाहता। प्लीज मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है कि ये 75 जो कमज़ोर समुदाय हैं, जनजातीय समुदाय हैं, जिनका अस्तित्व तो लगभग मिट जाता है कि 2014 में मोदी सरकार नहीं बनती। कई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही हैं, वो राज्य सरकारों के साथ चल रही है। तो जनजातीय मंत्रालय किस प्रकार से राज्य सरकारों के साथ समन्वय करते हुए इन योजनाओं को लागू कर रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। ये योजना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड तरीके से किया गया है और सभी राज्यों को इसमें सुनिश्चित किया गया है। मैं इस सदन में ये बताना चाहता हूँ कि 2001 और 2011 के जो जनगणना के आंकड़े हैं उसके अनुसार 11 में जो जनगणना के आंकड़े आए उसमें बहुत सारे पीवीटीजी समुदाय की जनसंख्या में कमी आई और इसलिए सभी मुख्यमंत्री को संवेदनशीलता के साथ इस बात का ध्यान रखने के लिए कि इन समुदायों में जो संख्या की गिरावट आई है उसकी शोध खोज करे। और टीआरआई जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको हमने स्पेशली इसका टास्क भी दिया है अलग से कि इन सारे चीज़ों को शोध करके कुछ जगहों में ये देखा गया है कि हुई है और कुछ जगह में मृत्यु दर ज़्यादा है। आज मैं जिन योजनाओं का उल्लेख किया उन योजनाओं के पीछे यह उद्देश्य है कि यदि हम 1000 मोबाइल हेल्थ मोबाइल वैन प्रारंभ कर रहे हैं तो इसके पीछे यही है कि उनको हम सही तरीके से स्वास्थ्य की सुविधा दिलाएं और 100% आयुष्मान भारत का कार्ड उसका बने और उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। श्री अमर पटनायक, थर्ड सप्लीमेंट्री। Thank you, Chairman, sir. Sir, through you, I would like to ask this question. What is the reason behind merging two major and vastly different central initiatives, the Development Action Plan for Scheduled Caste and the Scheduled Tribe component, into the Prime Minister's Social Inclusion Mission for Welfare of SCs and STs? I believe the National Commission for Scheduled Tribes has also taken some kind of an objection to this because they think that the problems of scheduled tribes and scheduled castes are completely different. Honorable Minister. माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस तरह से कुछ नहीं जो उनका सूचना है हो सकता है कि उसमें
पूरी सूचना उनको प्राप्त नहीं हुई है। मैं स्पष्ट कर दूं कि ट्राइबल अफेयर्स का गठन ही इसलिए किया गया है कि सारे डेवलपमेंट प्लान को हम फोकस हुए में ट्राइबल एरिया एंड ट्राइबल के लिए बनाएं और वो स्पष्ट तरीके से जो STC कंपोनेंट होता है, शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट राशि का आवंटन होता है, वो इस देश के लिए 1,15,000 करोड़ रुपया की व्यवस्था विभिन्न योजनाओं के माध्यम से की गई है। श्री साकेत गोखले। Thank you very much, sir. Sir, because the question pertains to tribal communities that are vulnerable and especially in the state of Meghalaya, protection of vulnerable languages is also a big constituent of protecting tribal communities. So I would like through you to ask the Honorable Minister, what is the current state of Meghalaya in the 8th schedule of the Constitution of India, and by when does the government plan to bring Garo and Kasi languages into the 8th schedule of the Indian Constitution? Thank you. I think it doesn't concern the Honorable Minister. You can reword your question. Because we are asking about the tribes of Meghalaya. The Honorable Minister can respond only in his jurisdiction. Right, sir. You, as very informed young member, are fully aware the mechanism of inclusion of languages. I'll give you an opportunity. But they have received a proposal. Question. So they have received a proposal from the government of Meghalaya as recently as 2 months ago, the same ministry. All right, be that as it may. Honorable Minister, have you anything to add on this? माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में 700 से अधिक ट्राइबल ग्रुप्स हैं और ट्राइबल की क्वालिटी है कि बहुत सारी भाषाएं उनमें विद्यमान है। पूरे देश भर के सभी क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं हैं। मैं ये सूचना सदन को देना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति जो हमारी बनी है 2020, उस शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं को, स्थानीय भाषाओं को अधिक से अधिक प्रोटेक्ट कर सके, मान्यता दे सके और पहचान दे करके उनकी संस्कृति जो परंपरागत रूप से बनी हुई है वो बनी रह सके, इसको सुनिश्चित किया है। अब जो वो कह रहे हैं कि 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची की एक अलग प्रविधि है, अलग व्यवस्था है और उसके आबादी सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके देश में विचार किया जाता है। किसी एक क्षेत्र में अगर 700 ट्राइबल के बारे में हम चिंता करेंगे तो उसमें इन सारे विषयों को नीतिगत रूप से देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या मेरिट्स, डिमेरिट्स, क्या कॉम्प्लिकेशंस है। वो एक क्षेत्र को ले करके नहीं कह सकते, पूरे देश को देख करके इस पर फैसला लिया जाए। Sri Sasmit Patra. Thank you, Honorable Chairman, sir. My special interest in this question stems from the fact that my state of Odisha has the largest number of PVTGs, amounting to 13 in the country. Honorable Minister in his reply has rightly mentioned that the population figures of PVTG communities as a whole is not available centrally. And from 1951, the enumeration has not been done. But the PVTG definition itself says that the population reducing of specific tribal groups led to them becoming PVTGs. So therefore, my specific question would be, considering the sensitivity of enumeration for PVTGs to understand whether they are growing, they are decreasing, would the Honorable Minister consider taking a targeted census or enumeration for only the 75 PVTG groups so that we would be able to have a central database to find out whether they are increasing in numbers, they are decreasing, the patterns of migration, and thereby these programs would be helpful. Thank you. Question number 32. Honorable Minister. Honorable Minister. जो माननीय सदस्य जानना चाहा है, मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम में पोर्टल बनाया गया जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन इनके उसमें डाले जाएंगे। माननीय सदस्य भी उसको देख सकते हैं। I read out question number 32 because Saket Gokhale had raised a good issue, but from the wrong minister. His jurisdiction is not there. I am sure he will find a way out to raise this issue comprehensively at a proper forum as per rules. Question number 32, Sri Raiga Krishnaya.
Honorable Minister. पर रख दिया. Supplementary number 1, Shri Raiga Krishnaiah. Respected Chairman, the Supreme Court of India has given a judgment that SC, ST, OBC reservation should not cross the 50%. By that, in response to this judgment, almost all states OBC reservation was decreased from 34 to 18 to 20%. But the central government has not taken any steps to increase the reservation as per the population of the OBC. The Andhra Pradesh and Telangana government also lowered the reservation from 34 to 22 on the basis of Supreme Court judgment. But Andhra Pradesh government has given on behalf of party an additional 20%. But in any other state in India not given increases the reservation on behalf of their parties. The only permanent answer to this matter, there is need to amend the constitution to provide population based reservation. Then the government of India, in the pretext of, at the time of amendment of the 73-74 constitution, some states are not having OBC list, particularly Uttaranchal, Jharkhand and Chhattisgarh. But now all the states are having OBC list. So I request the government to amend the constitution and provide the OBC reservation on the basis of population in this local body election. Honorable Minister. सभापति महोदय, संविधान का अनुच्छेद 243 घ के तहत आरक्षण दिया गया है. 1/3 से कम आरक्षण ना हो ऐसा प्रावधान इसमें है. लेकिन राज्य स्तर पर कई राज्यों ने 21 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने निर्णय किया है कि उन्होंने 50% तक आरक्षण को बढ़ाया है. सम्माननीय सदस्य ने कहा है कि संविधान में संशोधन करके ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने के बारे में उन्होंने बात किया है. फिलहाल ये मंत्रालय के माध्यम से इस तरह से कोई भी प्रस्ताव हमारे विचाराधीन नहीं है. Second supplementary. Honorable Member. There is no restriction. There is a ceiling cap for the educational and employment reservation. It is purely political reservation. Why the government is not taking steps to population-based reservation in local body election? There is no department, there is no political reservation. You made your point, Honorable Minister. चुनाव में सभापति महोदय 50% का आरक्षण है और उसी के तहत ओबीसी को कितना आरक्षण हो, एससी एसटी को कितना आरक्षण हो, इसी में उसका प्रावधान है. फिलहाल अभी सम्मानीय सदस्य जी ने कहा, मैंने पहले भी कहा, ऐसा कोई भी सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव नहीं है. Third supplementary, Mr. P. Wilson. Sir, so far as OBC reservations in local bodies are concerned, the Supreme Court says unless you have an empirical data, you can't give reservation. Sir, is it not against Constitution? What is that you have taken steps to see that the Constitution is amended and the reservations to OBC in local bodies is given without any hassle or without such a requirement? And number two, sir, why don't you amend Article 15 and 16 of the Constitution and provide reservations for the other backward class in accordance with their populations? Thank you, Chairman, sir. Honorable Minister. सम्माननीय सभापति महोदय, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है. राज्य सरकार अपने स्तर पर ओबीसी का आरक्षण कितना रखता है, ये केंद्र सरकार से कोई संबंधित नहीं है. 243 घ के तहत जो प्रावधान आरक्षण का संविधान में प्रस्तावित है, उसी के तहत केंद्र सरकार निर्णय करती है.
जैसे महाराष्ट्र में अभी जो इशू हुआ, कहीं लोकल बॉडीज़ के चुनाव अभी तक हुए नहीं ओबीसी के आरक्षण के कारण, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इम्पिरिकल डाटा नहीं मिलता तब तक हम 50% के ऊपर आरक्षण देने में सम्मति नहीं दे सकती, इसलिए वहाँ पे भी चुनाव हुआ नहीं। ये निश्चित तौर पर इस सब्जेक्ट में राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर निर्णय करे। श्री no, Mr. One second, Mr. Wilson, you are a distinguished senior advocate. If you will go through constitutional prescriptions in Part 9 and 9 capital A, you will find enough space also available to the states. And come with a suggestion. I am open to having a discussion on this. Avail the rules. Sri Neeraj Dangi, fourth supplementary. मैं चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज सीटों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों और कार्यक्रमों का विवरण क्या है एवं पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में पंचायतों के लिए हुए चुनावों में महिला प्रतिनिधित्व का राज्यवार ब्यौरा क्या है? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, ने जैसे पहले ही कहा कि देश में ऐसे 21 राज्य हैं जिन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जब से इस देश में मोदी जी की सरकार आई है तब से लेकर आज तक मंत्रालय के माध्यम से कई प्रयास किए गए हैं। आज के तारीख में मैं बताने जाऊंगा तो राज्य के अलग अलग जगह पे हम लोगों ने महिलाओं को सक्षम करने के लिए महिलाओं की काउंसलिंग लेके उनको जैसे ही चुन के आते हैं उनको 6 महीने के अंदर ट्रेनिंग देने का प्रावधान रखा है। और आज हमारी बहनें इतनी सक्षम हो गई है कि जब हमने विज्ञान भवन में आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन किया था तो वहाँ पे लगभग 1500 हमारी सभी साथी आए थे, उसमें से 800 हमारी बहनें थी और उन्होंने अपने विचार वहाँ पे रखते। मैं भी एक सरपंच रह चुका हूँ, मैं गांव में भाषण करने के लिए भी मुझे हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन आज हमारी बहनें इतनी सक्षम हुई है कि विज्ञान भवन में आके अपने अनुभव शेयर करते, अपने गांव का विकास किस तरह से उन्होंने किया है। ये जो सक्षमता उनमें आई है वो निश्चित तौर पर ये मंत्रालय ने किए हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रयास है उसी में से आया है। ये खाली राजनीतिक तौर पर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारी निर्वाचित जो बहनें हैं उनको आर्थिक दृष्टिकोण से भी सक्षम करने के लिए 7113 ब्लॉकों में लगभग 90 लाख HSC ग्रुप कार्य कर रहे हैं। उसमें से 9 करोड़ 90 लाख परिवारों को रोजगार से भी जोड़ने का काम महिलाओं को सक्षम करने की वजह से हुआ है। इसी तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव 2 का महिला सरपंचों का जो योगदान है निश्चित तौर पर बहुत बड़ा योगदान है। 17 अप्रैल 2023 को जब सम्माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, वो भी एक महिला है, उनके हाथों से जब विज्ञान भवन में महिला सरपंचों को पुरस्कार दिया गया, सभी सरपंचों को पुरस्कार दिया गया, वो 42 लोगों को पुरस्कार दिया गया, उसमें से 18 हमारी महिला सरपंच थी। ये हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली बात है। और इसी तरह से महिलाओं को सक्षम करने के लिए मंत्रालय अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्जेक्ट पे, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो अचीव करने के लिए उनको सक्षम करने के लिए मंत्रालय का प्रयास चालू है। 5th supplementary, Vandana Chauhan. Sir, my original question was regarding training, but my colleague has already asked it. But I will ask another question, sir. We talk a lot about people's participation at local self-governments, and especially at the Gram Sabhas, it is expected that a women's Gram Sabha should specially be organized. It is seen that at several places it doesn't happen. So what is the efforts that the government is taking to make sure that women, not just elected representatives, but women as an entity are actually made to participate in the governance process, and whether the self-help groups are being considered for this? Thank you.
you, sir. Honorable Minister. सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य ने अच्छा सवाल पूछा है। महिलाओं की जनभागीदारी इतनी बढ़ गई इसमें कि अभी कई राज्यों ने तो कानून बनाए हैं, कई वहाँ पे जाके उनके फैमिली के लोग उनमें इंटरेस्ट लेके हस्तक्षेप करते थे, लेकिन हमारी बहनें अभी इतनी सक्षम हो गई कि मुझे लगता है, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, आने वाले दिनों में उनको ट्रेनिंग देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में अभी हम लोगों ने अनिवार्य कर दिया है कि साल में 6 ग्राम सभा हो और इसमें से स्पेशल एक महिलाओं की ग्राम सभा हो, महिलाओं को सक्षम करने के लिए और महिलाओं की उसमें जनभागीदारी बढ़े, इसलिए मंत्रालय ये कदम उठाया। माननीय मंत्री जी तो सरपंच रह चुके हैं, बड़ा बदलाव आया है। जब शुरुआत हुई थी तो कमेटी में पूछते थे आप कौन हैं, तो व्यक्ति कहता था मैं सरपंच पति हूँ, मैं प्रधान पति हूँ, मैं जिला प्रमुख पति हूँ। दैट थिंग इज नाउ ओवर। क्वेश्चन नंबर 33, डॉक्टर के लक्ष्मण। ऑनरेबल मिनिस्टर। पटल पे रखा गया है। सप्लीमेंट्री 1, डॉक्टर के लक्ष्मण। Sir, thank you, sir. At the outset, I would like to welcome the decision of the government for internationalization of education as per NEP 2020. Because many of our students opt to go overseas to seek high-quality education. We know the financial burden of parents, and later students never turn up, which causes huge loss to Indian economy and also the brain drain. But, sir, what will be the challenges with the setting up foreign universities? Because some feel it will harm the Indian education system and also result in commercialization of the education. What are the preventive steps taken by the government to protect free structure, to be reasonable and transparent, and also the admission process, sir? Honorable Minister. Chairman, sir, in the National Education Policy 2020, the expert group has recommended, rightly recognized by honorable member, we have to internationalize our education system. More foreign students should come to India. More Indian students should get exposure in the global institution. Today, our students are compelled to go outside. Lot of foreign students are also coming to India. To accelerate that, to make it manifold, the NEP has recommended for internationalization. Now, not only foreign institutions will come to India, already 2 of them has opened their, started process to open their campus in Gujarat, gift city of Gujarat. In last budget speech, Honorable Finance Minister has invited global institutions, 2 of them are turned up. Recently, University Grant Commission in last November, the last month only, come out with a new sets of regulation to invite more foreign institutions. Now portal is open, lot more quality institutions are now getting registered in that portal. The member has raised 2 pertinent issues. How to maintain the quality of education? What about the fee structure? These 2 things are envisioned in the new regulation. Today, billions of dollars we have to spend on our students, those who are going out of country. Now, more students, what we envision, they all will be the global standard. They will tie up with some local university also. Beyond inviting foreign university, dual degree, twinning of courses, from both the sides, we have invited institutions, and UGC will have a committee to scrutinize the application, to look into the minimum regulatory mechanism, because we have to give autonomy to institution. Gradually there is a consensus among the academia and the policy maker of our country, whether from any states,
We have to give autonomy to academia, to institution. More institution of global standards would come up, and Government of India is in the right direction to inviting, and I will happy to inform this August House Chairman sir through you. 2 of our IITs are going to open their campuses in the overseas. One campus will be opened at Abu Dhabi by IIT Delhi, and one campus of IIT Chennai will be opened at Zanzibar, looking into the need of the African countries. This is not only going to be one way, now internationalization mechanism will have two-way mechanism. Second supplementary, Dr. K. Lakshman. Sir, thank you, sir. Sir, whether there is any proposal by the government to encourage, to collaborate and partner with these existing Indian institutions, which will not only help to mitigate competition, ensure that the benefits of foreign universities are shared with the Indian institutions and also Indian students. Honorable Minister. Chairman, sir, this is an old practice, old tradition of our Indian institution. Almost all IITs, all NITs and all reputed institutions run by union government or respective state government, they all have a global tie-up with their counterparts. So with this NEP, with this focused concept of internationalization, it will get accelerated impact. Dr. Santanu Sen. Giving me this opportunity. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity. Sir, we all know that few days back, a circular has gone to all the universities and colleges from UGC that there should be a selfie stand with the photograph of our respected Prime Minister in the background. Through you, with all humility, I would like to know from our learned Minister that according to which rule or guideline of UGC this could be done, as apparently it seems to be nothing but a political publicity before the 2024 Parliament election. Thank you, sir. Honorable Minister. Honorable members' question has nothing related to the Prime. Keep in mind, I have been Governor State of West Bengal. Sir, I know that. And Dr. Santanu Sen has raised the issue. Sir, I also cannot forget the scene, the constitutional responsibility you took on the very first day of this present government. We never forget your position, sir. With this due respect, sir, this is a separate question. But beyond that, already he has raised the question. Sir, I am proud of my Prime Minister. Sir, this country is proud of Prime Minister Narendra Modi. This will be my answer. Sir, President, Prime Minister, constitutional functionaries, they belong to the nation. They represent the nation. As much as a Chief Minister represents a state. And therefore, I will appeal to all sections of the House, when it comes to constitutional functionaries at the state level or at the central level, let our vision be not through politics, but in general. Professor Manoj Jha, it's your subject. Yes, sir. I am sure you will put a pointed question to the Honorable Minister. शुक्रिया सभापति महोदय. Your time starts now. मेरा माननीय मंत्री जी से एक आग्रह है, यह सवाल है सर, कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का आना, कैंपस खुलना, ये बहुत एक सकारात्मक पहल है, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था अफर्मेटिव एक्शन के प्रोग्राम पे है. क्या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस हो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के हिसाब से, इसकी व्यवस्था की गई है? थैंक यू सर. ऑनरेबल मिनिस्टर. सर, ये फॉरेन यूनिवर्सिटी उन देशों की कायदे पे चलेंगे. यहाँ फोकस है क्वालिटी एजुकेशन. हमारी देश में जितने 1100 पब्लिक यूनिवर्सिटी है, उसमें कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी. अभी भी हमारी देश की जो स्टेट आर्ट में चलने वाले प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और डीम्ड यूनिवर्सिटी है, अफर्मेटिव एक्शन की फॉर्म अलग है. धीरे धीरे जो आजकल विश्व की एजुकेशन पैटर्न बना है, स्कॉलरशिप एक नया इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, वो भी एक तरीके का अफर्मेटिव एक्शन है. सारा चीज़ों को एक ही चश्मे से देखना उचित नहीं होगा. क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस देश में आए, ये प्रायोरिटी है. जोस के मनी, फिफ्थ सप्लीमेंट्री. Thank you, sir. Opening of foreign universities in India promises global exposure
and high quality education. However, starting foreign university faces challenges. Could be one, it could be a drastic dropout in the domestic universities of the students. 2, very high cost of tuition. 3, potential cultural misalignment affecting adaptation. 4, resources allocation concern. 5, risk of educational inequalities. 6, foreign university degree recognition the Indian companies may reject their recognition. So I would like to know from the minister, what are the measures taken by the government to face all these challenges? Have you taken care of it? Honorable Minister. All questions are very important, but this is uncalled for at this time. We have to face the global challenge. These are the questions, but government is quite competent, and UGC is a quite competent body with its expert committee will look into all these aspects. And these all are very premature, and we should not think everything in a negative regime. Question number 34, Shri Sant Balbir Singh. 34 number, पर्यावरण. Honorable Minister. First supplementary, Shri Sant Balbir Singh. बहुत धन्यवाद जी चेयरमैन साहब जो समा दिता सो मंत्री साहब बहुत वधिया काम कर रहे हैं ਅਸੀਂ पर्यावरण की इन्हां नाल गल करना चाहुंदे हां कि जिहड़े सब तो वध प्रदूषण जिहड़ा है वो जिहड़ा डीजल आ उहदे वाहन आ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਹਿਤ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਈਂਧਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CNG LNG ਤੇ ਇਥਾਨੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में 40% जो इमिशन ऑफ CO2 है, पोल्यूशन है, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होता है और दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहा है। ये चिंता का विषय है। 330 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ CO2 इमिशन एवरी ईयर, इट इज़ ए वेरी डेंजरस प्रॉब्लम। और इसमें से हमारे देश में 85% फ्यूल जो है वो फॉसिल फ्यूल है जो इंपोर्ट होती है और जिसकी इंपोर्ट की कॉस्ट 16 लाख करोड़ है। तो इकोनॉमिक एंड पोल्यूशन दोनों हिसाब से ये बहुत गंभीर समस्या है और ये जो पेट्रोल और डीजल इसके कारण विशेष रूप से जो पोल्यूशन होता है जिसकी बात आदरणीय सम्मानीय सदस्य ने रखी है, उसके लिए भारत सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं और इसको प्रायोरिटी दी है। अध्यक्ष महोदय, इंडिया ये कार मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहले 5वें नंबर पर था, पर आज हमारा नंबर 3रा हो गया। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, फिर हम हैं। हमने जापान को भी पीछे डाल दिया। पर एक बात ये भी है कि इसका ग्रोथ रेट बहुत बड़ा है। टोटल व्हीकल्स में 9.91% और कार और 4 व्हीलर्स में 20% है। और ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा GST भारत सरकार और राज्य सरकार को दे रही है और 4.5 करोड़ जॉब्स यहाँ क्रिएट हुए हैं। पर इसके बावजूद जो सम्मानीय सदस्य ने जो बात रखी उसके आधार पर भारत सरकार ने अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल ये दोनों को विशेष रूप से प्राधान्य दिया है। ये जो G20 हुआ इसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये भी निश्चय इसका ये हमने निश्चित किया और ये टारगेट तय किया है कि 2070 तक हम नेट जीरो इमिशन तक जाएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने अल्टरनेटिव फ्यूल पे अलग प्रकार के प्रयोग किए हैं। सर, मैं खुद इसका बाय हार्ट प्रचार करते रहता हूँ
मैं पार्लियामेंट में आता हूँ तो हाइड्रोजन की गाड़ी में आता हूँ, अभी मैं फ्लेक्स इंजन की गाड़ी में आता हूँ, दोनों भी गाड़ियाँ हैं। फ्लेक्स इंजन का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो चावल है, ब्रोकन राइस और परली बायोमास और शुगर केन जूस और मोलाइसेस, इसमें इथेनॉल बनता है और 100% इथेनॉल पर ये इनोवा गाड़ी जो है टोयोटा की जो चलती है, अभी बाकी भी कंपनी इसके लिए लॉन्च कर रही है, जो 100% इथेनॉल पर चलेगी। इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर, पेट्रोल का रेट है 120 रुपये लीटर। फिर ये जो इथेनॉल की गाड़ी है 60% बिजली तैयार करती है, तो वो भी पोल्यूशन कम होता है। तो ये पहले फ्लेक्स इंजन को हमने फैसिलिटी प्रोत्साहन दिया। अनेक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर तो फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं, पर बजाज, टीवीएस और हीरो ने अपनी स्कूटर और मोटरसाइकिल भी लाई है। अब जल्दी ही पेट्रोलियम मंत्री जी के साथ इथेनॉल के पंप की हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसके कारण बड़े प्रमाण पर ये प्रॉब्लम कम होने में मदद मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि फूड ग्रेन्स, ऑल टाइप ऑफ एक्सेस फूड ग्रेन और एक्सेस शुगर, तो किसानों की स्थिति सुधर जाएगी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, और इस साल ये जो गन्ना किसानों को जो भाव मिले हैं, इसका कारण इथेनॉल की इंडस्ट्री है और इथेनॉल को हम बढ़ावा दे रहे हैं। डीजल जनरेटर हमारे देश में 6 लाख है मोबाइल टावर, और उसके ऊपर जो डीजल जनरेटर्स है वो 8,000, साधारणतः 8,000 लीटर्स ऑफ डीजल, 8,000, ये जो 6 लाख मोबाइल टावर है ये 250 करोड़, एक को 8,000 लीटर लगता है, 250 करोड़ लीटर डीजल केवल ये जनरेटर आज यूज़ कर रहे हैं। हम लोग 25,000 करोड़ का ये कम करने के लिए जल्दी ही इथेनॉल बेस हम लोग ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एग्रीकल्चर में स्प्रेइंग होता है वो लिथियम आयन बैटरी पे ड्रोन चलता है, वो भी फ्लेक्स इंजन में लाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा मैं आदरणीय सदस्यों को ये विशेष रूप से कहूँगा कि हमने बायोमास से, परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी को बहुत प्रोत्साहन दिया है, और इसके कारण शुगर मिल वेस्ट जैसे प्रेस मड है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास और परली राइस स्ट्रॉ, इसमें कम से कम 36 प्लांट चालू हो गए जो सीएनजी बना रहे हैं, और 175 प्लांट प्रोसेस में हैं और मैक्सिमम पंजाब में बन रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पानीपत में इंडियन ऑयल ने अपना पहला प्लांट परली से इथेनॉल बनाने का डाला, जो 1 लाख लीटर इथेनॉल तैयार करता है और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार करता है, जो रोड में काम में आता है। हमें 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 30 लाख टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो परली जलाकर जो प्रदूषण होता है, इसके बजाय बायो बिटुमिन बनेगा, और वहीं अब बायो एविएशन फ्यूल बन रहा है। जो हवाई ईंधन है उसमें भी 1% डालने का प्रोविजन वर्ल्ड लेवल पर हुआ है, और ये भी ईंधन देश में बनेगा। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये ग्रीन हाइड्रोजन ये फ्यूचर का फ्यूल है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हाइड्रोजन की कार में ही काफ़ी बार आता हूँ, और हाइड्रोजन अभी तैयार करने के लिए 5 हाइड्रोजन मिशन सरकार ने बनाया। 5 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर हमको हाइड्रोजन लगेगा। हाइड्रोजन 3 प्रकार का है, कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन है, पेट्रोलियम से बनता है ब्राउन हाइड्रोजन है, और जो पानी से, बायोमास से, म्यूनिसिपल वेस्ट से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। तो सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाया है, वेस्ट टू वेल्थ, नॉलेज टू वेल्थ एंड वेस्ट टू वेल्थ। जैसे इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस को हम नॉलेज कहते हैं, वो टेक्नोलॉजी लाकर नॉलेज टू वेल्थ। और दूसरा, नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. तो सर, हमें यह हाइड्रोजन तैयार करने के बारे में ये भी उपक्रम हाथ में लिया है। इसमें बहुत बड़ा रोजगार निर्माण होगा, किसानों का भी फायदा होगा। अभी इसका रेट 300 रुपये पर केजी है, क्योंकि इसके कॉस्ट इलेक्ट्रोलाइजर से बनता है, 50 यूनिट पावर लगती है। पर हमारे यहाँ विशेष रूप से हमारी बेंगलोर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और यादव करके मुंबई में टेक्निकल केमिकल इंस्टीट्यूट के, उन्होंने बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन बनाया, और हमारा यह प्रयास है कि $1 के नीचे कम आएंगे। तो $1 के नीचे अगर कम आएंगे और एग्रीकल्चर बायोमास का उपयोग होगा, तो किसान समृद्ध संपन्न होगा, और हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने। यही हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
हमारी महत्वाकांक्षा है और इसीलिए ये जो विशेष रूप से ये जो ग्लोबल अलायंस हुई है G20 में, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। एक जो बात उन्होंने कही कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की, वो भी बहुत पोल्यूशन करता है। 2 दिन पहले मैंने JCB, हाइड्रोजन पर चलने वाला JCB लॉन्च किया है और जल्दी ही अब कंस्ट्रक्शन ट्रक में, बसेस में हाइड्रोजन आएगा। इसमें इलेक्ट्रिक का तो अल्टरनेटिव फ्यूल में इलेक्ट्रिक पॉपुलर हो गया। इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस अब कॉमन हो गई और धीरे धीरे अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल का उपयोग करके और वेस्ट से ये एनर्जी तैयार करके और किसानों का भी आर्थिक स्थिति सुधारे और प्रदूषण को कम करे, ऐसी कोशिश सरकार की ओर से हो रही है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री संत बलबीर सिंह। बहुत धन्यवाद मंत्री साहब। एक असी पूछना चाहते हैं कि सड़क किनारे टाउन स्मार्ट सिटी लॉजिस्टिक पार्क उद्योग क्लस्टर बनाने की कोई योजना तैयार की गई है? जे हाँ तो इस वे दिते जान। किहड़ियां सड़कां इन्हां प्रोजेक्टां अधीन आउंदियां ते राजवार उन्हां दे वेरवे दिते जान। थैंक यू। माननीय मंत्री जी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, टोटल देश में हम 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP बना रहे हैं। इसमें जोगीघोपा जो आसाम में, उसमें MMLP जो है वो मल्टी मॉडल है, यानी रोड भी है, हवाई जहाज एयरपोर्ट भी है, जलमार्ग भी है और उसके साथ रेलवे भी है। तो पंजाब में भी जो आदरणीय सदस्य जहाँ से आते हैं, नॉर्थ पंजाब में अमृतसर और जालंधर, गुरदासपुर, इसमें प्री फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हुई है जिसका हम विचार कर रहे हैं। साउथ पंजाब में लुधियाना, संगरूर और पटियाला, यहाँ लैंड के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। बठिंडा में भी हम लोग कर रहे हैं और आपको पता होगा कि बठिंडा से हमने डायरेक्ट जामनगर रिफाइनरी के लिए करीब 28,000 करोड़ रुपए खर्चा करके एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस हाईवे बनाया है। उसके आजू बाजू भी हम इस प्रकार की बातें सोच रहे हैं। विशेष रूप से 670 रोड साइड एम्यूनिटीज़ बना रहे हैं। उसमें से ये जो रिवे साइड एम्यूनिटीज़ है, इसमें पंजाब में 40 है और 40 में से जो विशेष रूप से मुझे खुशी है कि अवार्ड जो हुआ है पंजाब में 7 का हुआ है, 33 अंडर बीडिंग है और ऐसे देश में टोटल 640 रोड साइड एम्यूनिटीज़ होगी और वहाँ वहीं का फूड, वहाँ के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इसको भी प्रोत्साहन करेंगे। पेट्रोल, डीजल, गैस, CNG, LNG, इथेनॉल के पंप भी होंगे, इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी होगा और वहीं के विशेष रूप से वहाँ लोग रुक सकते हैं, ऐसे एंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था होगी और ये इस प्रकार की दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन करने की कोशिश हो रही है। श्रीमती रंजीत रंजन। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि हम प्रदूषण को कम करने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये सही है कि वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक वाहन को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं? तो क्या ये सही है, रिसर्च आई है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है, जो बैटरी है, जिस प्रोसेस से बनती है उसमें बनाने वालों को भी उनकी सेहत को और ज़्यादा खतरा है और जब बैटरी की लाइफ ख़त्म होती है तो उसको डंप करने का जो प्रावधान होगा या प्रावधान है, उससे हमारी धरती और भी जहरीली होगी, फर्टाइल लैंड को नुकसान होगा। तो क्या प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित करना ये डीजल और पेट्रोल से बेहतर है या उससे भी ज़्यादा खतरनाक है? जो रिसर्च है वो ये कहती है कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट होता है। उसका प्रदूषण कितने बड़े प्रमाण पर है ये दिल्ली वालों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक लिथियम आयन बैटरी है, उसमें बैटरी में 4 केमिस्ट्री है। एक एल्यूमिनियम, एक लिथियम के साथ जिंक, एल्यूमिनियम, स्टील, आयन बैटरी, इसकी भी केमिस्ट्री पे काम हो रहा है। एक एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी पर भी काम हो रहा है। दूसरी अध्यक्ष महोदय, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए हम 100 रुपये, 110, 120 रुपये लगाते हैं, वही इलेक्ट्रिक में हमको 10 रुपये लगते हैं। हम हमारे टिकट रेट कम कर सकेंगे। दूसरी बात, लिथियम आयन बैटरी जो है, इसकी कॉस्ट $150 पर आवर पर उसकी यूनिट की थी।
पर अब वो $115 पर आई है, जो पर किलोवाट थी $150 की थी, अब वो 115 पे आई है। और अब लिथियम आयन हमारे देश में भी मिला है। जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड का 6वां बड़ा लार्जेस्ट हमको लिथियम आयन मिला है। हम 1200 टन लिथियम आयन इंपोर्ट करते हैं। और मुझे विश्वास है कि अभी तक इस प्रकार के रिसर्च की जो बात कर रही है, ऐसा कोई परिणाम रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। अगर कहीं आएगा तो इस पर विचार करेंगे। पर हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में बजट के एक सर्कुलेशन इकोनॉमी की बात करी, जिसमें हम जो वेस्ट मटेरियल है उसकी सर्कुलेशन इकोनॉमी बनाए। तो अभी हमारे पास कार का स्क्रैपिंग हो रहा है, रबर टायर जो होते हैं उसको स्क्रैपिंग करके जो रबर निकलता है वो बिटुमेन में डालने का काम 15% कर रहे हैं, प्लास्टिक का 7% रोड में डाल रहे हैं, उसी प्रकार से आयरन स्लैग का उपयोग कर रहे हैं। हमने तो म्यूनिसिपल वेस्ट दिल्ली की 25 लाख टन, अहमदाबाद की 25 लाख टन और दिल्ली मुंबई हाईवे में और डाली, ऐसी 50 लाख टन म्यूनिसिपल वेस्ट रोड के अंदर डाल दी, केवल इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जहाँ तक आपने ये बात की है जो आपके लिथियम आयन बैटरी की, इसके बारे में हम लोग पूरी चिंता करेंगे और इसके बारे में उसको रिसाइकलिंग करने के लिए वो कहीं भी उसके दुष्परिणाम ना आए, कहीं इसके प्रकार से कोई नई समस्या ना हो, इसकी पूरी चिंता सरकार करेगी। और ये केमिस्ट्री रोज बदल रही है और ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। Our government is working in the direction with the futuristic technology, futuristic vision and futuristic planning. कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री का सपना है, वर्ल्ड की एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाने का ये है। मैं विश्वास के साथ कहूँगा कि आने वाले 5 साल के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल, बसेस, इवन ट्रक भी आ रहे हैं, इनको एक्सपोर्ट करने वाला पहले नंबर का देश हिंदुस्तान बनेगा। इतना पोटेंशियल हमारे पास है और इतना काम हो रहा है। और वर्ल्ड के सब रेप्यूटेड ब्रांड है, 12.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। अब जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए हैं और निश्चित रूप से जल्दी आगे जाएंगे। ये बहुत अच्छी तरीके से है और हमारा एक्सपोर्ट इसमें बढ़ेगा, नए रोजगार निर्माण होंगे और देश समृद्ध होगा। ये निश्चित रूप से मेरा विश्वास है। और जहाँ तक ऐसी कोई बात रिपोर्ट आएगी तो उसकी निश्चित रूप से हम सरकार की तरफ से चिंता करेंगे। 4th सप्लीमेंट्री, कार्तिकेय शर्मा। I would like to ask the Honourable Minister about the status of adoption of e-vehicles and the steps taken for their promotion in the state of Haryana and the NCR region. Honourable Minister. Subject which is related with the Heavy Industries Ministry and Urban Ministry. I feel that you are talking about the purchasing of the e-buses. The e-vehicle, there is no problem, sir. Sir, now in government also, everywhere in the private sector, people are using e-vehicle. It is very popular. Only the problem is that the cost difference between the petrol and diesel vehicle and e-vehicle, the e-vehicle is high. And it is depending upon the volume. When the volume will increase, within 1.5 years, the cost of the petrol vehicle and cost of the diesel vehicle and cost of the electric vehicle will be the same. And the expenditure on petrol vehicle, suppose for example is 30,000 rupees per month for 4-wheeler, the electric it will come 3,000 to 4,000 rupees per month. So there is a saving and no pollution. Sir. 5th supplementary, Dr. Fozia Khan. Sir, thank you very, very much. While I must acknowledge, sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister. He has visited the place where we live many times, and the condition of very, very poor, because the quality of construction, when actually the construction of the road is made, MORTH guidelines are not followed. Sir, the embankment put into the roads, and nobody is supervising, and because of this, the roads break very, very soon. Sir, it's a very important issue, and I'm sure Minister will agree with me, but because of this, because of lack of supervision, and sir, external consultants are hired and actual officers are not supervising. So because of that, these roads are broken. Sir, please. And I just want to ask the Minister, if MORTH guidelines are not followed, sir, what is the accountability of the officer? What punishment is prescribed?
Honorable Minister. Chairman, sir, the question is not... Sir, ये महाराष्ट्र का मामला है. Honorable member is asking me that question. I know that she is complaining for that particular road in Parbhani district from many days. We have checked the all quality norms, and I am very much cautious about it, that we are transparent, time-bound, result-oriented and corruption-free. Up till now, sir, we have, from last 9 to 10 years, we have awarded works more than 50 lakh crores with government budget and public-private investment. And our quality is well known to the people. But still, if the honorable member is complaining about the quality of the road in Maharashtra, we will check the thing. Sir, in Maharashtra, every member of parliament, many of here are present. Sir, we are spending 5 lakh crores of road construction in Maharashtra. We change the total job. Still, I will, particular case, the honorable member which has given me the reference about the quality of the road, I will again check it and I will make it that how it can be satisfied her. Question number 35, Shri Rajiv Shukla. Honorable Minister. Supplementary. I have seen the reply of the minister. So the scheme is spread over in all the districts. I want to know if there is special focus on tribal districts where the tribal youth can be skilled and trained. But before that, I want to request, sir, सारे ministers तो कुछ अच्छे तैयार होकर आते हैं, कुछ कम तैयार. गडकरी जी इतना ज़्यादा तैयार होकर आते हैं कि 25-25 मिनट एक सवाल में लग जाता है. इनके इतनी प्रिपेयर्डनेस है. तो इसको जरा सा टाइम लिमिट कर दीजिए. I can tell you, Rajiv ji, while everyone will agree about Honorable Gadkari ji, but performance of Dharmendra Pradhan ji today has been amazing. I thought you will compliment him. He has been very forthright, very exhaustive. Honorable Minister. चेयरमैन साहब, आदरणीय राजीव शुक्ला जी ने जो प्रश्न पूछा, वनवासी आदिवासी युवाओं के बारे में क्या करना, अभी मेरे ख्याल से मेरे सीनियर कॉलीग अर्जुन मुंडा जी ने जो प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के अंदर जो एक प्रमुख कंपोनेंट है स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में उल्लेख किया है. भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, एग्रीकल्चर विभाग, स्किल डिपार्टमेंट और सभी राज्य सरकारें अपने फोकस तरीके से देश की ग्रामीण युवाओं की स्किल कैपेसिटी बढ़े उसकी योजना कर रहे हैं. इसके एक विवरण मैंने रखा है. सेकेंड सप्लीमेंट्री. उनके साथ गवर्नमेंट कोलैबोरेशन कर रही है, जैसे ब्लिंकेट, अपना, क्वेस्ट. तो ऐसा नहीं कि इन लोगों को कुछ फायदा हो जाए या इसका कोई प्रोसीजर है इनको सेलेक्ट करने का. बाकी मेरे मित्र राजीव शुक्ला जी की दृष्टि में जो से देखे हो, हमारे वहाँ तो सारे पारदर्शी. The House will meet at 2 p.m. today. बिल से हमारे गृह मंत्री जी ने 9% जम्मू कश्मीर के आदिवासियों को आरक्षण देने का काम करेंगे. तो एसटी का आरक्षण पहली बार हो रहा है. एससी में भी 6% था, उसको हमने 7% किया. तो आज उस गवर्नेंस की बात हो रही. हमारे सुप्रिया हमारी बहन मौजूद है, लेकिन हमारे एनसीपी के लोग नहीं हैं.
कल जिस तरीके से कह रहे थे कि हमारे एक गवर्नर साहब चले गए हैं और पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, ये स्कीम्स क्यों आ रही है, आप यकीन करिए कि आज गवर्नर साहब के जाने के बाद जो एक उन्होंने गवर्नेंस का प्रक्रिया शुरू की है, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब जम्मू कश्मीर के श्री मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं तो उन्होंने जिलों में भी प्रशासन के योजनाओं का इम्पैक्ट हो, क्रियान्वयन हो, वास्तविकता के धरातल पर डिलीवरी हो, इसके लिए उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का कार्यक्रम शुरू किया। और ये जानकर के आश्चर्य होगा और पूरे सदन के लिए संतोष का विषय होगा कि जो जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का काम शुरू किया, आज उसको नीति आयोग ने, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, भारत सरकार ने पूरे देश के 35 राज्यों को इस इंडेक्स का आधार मान करके इस गुड गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट के लागू करने का काम जम्मू कश्मीर के मॉडल का किया है। तो स्वाभाविक है कि आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक गवर्नेंस हो रहा है, जिस तरीके से मैं पूछना चाहता हूं कि चुनी हुई सरकारें थी, मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलता था, जिस जुलूस के प्रति बहुत अकीदा था, हमारे एक समुदाय के लोगों का बहुत बड़ा उनका एक विश्वास था और जिसको कहते थे जुली जनाह जुलूस, हमारे मसूदी साहब भी नहीं हैं, लेकिन वो जुली जनाह जुलूस बरसों से बंद पड़ा था। लोगों की अपनी जो धार्मिक मान्यताएं होती थी, रिचुअल होते थे, उसको भी करने में वो नहीं हो पाता था कि साहब सिक्योरिटी रीजन है, हालात सामान्य नहीं जम्मू कश्मीर के, और उस नाते जो वो मुहर्रम का जुली जनाह जुलूस निकलता था वो निकलना बंद हो गया था। लोग अपने घरों में बैठ कर के अपनी तकदीर के आंसू बहाते थे कि हम अपने रिलीजन रिचुअल को नहीं पूरा कर सकते। वो मनोज सिन्हा जी जाने के बाद पहली बार वो फिर से मुहर्रम का जुलूस निकला, जुली जनाह जुलूस निकला है और सालों बाद जब निकला तो इसका सभी ने स्वागत किया। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज साहब भी उसमें शामिल हुए और हमारे आली जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनके बेटे ने भी मनोज सिन्हा जी का स्वागत किया कि एक बहुत बड़ा कदम है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से गए जहां नए कश्मीर की बात हो रही, आज अब नए कश्मीर में बस फर्क क्या आ गया है कि अब राज्याभिषेक नहीं हो रहा। पहले क्या होता था, अगर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं है तो उमर अब्दुल्ला साहब हो गए, मुफ्ती साहब नहीं है तो महबूबा मुफ्ती साहब हो गए। आज भाजपा इंडिया की सरकार आने के बाद उसने इस राज्याभिषेक की प्रणाली को बंद किया है कि अब ये राज्याभिषेक डायनेस्टी नहीं चलेगी कि एक के बाद एक। अब ये हुआ है कि निश्चित तौर से जो जनता का विश्वास चुन करके आएंगे, जो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, लोकल बॉडीज में गांव के प्रधान, सरपंच, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद, वो उस जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर का फैसला करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने किया। और कल आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने कहा था कि 60-70 सालों के बाद जिस तरीके से लोकल बॉडीज का वहाँ चुनाव हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में जो एक स्थानीय सरकारें बनी हैं, गांव का विकास का फैसला गांव की चौपाल में बैठ करके, बीडीसी की बैठक में बैठ के, ब्लॉक का, जिले का, उस तरीके का फैसला हुआ। कल बात उठाई गई कि साहब वहाँ सेफ्रन था जिसका बहुत नाम था, आज न कोई सेफ्रन का ध्यान दे रहा है, न वहाँ के एग्रीकल्चर पे कोई ध्यान दिया जा रहा है, एक टूरिज्म की बात कही जा रही है। मैं कह रहा हूँ सेफ्रन की भी बात कर लीजिए। ये रिकॉर्ड है कि आज हमारी सरकार में, मैं कहना चाहता हूँ किस तरीके से एग्रीकल्चर पे, किसानों पे, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पे, वहाँ के एक रिवोल्यूशन लाने की बात हो रही है। और जो एक प्रयास हुआ, जनाब शौकत राय साहब ने ही कहा था कि कुछ नहीं, आज वो जो वहाँ का सेफ्रन है, केसर है, पिछले 10 सालों में जितना पैदावार नहीं हुई थी, इस बार पिछले 10 ईयर्स दिस इज द हाईएस्ट क्रॉप ऑफ सेफ्रन। तो आज 10 सालों में इस साल सेफ्रन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। और मैं यहाँ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो पुलवामा कहा जाता था कि पुलवामा आतंकवाद का गढ़ है, आज वो पुलवामा पूरी दुनिया में कैसर की बागान के रूप में बदल गया है। ये हमारे कहीं ना कहीं इस केंद्र की सरकार की उन नीतियों की देन है कि जिस तरह से वहाँ गुड गवर्नेंस हो रहा है। और आज उसमें सरकार ने अभी रिसेंटली किश्तवाड़ में
किश्तवाड़ में सेफरन को जीआई टैग भी कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब जीआई टैग के बाद ये सेफरन केवल अपने प्रदेश में, देश में नहीं, पूरी दुनिया के मार्केट में, पूरी दुनिया की बाज़ारों में ये सेफरन बिकेगा। और सेफरन की कीमत बता दें, केसर को अब सोना से भी ज़्यादा उसको लाल सोना कहा जा रहा है। केसर का दाम चांदी से बहुत ज़्यादा है। आज केसर जो किसान वहाँ उत्पादन कर रहे हैं, एक किलो सेफरन 3,25,000 रुपये में बिक रहा है। तो आज निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर का किसान, जो मैंने कल कहा था कि आज उनकी इकोनॉमी देश के 5वें नंबर पे हुई। इरिगेशन की बात हुई कि साहब इरिगेशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो रहा है। आज वहाँ के किसानों के इरिगेशन के लिए, फ्लड मैनेजमेंट के लिए जिस तरीके से झेलम, उसकी जो सहायक नदियाँ हैं ट्रिब्यूटरीज, उसके लिए 1,620 करोड़ आज उस झेलम की एक कंप्रहेंसिव मैनेजमेंट के लिए किया गया है। जिस तरीके से रिवर रावी का था, पिछले 19 सालों से रुका पड़ा हुआ था, उसका पंजाब के साथ समझौता होना था, उसका रिवर रावी का जो पानी का हिस्सा था जम्मू कश्मीर को मिल नहीं रहा था, जो एक शाहपुर डैम प्रोजेक्ट कहलाता था। आज इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने पंजाब की सरकार से समझौता करके शाहपुर डैम के प्रोजेक्ट से उस पे जम्मू कश्मीर के हितों के लिए 1150 क्यूसेक वाटर लेने का काम किया है। ये निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर के लिए अपने आप में एक है। तभी बैराज प्रोजेक्ट की मैं बात कर लूँ कि आज वो प्रोजेक्ट जम्मू के टूरिज्म के लिए, जिस तरीके से जम्मू में आज एक आर्टिफिशियल लेक बना करके, और जो 8 साल से ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था, उस प्रोजेक्ट को आज जारी किया, जिससे जम्मू का भी डेवलपमेंट बढ़े। पावर कट की बात हुई, आप देखिए कि पहले जैसे मैंने कल जब मैं आखिरी बात कह रहा था कि पूरे जम्मू कश्मीर में शाम होते ही एक कोई जुलूस हुआ, धरना हुआ, फटाफट सारे शटर गिरने लगते थे, दुकानें बंद हो जाती थी। महीनों महीने श्रीनगर की दुकानें नहीं खुलती थी, कहीं कोई पावर की डिमांड नहीं थी, लोग घरों में कैद रहते थे। और आज पीक डिमांड जो 2019 में थी, उसके मुकाबले 18% और बढ़ गई। पावर सप्लाई जो है वो 19% इंक्रीज हुई है। 2019 में जहां 1700 मिलियन यूनिट की खपत थी, आज 2022 में जम्मू कश्मीर में वो 20,400 मिलियन यूनिट की खपत हो रही है। और मैं चचा है नहीं, मैं चचा फारूक से पूछता कि आप कह रहे हैं, या लोग कह रहे थे, हमारी सुप्रिया भी चली गई, कि साहब वहाँ तो लोड शेडिंग हो रही है। मैं कह रहा हूँ जब सरकारें चुनी हुई थी, तो उन चुनी हुई सरकारों में 10-10 साल तक कोई पीपीए नहीं हुआ। जब पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं होगा, कोई नया पावर स्टेशन नहीं आएगा, तो निश्चित तौर से बिजली का उत्पादन नहीं होगा। और आज उसी का परिणाम था कि जब आज हालात सामान्य हुए, तो आज जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में, हर साल जिस तरीके से लगातार बिजली की डिमांड एवरेज 8% बढ़ रहा है। Situation in the country raised by Shri Derek O'Brien on 5th December 2023. On 5th December 2023, Shri Rakesh Sinha had concluded his address while participating in the discussion. Any other member desiring to speak that was indicated. The telepathy of Jairam Ramesh is so strong, overtaking physical hurdles. The Honorable Minister, who is deeply committed to parliamentary practices and has been in this House as much as you have been, or perhaps more, is very much here. I had, honorable members, indicated that we would like to accommodate as many members as possible.
some names have come. We would try to accommodate the honorable members. Shri K.R.N. Rajesh Kumar. No, I'm... Yeah. List of speakers. Professor Ram Gopal Yadav. We will have benefit of his thoughts on a very important subject, very wholesomely initiated by Derek O'Brien, impactfully initiated. Sir. Let me tell you, our equation always has been the same. But right now what has happened is, you seem to have acquired a new intellectual ability to find it out. Professor, 20 सेकंड को एडजस्ट करवा दें सर, वो 20-22 सेकंड पहले ही हो गया. Sir, I am here to take care of everything. Okay, sir. श्रीमान, I will drive the technology rather than be driven by it. आपने बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. मैं कल से सुन रहा हूँ भारत की आर्थिक स्थिति पर चर्चा, और बहुत सारे आंकड़े भी सुन रहा हूँ. वैसे आंकड़े आमतौर पर ये भूल भुलैया होते हैं, पता नहीं कौन बनाता है, कैसे बनाता है, किसी को इधर के लोग कंट्राडिक्ट करते हैं तो और कहाँ बनाता है? मैं मॉडरेट. इस ग्लोब के कौन से हिस्से में बनता है? देखिए, मैं वैसे ही ज़्यादा नहीं बोलता, आप जानते हैं. कल जब अदरवाइज मान लें आप, कल जब इधर से लोग बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगता था ये किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लोग हैं, जिनको यहाँ की कोई जानकारी धरातल की नहीं. सच बात यह है कि मोदी जी के परिश्रम और मोदी जी के नाम से ये सब आ जाते हैं. ये गाँव में देखना नहीं चाहते हैं कि क्या हो रहा है, कितना दिया जा रहा है, वो लग रहा है कि नहीं. जैसे मोदी जी से प्रचार करा दिया, हर घर जल, हर घर नल. नहीं, हर घर नल, हर घर नल, हर फिर घर जल. तो सॉरी, थैंक यू सर. तो हम जब जाते हैं अपने इलाके में तो लोग तो मिलने आते हैं कि समस्याएं होती हैं, कोई मदद के लिए आता है, क्या आता है. तो मैं अक्सर पूछता हूं कि बताइए आपके गांव में हर घर में पानी पहुंच गया? मैं कई गांव में जाता भी ब्याह शादियों, सारी पक्की गलियां जो विधायकों ने, सांसदों ने या ब्लॉक ने या जिला पंचायतों ने बनवा दी, वो खुद ही पड़ी हैं कि पाइपलाइन जानी. पाइपलाइन नहीं बनी, टंकी नहीं बनी. क्यों नहीं बनी? जो बताते हैं लोग उसको अदरवाइज न लें कोई गुजरात वाले लोग. वहाँ के लोग कहते हैं कि सारे ठेकेदार गुजरात के थे और पैसा लेके चले गए. ये लोग कह रहे हैं. सुनिए, अब रिकॉर्ड में देख लीजिएगा है कि नहीं है. मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ. तो अब कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 100% घरों में पानी गया, किसी में एक भी गांव घर में नहीं गया. तो इसको देखने की ज़रूरत है, इन लोगों की कहने की ज़रूरत है कि करिए. जब या तो प्रधानमंत्री जी से प्रचार मत कराइए इतने बड़े आदमी से, या फिर उस काम को पूरा कराइए. चिदम्बरम जी ने कल कहा था कि ज़मीन पर नहीं दिखता है, बड़ी हमारी इकोनॉमी है, ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है. तो मोदी जी ने कहा, सुशील मोदी जी ने कहा कि 3 राज्यों में जनता अगर नीचे नहीं दिखता तो जनता ने कैसे जिता दिया. तो अगर मैं ये कहूँ कि हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और तीसरे कुछ राज्यों में, कर्नाटक में आप क्यों हारे, ये कोई तर्क नहीं, ये कोई बैरोमीटर नहीं हो सकता है.
आंकड़े की अगर बात करें तो 5वीं अर्थव्यवस्था है, सही, बहुत बल्क है सब मामला, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी 194 देश में हम 133वें नंबर पे हैं। जो आम आदमी, सारा व्यक्ति क्या है, उसकी क्या स्थिति है, वो दर्शाता है कि हम दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं। भले ही 5वें नंबर पे हैं, लेकिन 194 में 133वें नंबर पर हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या कहती है? 283 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर 125 देशों में हमारी स्थिति 111 में। हालांकि एफएसएसआई ने इसका कंट्राडिक्शन किया है, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि कौन बनाते हैं आंकड़े, कैसे बनाते हैं, लेकिन इसलिए आंकड़ों पर जाने की जरूरत नहीं। अगर है तो मैं ये भी आंकड़ा दे रहा हूं कि हम कहां स्टैंड करते हैं। इसलिए केवल आंकड़ों पर भरोसा मत कीजिए। राकेश सिन्हा साहब नहीं है यहाँ, उन्होंने कई उदाहरण दिए। मैं तो रोज जब वहाँ रहता हूँ अपने क्षेत्र में तो सैकड़ों लोग मिलते हैं, तमाम लोग आते हैं ऐसे कि मेरी बेटी की शादी है, कुछ मदद करवा दीजिए। अभी परसों एक ऐसी स्थिति, जब मैं वहाँ था, अभी 2-3 दिन यहाँ नहीं था, एक आदमी बैठा था, मैं बताओ तुम्हारा क्या काम है? कैसा, मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ, मुझे बताइए। सब लोगों से मैंने कहा अगर सबकी बात हो गई तो जाए, नहीं तो हम इनको लेके हो गई, सब चाय पी के जा रहे। तो उसने कहा साहब मेरी बेटी की शादी है, उसकी सहेलियां थोड़ा संपन्न परिवार की हैं जिनकी शादी हुई, तो उसने अपनी, मुझसे तो नहीं कहा लेकिन अपनी माँ से कहा कि जैसा ये और हमारी सहेलियों के लिए शादी के दिन के लिए लहंगा बनाया जाता है, वो हमारी अब हैसियत नहीं, क्योंकि लहंगा तो अब लोग टीवी के जरिए ऐसा दिखने लगा कि 1-1 करोड़ रुपए का बनता है, 50 लाख का भी पहनती हैं। लेकिन ऐसे भी हैं, लड़कियों का मन तो होता ही सबका, गरीब हो कुछ भी हो, लेकिन शादी के दिन बेहतर पहनना चाहती हैं, तो 1 करोड़ का नहीं तो 10,000 15,000 का ही लहंगा बनवा। एक मेरी पत्नी से उनकी बेटी ने कहा था, तो हम उनकी इसकी व्यवस्था हम करवा देंगे, आप इसमें निराश मत होइए। लेकिन स्थिति ऐसा नहीं है जैसा आप कहते हैं कि उन्होंने ये कह दिया। उज्ज्वला दी कि जिसको गैस का सिलेंडर देते हैं, ये तो पता कीजिए कि वो गैस सिलेंडर दिए उसमें भरे कितने गए। पैसा ही नहीं लोगों को भरवाने के लिए, 80% लोगों को पैसा नहीं भरवाने के लिए, पड़ोसी लोगों ने ले लिया कि हमें दे दो सिलेंडर। ये स्थिति है। अब सर मैं तो ये चाहता हूं कि लोग गांव में जाके देखें कि जो शौचालय बने हुए हैं उनका प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं में बकरियां बनी हैं, कहीं में भूसा भर दिया लोगों ने, पानी की व्यवस्था नहीं। तो ये स्थिति है, तो ये ग्राउंड रियलिटी को नहीं दर्शाता। यहाँ तो कम से कम ऐसी बात कहिए जो वहाँ सुनने वाला ये समझे कि हाँ ये सही बात कही जा रही है। सुनने वाला कहेगा उनका ऊपर से निकल जाएगा, सर से ऊपर से कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, ये सही है, 5 लाख रुपए की सबकी व्यवस्था की, लेकिन उसको डॉक्टर नहीं मान रहे। आप आश्चर्य करेंगे कि एक मरीज को इलाहाबाद की एमपी हैं, भगोना जी की बेटी हैं रीता जी, उन्होंने भेजा वो गंगाराम, तो उसने वापस कर दिया कि हम ये कार्ड नहीं मानते। उन्होंने चिट्ठी लिखी और हमसे व्यक्तिगत आके कहा कि आप हेल्थ कमेटी के चेयरमैन हैं, कुछ मदद कीजिए। लाखों रुपए का बिल बना दिया और इसको मान ही नहीं रहा है। मैंने गंगाराम के सुपरिटेंडेंट से बात की, मैं जानता हूँ वो एम्स की गवर्निंग बॉडी में मेरे साथ थे, कभी मुलाकात हो जाती। उन्होंने कहा साहब इसका कोई ठिकाना नहीं कार्ड। अब देखिए ऑथेंटिक गवर्नमेंट का कार्ड है, लेकिन इसलिए कि उस पर आप जब पेमेंट लेंगे ज़्यादा तो मालूम पड़ जाएगा कि जो 10 रुपए की चीज़ है उसका 1,000 रुपया ले रहे हैं, तो नहीं दे रहे हैं कोई। और कुछ निकाल ऐसे हैं कि 500 रुपए की दवा दी और 5,000 का बिल बना देते, पैसा मिल जाएगा, लूट हो जाती उसमें। और आउट ऑफ
पॉकेट एक्सपेंडिचर जो हमारे यहाँ है दुनिया में सर्वाधिक हो रहा है। हमारे हेल्थ विभाग की और दुनिया के दूसरे देशों की ये रिपोर्ट है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से 2-3% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। अगर एक घर में किसी को कैंसर का मरीज हो गया तो उसकी तो जमीन बिक गई। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कैसे कम हो, मैं सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है, इसको अगर कम कर देंगे, आदमी का कोशिश की है आपकी गवर्नमेंट ने, नो डाउट, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है। तो कुछ दूसरे देश जैसे लंदन वगैरह में है 2-3% है केवल, पश्चिमी देशों में बहुत कम है। तो यहाँ की अगर व्यवस्था नहीं होती है तो कोई लाभ होने वाला नहीं। आप कहते रहिएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन आंकड़ों पर मत जाएं, गांव में, देहात में, ग्रामीण इलाके में जाकर असलियत को देखें, लोगों से बात करें और कमियों को दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार। Sir, Honorable Chairman, sir, I am very thankful to you for giving this opportunity. Sir, as on 31st March 23, the debt of the central government was about 155.6 lakh crore. This is 57.1% of GDP in financial year 22-23. When compared with the unemployment rate as on July 23 is 7.95%. During the first quarter of the current financial year, the manufacturing sector was not performing well to the expected level. But it seems the second quarter of the spur of growth in the manufacturing sector is there. Under these situations, a big question which arises in everybody's mind is whether the government will be able to become a 5 trillion economy by 2025. Or that has to be looked into. In the employment sector, there is a big gap. The government had set the ambitious task of providing 1 million jobs by the end of 2023. We are in the month of December. Only a few days left at the end of 20 year. My question is, it has to be considered by the Honorable Minister. Sir, we have given to ourselves a cooperative federalism center has the responsibility to take care of the financial conditions of the states. There are certain parameters which every state has to be followed. But what is happening in the state of Andhra Pradesh is known to everybody. As on the date of the debt of the present the state is about 11,28,992 crores. As per the information given in an answer to a parliament question, the debt of the state government at the end of the financial year 22-23 is estimated about 28% of GDP. Is the debt percentage of the state government falls within 28% of GDP. Sir, as per the statement of RBI, Please. Sir, every day, what is this every day? Please don't it is talk, a state is a part of the country. Everybody is there objecting every day. Speak on the Indian economy. It is a finance, state finance, it is a part of, Andhra Pradesh is a part of India. Please. It is not outside. But, sir, as per this, it is a record, as per the record of the RBI. Please. As per the statement of RBI, Please. the state government of Andhra Pradesh raised 46,443 crores from market. It repaid only 10,339. It has not even paid off of the amount borrowed market. In reply to my parliament question, on August 23, it has been interally guarantees of 22,363 crores, financial year 21-22, 57,449 during every financial year 22-23 have been issued by the state government. The state government of Andhra Pradesh and the state government has thrust into service of the state public sector companies, special purpose vehicles and other equivalent instruments into borrowing, and thereby attempted to decide the government and the net borrowings are within the prescribed limit. But the central government has stated that the borrowings by the state public sector companies and other equivalent instruments where the principal and interest are to be serviced out of the budgets. In spite of this advisory issued by the central government,
Please not stop the conclude. borrowing. Mani In Ravindra the- Kumar ji, please conclude. Your time is already over. Sir, just 3 minutes, please. Please be. the Honorable Chairman has given 10 minutes time to my Yes, colleague it member. has been given. 3 Chair minutes. has given 10 minutes time for my Please. colleague member. No, sir. Then the please. state now, the state is becoming a debt-ridden state. The debts of the government are increasing day by day. I'm inviting So- other person now, please. Your time is already over. Sir, as per the, Please as per conclude. the COG itself has observed, the government is making heinous mistakes of financial management. The COG itself about the financial ending, 22nd March has borrowed 1,20,000 crores without showing, telling the assembly. Please The conclude COG now. itself, audit certificate in the name of qualified opinion was given only to the AP in the history of the country. Audit, she said she can debts in the corporation as per the given to, but not is giving full information about the debts of the corporation. COG says every rupee spent on 21-22, there is Please, a I'm debt inviting of other person now. 51 It will not At go the on end record of now anymore. 21-22. No, please. Mani Sri Mahesh Jethmalani, Mani Mahesh Jethmalani, please. Mani Mahesh Jethmalani, please speak on the subject, please. Your time is 15 minutes. Your time is 15 minutes. Please speak. Please speak. It's nothing. It's not going on record. Please follow the rules. Please. Please speak. You speak. It's not going on record. It's not going on record. You speak. Please. Honorable Chairman, I thank you for this opportunity to speak on this most important subject of the economic health of this country. Sir, the essence of the criticism from the opposition benches, led in the main by former Finance Minister Mr. Chidambaram and Honorable Member Mr. Derek O'Brien, is that there is no point in the present government tom-tomming about India's high growth rate, when the ground reality, when on the ground, this high growth rate has not translated into indicators vital for the poor, such as high employment and low inflation. Sir, Mr. Chidambaram, as usual, has shifted the goalpost. But this shift is heartening in one respect. In April this year, citing the World Bank's latest GDP estimate for India, he attacked the government and he said that it was only Mr. Modi who was boasting about the economic growth rate in the country. The World Bank development update, which he relied on, had cut India's growth forecast to 6.3% from the earlier 6.6%. Mr. Chidambaram, however, has been repeatedly wrong about his economic forecasts regarding the NDA government's policies and programs. Again, the World Bank estimates have proved to be hopelessly wrong, and in the last 2 quarters, India's growth rate has been very impressive and way above the world average growth rate at 7.6% and 7.8%. Now, sir, Mr. Chidambaram, in a clear case of what can only be called convenient amnesia, he now accepts the growth rate. He doesn't dispute these figures, though he earlier did, and criticized us for boasting about it and predicting this high growth rate. So now he has moved on from his blind reliance on foreign forecasts about India's growth, but he laments now that what use high growth rates if high unemployment and high inflation persist. Now, sir, on employment, Mr. Chidambaram relies upon the periodic labor force survey. So it's a very good survey. It has got good methodology and its data. First, sir, the data reflects, and sir, I'm afraid I'll have to read this out because there are figures involved. Normally, I don't like reading it out. Normally, I like to address it ad hoc, extempore, but sir, I'll read it out.
First, the data reflects that both in quantity and quality, the employment situation improved consistently before the COVID pandemic. From 2017-18 to 2019-20, regular wage / salaried employees increased by 1.5 crores, a growth of 13.2%. The increase among females was 0.72 crores, or 29.4%, and that for males, 0.79 crores, or 8.8%. Further, formal employment increased by 1.2 crores, or 25.3%. The quantity of employment improved pre-pandemic as well. From 2017-18 to 2019-20, the UR, that is the unemployment rate, which captures long-term unemployment, decreased from 6% to 4.8%. The labor force participation rate, LFPR, increased from 49.8% to 53.5%. And so the worker population ratio increased from 46.8% to 50.9%. These changes were widely dispersed in rural and urban areas and for males and females. Now, sir, this is the pre-COVID. So as everybody knows, there was a setback to the economy during COVID. But let us come to the post-COVID situation. Post-COVID, urban employment registered a robust V-shaped recovery after the adverse impacts during lockdown and the second wave of the pandemic. Compared to the October-December 2019 quarter, in the April-June 2023 quarter, the worker population ratio increased from 44.1% to 45.5%. And sir, the labor force participation ratio from 47.8% to 48.8%. And sir, unemployment rate declined from 7.8 to 6.6%. So as urban areas were most affected by the pandemic, the complete recovery in employment in urban areas is crucial. The unemployment rate recorded in April-June 2023 quarter is the lowest, sir. This is important. The unemployment rate recorded in April-June 2023 quarter is the lowest over the last 5 years. Sir, the annual PLFS, which Mr. Chidambaram relies upon, the survey data, which covers both rural and urban areas, also shows complete recovery in employment post-pandemic. This pattern of complete recovery in employment is reflected similarly in data from, sir, EPFO, which is the Employees Provident Fund Organization, and Manrega. The monthly EFPO data discloses, and this is again a very important statistic, that the net additions in August 23 as being 116% higher than in December 2019. Honorable Chairman, you know that this EPFO data, the additions to it is employees' contributions. 116% additions to the EPFO reflect the quantum of employees that have arisen, the quantum of employment, therefore, that has risen. The demand for work, sir, this is also very important, under Manrega in December 2022 is half the demand in 2023. So Manrega is when people are desperate for work. They have no other work. It is now half the demand. This shows that the demand for distress work has declined sharply in rural areas. So finally, sir, as per PLFS, again the same survey which Mr. Chidambaram relies upon, the unemployment rate for persons, now this is an overall picture, the unemployment rate for persons aged 15 and above at the all India level decreased to 3.2% only, sir, in 22-23
from 4.1% in 21-22. So that's the state of the unemployment which Mr. Chidambaram harps on. So then as regards inflation, as per data released by the National Statistic Office, the NSO, the consumer price index was 4.25 in May this year, 4.81% in June this year, and 5.02% in September, well before the Reserve Bank, well below Reserve Bank India's upper tolerance limit of 6%. So we have been below 6% continuously, sir. And so ultimately the ultimate test, sir, forget figures and statistics. Employment, sir, and inflation are matters of great concern to the poor. Overwhelmingly, the only test about whether unemployment and inflation is hurting people are the election results. Sir, the overwhelming results show, sir, that people are satisfied with employment and inflation levels. Sir, a former British Prime Minister is alleged to have said that there were 3 kinds of lies. Lies, damn lies, and statistics. Sir, Mr. Chidambaram is an excellent juggler of facts. I leave it to members of the House and others watching this debate to decide which category do Mr. Chidambaram's statements fall within. So perhaps it merits emphasis that as Finance Minister, Mr. Chidambaram presided over some of the greatest scams this country has seen, which devastated our banking sector, ruined investors, and severely retarded economic growth, and the very important indicators of employment and inflation, which he has so eloquently waxed about in this House. So the only silver lining, I may add, personally, is that his activities and those of his government have, in their aftermath, enriched a battalion of lawyers whose earnings, sir, I cannot grudge. Sir, now, sir, Honourable Member Mr. O'Brien, being a leader from a regional party, the TMC, has struck a parochial note, sir. He talks about, sir, 8.5% growth rate in West Bengal, which is true. Can't deny that. So being a member of a national party, I have all India concerns. But I do admit to having a soft corner for West Bengal, having studied in a boarding school there from the age of 10 to 16 in that picturesque hill station, Darjeeling. So the burden of Mr. O'Brien's song is that India's high growth rate has only enriched billionaires and widened the inequality gap. Sir, I acknowledge, as I said, that West Bengal has a high growth rate of 8.4%, which is above the national average. But perhaps an examination of statewide data should reveal to Mr. O'Brien where the fruits of economic growth in West Bengal have gone. Sir, if per capita income is a measure of economic welfare, then West Bengal per capita income is well below the national average, and in fact, apart from a few northeastern states, one of the lowest in the country. Then, sir, again, on the question of income inequality, which he talks so much about, so as per the Gini coefficient, so the Gini coefficient is now a measure used by economists to measure income inequality, income distribution. So as a measure of inequality, West Bengal has a coefficient of 0.38, which is the third largest in the country and more than the national average. So if you go by income inequality, income distribution, his state performs the third worst in the country. So perhaps he needs to ask, as a former quiz master, some questions of himself, and he may discover some home truths. Sir, in conclusion,
it is the right of the opposition not merely to ask questions, but to ask incisive, searching questions of the Treasury benches. But, sir, equally, it behoves the opposition not to buttress their case with selective facts, slanted questions, and distorted data. So the people of this country deserve to know from their elected representatives the unvarnished truth. I thank you, sir. Thank you. Thank you. Now, Honorable Sri Binay Vishwamji, 3 minutes, sir. 3 minutes. 3 minutes. Sir, give me 10 minutes, sir, please. 3 minutes. I don't have in my hand. Sir, it's in the list here. Sir, please. My friends from the BJP, they are trying very hard, including my previous speaker, Mr. Vidyalaya. They were trying to pose a picture which is most untrue. Most untrue. The V-shaped development, where is it? Where is it? It can't be seen in the country. The fact of the country is that the people are hungry. The young are unemployed. The people, the young people, they knock at all the doors for employment. And we ask you, what happened to the promise of yours? 2 crores employment per year. Where is it now? Do you know the fact that even the FAO have made a report? It says that 22.4 crores of Indians are hungry today. And you say that everything is fine here. Sir, you live on propaganda. The BJP thrive on propaganda. And you thrive on propaganda in a very nasty way. The Beti Bachao, Beti Patao scheme. What happened to it? Major share of it, 42.3% of that funds went for propaganda alone. So this is the right-wing way of development. You forget the poor, forget the people, and you live on propaganda and spend the money for propaganda. This is the real truth of the country today. The economy is in shambles. Unemployment is on the increase. Hunger is on the increase. And the people have no huts to live. The projects are great, but they are not bringing any foods for the people. Sir, we want a decent life. At this age of ours, when the country is 77 years of independence, in this country, the maximum number of people of the whole world are illiterate, even today. Illiterate. Today night, the maximum number of people will go for sleep with half stomach. So this is the country in which child below the age of 5 years are dying, the maximum number. This is the country, sir, where the pregnant women are anemic, the maximum. These are WHO statements, sir. And you shut your eyes to this fact. And you tell the whole world that Vishwaguru. No, that Vishwaguru story is a real story, not. It's a story of illusions, a story of lies and half-truths. And you tell the world that the whole world is looking at you. Sir, the time has come that the people are demanding a change in the country. Don't think too much about the victory. That victory is a temporary victory. I can tell you, when all the forces of this country who stands for secularism, democracy, if they will stand together and hold hands together, we are sure that you can be defeated. The struggle has begun. Don't think that the struggle has ended. It's only a temporary situation. The struggle continues. And this house said that the struggle, the people will win. The people will win, not the propaganda masters. Sir, Pope Francis has told about one fight. What's the point? He told that if all the... 1 minute. Sir, one sentence. One minute on Pope Francis. Yes. Sir, Pope Francis told, if all the endeavors of the human beings are centered only for profits, then the whole
ecosystem. Thank the you. whole ethics, Conclude. religion, all will be in shambles. So, people are important, sir, not the profits. This is the question. We ask the question to you. Who are important? The people or the profits? We say the people are important. Adani is. Please conclude. Ambani is. Your government is the Adani, Ambani government. And on their figures, you paint a rosy picture saying that this country is growing. This country is growing only for the 7% of the population. Thank you. They are growing, not the people. Your figures are their figures, not the people's figures. You stand for the people, not for your people. I'm asking Mahua Majhi, 3 minutes. Srimati Mahua Majhi, please. Thank you. 3 minutes. Honorable Deputy Chairman, sir. इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री विषय पर मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी देश के विकास के लिए आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है या मेरुदंड की तरह है। हम 21वीं सदी में हैं, विश्व गुरु बनने की ख्वाहिश भी रखते हैं, मगर चिंता का विषय यह है कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, जिसका असर हर क्षेत्र में पड़ रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतों के पूरे होने के बाद ही हम कला, संस्कृति, साहित्य आदि के विकास की बात सोच सकते हैं। अब कला, साहित्य, संस्कृति क्यों? क्योंकि कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत मनुष्यों को पशुओं से अलग करता है, देश को सम्मानित स्थान देता है, विश्वगुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक भूखा पेट व्यक्ति देश के विकास में क्या साथ देगा और देश को विश्वगुरु बनाने की ख्वाहिश में को कैसे पूरा करेगा? उन्हें सम्मानजनक रोजगार चाहिए, आर्थिक निश्चिंतता चाहिए। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा वर्तमान केंद्र सरकार पूरा कर पाई क्या? यदि पाती तो अब तक तो 2014 से 2023 तक लगभग 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाती, आर्थिक निश्चिंतता आती और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश को विश्वगुरु बनाने की मुहिम में लग जाते। अग्निवीर, फौज में लगभग 3 साल की नौकरी। आप सोच सकते हैं, पहले एक गरीब का बेटा जब फौज में जाता था तो पूरा परिवार निश्चिंत हो जाता था, लेकिन अब 3 साल के बाद जब उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, बूढ़े माँ बाप होंगे, तो क्या करेगा? वो तो बेरोजगार हो जाएगा। क्या वो आत्महत्या के बारे में सोचेगा या फिर वो जो वादा है केंद्र सरकार का कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिए जा रहे हैं, उस दावे के अनुसार वो अपने परिवार का पेट पालेगा लेकर सरकार से, और अपने उससे उसके आत्मसम्मान का क्या होगा? क्या वो आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होगा? केंद्र सरकार कहती है जीडीपी बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन इससे कुछ बड़े उद्योगपतियों सहित कुछ ही प्रतिशत लोगों को मुनाफा हो रहा, देश के ज़्यादातर गरीब जनता को नहीं। सरकार कहती है कि विकास हो रहा है। सरकार के दावे के अनुरूप यदि लगभग 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है जिनके पास खाने को पैसे नहीं, तो इसका साफ मतलब है कि इतने लोग बेरोजगार हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं कि अपने परिवार का पेट पाल सके, अपनी आय से चावल, आटा, अनाज खरीद सके। 80 करोड़ यानी देश के लगभग 3/4 लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। सरकार द्वारा किए जा रहे खर्च में भी व्यापक असमानता दिखती है। खर्च की प्रायोरिटी आश्चर्यचकित करती है। एक तरफ मनरेगा जैसी गरीबों की योजना के पैसे स्टेट्स को समय पर देने में आनाकानी हो रही है, वहीं केंद्र सरकार के विज्ञापनों एवं पब्लिसिटी का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं में भी पब्लिसिटी। झारखंड सरकार में भी मनरेगा अंतर्गत सामग्री मद में भुगतान हेतु लगभग 426 करोड़ रुपए लंबित हैं, जबकि झारखंड गरीब और पिछड़ा राज्य है, देश के अन्य राज्यों से नीचे दूसरे नंबर पर है। पठारी इलाका है, बारिश के अलावा खेतीबाड़ी नहीं होती, ट्रैफिकिंग की समस्या है, पलायन विस्थापन की समस्या है, और इसी के कारण बहुत ज़रूरी है कि मनरेगा के पैसे दिए जाएँ समय पर। भारत सरकार की कोल कंपनियों द्वारा झारखंड में कोयले की रॉयल्टी के लगभग 1,36,000 करोड़ रुपए लंबित हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बार बार आग्रह करने के बावजूद अभी तक नहीं दिया गया, जबकि कोयले का देश में जो खपत है उसका मैक्सिमम हिस्सा झारखंड से आता है। ये आर्थिक सौतेलापन क्यों? पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू की जाए, नहीं तो बुढ़ापे की लाठी भी छीन जा रही है लोगों की। हमारे स्टेट में हमारी सरकार ने कर दिया है, ऐसा हर स्टेट में होना चाहिए। राज्यों को जीएसटी संग्रह की हिस्सेदारी की देय राशि समय पर नहीं मिलती। झारखंड जैसा गरीब राज्य भी इस वजह से आर्थिक परेशानी झेल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे राज्य में 8 लाख गरीबों को नहीं मिला, ये भी नहीं दिया जा रहा है। गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ आर्थिक मामलों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास सिर्फ जुमला नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद महुआ माझी जी। नाउ डॉक्टर फौजिया खान जी। डॉक्टर फौजिया खान जी। Thank you very much. 3 minutes. Thank you, sir. So there has been a lot of discussion on numbers,
and economic indicators, sir, since yesterday that measure the economic situation of our country. Perhaps it is time, sir, for a recalibration of our metrics to ensure that the pursuit of progress is accurately reflected. Economic growth isn't just about numbers. There's a deeper narrative to explore. These numbers have to reflect on ground. Sir, it is essential to move beyond surface level reporting. The most concerning issue this year is the escalating unemployment crisis in India, particularly the dearth of government job opportunities. सर, मैं एक कवि की एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहूँगी जो बेरोजगारी पर है, बेरोजगार, देवी प्रसाद मिश्र। ये सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है कि क्या कर रहा है वह आजकल। वो डकैती नहीं डालता, वो तस्करी नहीं करता, वो हत्याएं नहीं करता, वह फरेबी वादे नहीं करता, वह देश नहीं चलाता, फिर भी ये सवाल उसे शर्मिंदा करता है कि क्या कर रहा है वह आजकल। सभापति महोदय, unemployment is intertwined with alarming consequences, notably with the rise in youth suicides. According to a report from Azim Premji University, 42% young graduates were unemployed. Sir, according to CMIE data, jobs in manufacturing dropped 31% between 2016 and 2023. According to the latest report by the NCRB, over 13,000 students took their own lives in India in 2022. 9.6% of the suicides were those who were self-employed or salaried professionals. Unemployed persons comprise 9.2% of all suicides reported in India. Graduates account for 5.2% of all suicide deaths. This dire scenario, sir, often pushes vulnerable individuals towards extreme measures, either towards an uptick in the use of drugs, petty crimes, or suicides. Sir, we understand that this government has decided to put the number system on fifth gear by relying on headline-friendly numbers, turning the nation's progress into a clickbait economy. Sir, but this is reducing complex issues to attention-grabbing figures and potentially overlooking the nuanced aspects of comprehensive development. Sir, development isn't about tall buildings, housing tall claims. It is about the quality of life that can never be measured in numbers. Sir, एक कवि की एक दो पंक्तियां कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगी। अगर गरीब और गरीब होता जा रहा है और धनवान होता जा रहा है, तो मैं कहूंगी मालूम करो हाथ उन्हीं का तो नहीं है, मालूम करो हाथ उन्हीं का तो नहीं है जो लोग आग बुझाने में लगे हैं, जो लोग आग बुझाने में लगे हैं। धन्यवाद सर। Thank you, Dr. Fauzia Khanji. Now, Honorable Dr. M. Thambi Durai. 3 minutes, sir. Thank you, Mr. Deputy Chairman, for having given the opportunity to participate in the discussion on behalf of ADMK party. To begin with, it may be claimed that India is one of the fastest growing major economies of the world and that it is the 6th largest economy now. Sir, because of brief of the time, I'm going to subject. GST also plays its role in economic development. We hear a lot here from members of different states who state that the share of the GST pertaining to his or state has not been given, due to which the economy is suffering. The government should have a mechanism by which they are settled immediately without making the state suffer for want of money from the center. As far as the erstwhile government of Tamil Nadu is concerned, which is part of Indian economy, the ADMK government also suffered during the periods Honorable Amma Jayalalitha and Edappadi Palaniswamy as chief ministers, with all the constraints of the money.
Honorable Amma was able to implement many welfare measures like giving laptops and bicycles to students, Amma canteen, Amma pharmacy, giving gold Mangal Chutra for girls at the time of marriage. During the period of Edappadi Palaniswamy as Chief Minister, despite of huge financial crisis, he also extended welfare programs for farmers, tackling situation during a corona period very efficiently. He also extended financial assistance, 2,500 crores for each family during the Pongal festival. He also made reservation, 7.5 reservation for government studying school students to get admission in MBBS course, and also he established 23 medical colleges for educational purpose, I am telling, sir. As mentioned, was mentioned by many members yesterday, we support the demand for the present government Tamil Nadu for financial assistance to tackle the rain flood situation in Chennai, Tiruvallur and Kanjipuram due to cyclone. When earlier government faced such kind of flood situation, Amma government and Edappadi government tackled it very effectively, taking precaution measures. It also, sir, I want to say that present Chief Minister said this in 2020 is artificial flood situation. It's a natural situation. I couldn't understand what is the artificial situation, sir. Please, I would like to register that the present DMK government failed to tackle the adequate precaution measures to tackle the situation. In spite of spending 4,500 crores on drainage work, he failed to understand where the money has gone. Please. Sir, DMK government has to explain that inefficiency to tackle the problem, sir. Please. Sir, and also, I want to say, sir, your time is over. What? Please, sir, please Tamil Nadu is in India, sir. Tamil Nadu is in India. Your time is over. The DMK government is doing, I have the every right to speak. Your time is over. No, I am telling, sir, flood situation is havoc. In Tamil Nadu, people suffering, especially in Chennai. They cannot move. The present DMK government failed to tackle the situation. That's why he said. Thank you. They want 5,000 crores from you. Thank you. What happened? 4,500 crores, which are already discussing national economy. They have to explain where it is gone. That is the situation. Please, sir, please. the rain is not flowing there. The liquor is flowing there. Please. There is ganja is there. But please, there is please. lot of inefficiency I'm there. calling- This is the calling tackle some that other the people. government Please. is doing. Please. Thank you very much, sir. Thank you. Mani Ajit Kumar Bhuyan. Honorable Ajit Kumar Bhuyan. Honorable Ajit Kumar Bhuyan, please. 3 minutes. 3 minutes. Please. Please sit. No, nothing is going on. Please, you speak. Honorable Ajit Kumar Bhuyan, please speak. That will go on the record, please. Thank you. Nothing else will go on record. Sir, for giving me this opportunity. Please. Despite an impressive growth ratio please. of 7.2% in the current financial year, ended by March 2023, the demand side economy of the nation shows a very dismal picture. The demand for goods and services in India has been stagnant or declining due to various factors such as low income growth, high rate of inflation, massive unemployment, and inequality in income and wealth. Some members, they are talking about employment, and particularly ruling party members, their views are part of propaganda and based on some lies. The unemployment rate for the country touches 3.2% for the year 2022-23 as per official report published by Center for Monitoring Indian Economy. As per NSO data, the rate of inflation in Indian economy is 5.02%, which is slightly declining from 6.83% in August 2023. Oxfam India's report on inequality in India, released recently, finds that first 5% of Indians own more than 60% of the country's wealth, and that is the reality. The extreme inequality in numbers put the whole Indian economy in a situation of serious concern. Sir, in the list of World Happiness Index
published by United Nations Sustainable Development Solutions Network, India ranks at 126th position out of 150 countries for 2023. This is also a dismal picture for India. In accordance with the last SDI report, India ranked at 132 position out of 191 countries of the world. It is also a very serious concern for Indian economy that 2023 Global Hunger Index gives India a rank of 111 out of 125 countries, which was mentioned by Professor Yadav. I am from Assam, so let me speak few words on Assam. If we consider the state of Assam, the rank of Assam in India is 16 largest, 15 most populous, and 26 literate state out of 28 states of India. Please in conclude. terms of, sir, Please, 1 minute, time is half over. minute, 30 seconds. Yes. In terms of GDP, Assam's rank is 17th, 5.61 lakhs crore. Approximately 32.07% of Assam's population lives below the poverty line as per official statistics. Assam is in the list of India's 6th poorest state. Thank you, sir. Thank you. Thank you, माननीय अजीत कुमार भूया जी. माननीय रामदास अठावले. माननीय रामदास अठावले, not present. माननीय श्री वीरेंद्र प्रसाद बैस जी. माननीय वीरेंद्र प्रसाद बैस. Thank you, sir. Today, world economy is suffering very badly. At this critical time of the world economy, today we are discussing here about the economic situation of our country. Sir, country like United Kingdom, Germany, developed country, they are very seriously getting strict about their economy, sir. New Zealand Prime Minister publicly announced inability to work, develop works, and resolve unemployment issue in New Zealand due to the poor economic condition. But in this critical juncture, India made unprecedented, historical economical development in our country under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. Sir, today inflation is going down and foreign exchange reserve in India today is all-time high, and infrastructure development going very fastly in India. This is the reality of Indian economy today, and which is acknowledged by the World Bank. World Bank in the recent reply, World Bank says in this critical time of the world economy, Indian economy is doing very well. This is not my opinion, sir. This is the opinion of the World Bank. Recently, they have published the bulletin, and in this bulletin, World Bank says the World Bank has also recognized unprecedented economic growth of our country, sir. As per the latest report of the World Bank, India continues to show resistance against the backdrop of challenging global environment, and according to World Bank's latest India development, India is going very fast, and India is unprecedentedly expand the economic diversion in India, sir. The World Bank flagship half-yearly report, Indian economy observed that despite the significant global changes, India was one of the fastest growing major economy in financial year 2023 at the growth rate of 7.3%, sir. India growth was second highest among the G20 countries, sir. Sir, recently we very successfully conducted the G20 summit in India, and India is India's ranked second, sir, among the G20 countries for the economic development. This is the present scenario of our country, sir. Sir, one more thing I like to say, sir. In resistance was the underpinned by the robust domestic demand,
strong public infrastructure investment, strengthening the financial sector, blanketing growth increased 15.8%, sir. First quarter of the 22nd, 23rd year, sir. They compare with the 13.3% with the previous year, sir. Sir, Indian banking sector is a sound banking system, sir. India is following, sir, branch banking system, not like, sir, unit banking system of USSR. When major the developed countries, their banks set back. They closed down their bank, financially bankrupt. At that time also, Indian banking system doing very well, and they have played major role for the development of our country, sir. Sir, one more I'd like to say, many people say about the inflation. Sir, it is agreed by everybody, even when Chidambaram this spoken yesterday, he also admitted the inflation rate in last 3 months going down like anything in our country. This is the real situation of our country, sir. Sir, before independence, per capita income of Assam higher than other parts of the country, sir. And long time India was ruled by the Congress. During the period, our per capita is going down like any town. Sir, what is the reason? Ji, please conclude. Yes, please, sir. Your yes, time sir. is over. What is the reason why per capita income of Assam going down, sir? I like to say due to the critical flood condition, and only for that reason, sir, our per capita is going down. I appeal in this beautiful financial position, government should go some proper intention for the flood to resolve the flood situation of Assam, please sir. conclude. And sir, one more thing, sir, in our economy, tea industry played very important role, sir. For getting also foreign exchange, tea industry played major role, sir. Now, Indian tea industry, especially Assam and West Bengal, suffering serious threat from Sri Lanka and Kenya, sir. Please in this time, I like to request Government of India come forward to help tea industry of Assam for their growth and to meet the challenge faced by the Kenya and Sri Lanka. Thank you very much, sir. Honorable Dr. Santanu Senji, 9 minutes. Thank you, sir. But before I come to my topic, I would like to strongly protest the pose and posture of one of our cabinet ministers, targeting the only lady chief minister of the country just few minutes back regarding one film festival. Please speak. I can show you the video if you want. I strongly... Please speak on the subject that Thank you, but it should be noted, sir. Sir, so far the economy is concerned, there are two pictures of Indian economy. One is the picture of privilege and the other one is the picture of poverty. Sir, we live in India where 6 out of 10 Indians survive on less than 260 rupees per day. So far the global hunger index is concerned, it's very unfortunate to remind you that India ranks 111 out of 125 countries. 30 suicides per day due to poverty or unemployment. Sir, we live in India where on hand we are talking about multi-trillion economy, but on the other hand, almost 550 lakh people are pushed into poverty due to healthcare cost and mainly due to out-of-pocket expenditure. And at the same time, targeting few states, they are withholding the money for National Health Mission, which is depriving the common people at large of those particular targeted states like West Bengal, which can be win over by political path. Sir, we live in India where it would take more than 200 years for a minimum wage worker in rural areas to earn what the top paid executive at an Indian company earn in a year. Sir, so far this NREGA is concerned, it's very unfortunate though a sizable amount of Indian population depend on NREGA. In the last budget, the budgetary allocation for NREGA has been cut down by more than 33%. And we have seen our learned Prime Minister talking about NREGA, that ye to mati khodne ka kaam hai. And we have seen in the budget it has been decreased. 154 farmers and daily wages and laborers, they die by suicide every day. Sir,
So far this Narega is concerned, in our state of West Bengal, let me tell you, there are more than 21 lakhs of people who have already done their job and they are still deprived of their wages for last 2 consecutive years, despite repeated official verbal intimations, sir. So many teams have gone, and in the name of investigation, they have raised few excuses. Sir, I would cite an example and in reply given in today Lok Sabha regarding the fake job card. Out of 7.4 lakhs fake job cards found in the country as a whole, 3 lakhs from Uttar Pradesh. Double engine Sarkar, 1.15 lakhs from another state being run by an unofficial ally of BJP, Orissa. 47,000 found in another state run by another friendly political party of BJP, Andhra Pradesh. Sir, and so far the Bengal is concerned, it's only 5,000. And so far the job card Aadhaar link is concerned, West Bengal ranks second. In Andhra Pradesh it is 99.7%. In Bengal it is 99.68%. But even then Bengal is being deprived of their fund. Sir, 1 lakhs people are getting deprived, including one lady from our Hooghly district, Nupur Hati, which has been spoken by our leader of our party, Derek O'Brien, yesterday. Sir, I was not here to raise the issue of Gini coefficient, but I have seen my colleague, a nominated BJP renowned lawyer, who was talking about Gini coefficient, addressing our leader of the party, Mr. Derek O'Brien, who does enough research to put forward any record. And let me give you the fact. He was talking about the Gini coefficient targeting West Bengal. I will give you the data of Gini coefficient in the entire country, sir. The Gini coefficient in India is forecast to amount to 0.35 in 2023. The number of people in India who are earning less than $2 per day is forecast to amount to 0.16 billion in 2023. This is for my beloved colleagues, sir. Sir, we live in India where we are having the maximum possible unemployment in last 45 years. Per capita income in India, it is even less than 1/5 of that of China and less than 1/32 that of USSR. Sir, we live in India where green curtains gracefully conceal the harsh truth that over 40% of Indians' urban populace calls slums their home. We can recall that day of Namaste Trump, when 4-feet wall was built just to conceal the actual scenario, because the friend of learned Narendra Modi ji, Donald Trump, was supposed to visit our country. That is the harsh reality, sir. Sir, in India, we found 8 November 2016, demonetization. We know what the effect was, how the poor people suffered from this. Sir, we live in India where 2% wealth tax on 100 billionaires can feed the children under the midday meal program for 3.5 years, and where 3% of wealth tax on the Indian billionaires can fund the National Health Mission for 3 years. So far the Awas Yojana is concerned, 11 lakhs 33,000 people are being deprived. Several teams visited our state of West Bengal in the name of national level monitors, in the name of central team. What did they do? 69 teams visited, sir. Our minister came on 7 November 2022. Then on 24th November, entire data was supposed to be given, and in due course of time it was put in the portal. Several inquiries were there. Action taken report was submitted in due course of time. Again on 5th of November, questions were raised and that were replied on 28th of November. But till date no fund has come. And once again, on this 1st of December, another intimation has gone to our government of West Bengal that again 7 teams will visit 14 districts of our state of West Bengal. Why, sir?
Is it the reason that only it is being run by Trinamool Congress and Madam Mamata Banerjee cannot be defeated politically? Yes. Is it the only reason? Just tell me one state other than West Bengal which is being deprived in the same fashion, sir. You can't. Sir, let me tell you the India's external debt. It rises up to $629 billion. It is the report given by RBI in June 2023. Sir, total debt per Indian over 9 years has increased by 2.5 times, and outstanding debt on Government of India was 55,587 lakhs in 31st March 2014, and it has become 15531 lakhs on 31st March 2021. Courtesy our BJP government, sir. Sir, every Indian have a loan which they haven't taken. 2014, per capita loan, 43,214. And in 2023, it has become 1,09,373. Courtesy our BJP government, sir. Sir, let me tell you the fact. So far the House is concerned, 6% of women of India and 35% of men, they don't have their own houses, sir. So far the cooperative federalism is concerned, it hardly exists in the recent scenario, sir. So far the migrant laborers are concerned, we are talking about economy, but COVID has unveiled the real scenario. We have seen the migrant laborers, they are working from one place to another. They are carrying their parents on their shoulder. Our government has taken no step to solve the issues of these migrant laborers, sir. COVID has shown the path, but unfortunately, our government never takes any lesson from this incident, sir. Sir, so far the unemployment is concerned, just 1 minute, sir. Center for Monitoring of Indian Economy speaks about unemployment. Highest unemployment in last 45 years. More than 40 lakhs sanctioned central government posts are there. 30 lakhs employees are there. And more than 9.6 lakhs posts are lying vacant till date. That is the real scenario of Indian unemployment, sir. Unfortunately, so far the literacy is concerned, there is tremendous gender disparity in the literacy. Census, we don't know when it will take place. Sir, just 30 seconds. I will finish by saying, sir, we are celebrating 75 years that we have is two different ideas in India and a story called survival of the richest. Let us strive for true equality and create a society where not a single individual is left behind. And my final comment will be, sir, we are very happy to take part in this short duration. Earlier it was for 4 hours, now it has been extended for 8 hours. We are really very happy. My two suggestions. Why can't we have the same type of short duration discussion on the cooperative federalism, sir? Why can't we have? And lastly, I have got one question in my mind, if I can be satisfied by your reply. Government is giving so much of time for short duration discussion. I'm sorry. Are they not having any business, sir? That is the question in my mind. Dr. Dinesh Sharma. Dr. Dinesh Sharma. Dr. Dinesh Sharma. सम्मानित सभापति महोदय, आपकी कृपापूर्वक अनुज्ञा से आज आर्थिक विषय पर मैं इस विद्वत समूह के समक्ष कुछ विचार रखना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही है और ये एक वो समय था जब विदेश के लोग भारत की खराब छवि को प्रदर्शित करते थे और वृत्त चित्रों में उपहास उड़ाते हुए हम सब देख लेते थे कि कहीं गरीब, भूखा, नंगा और इस प्रकार का आवृत्ति वाला व्यक्ति जो दीनहीन अवस्था में है उसको भारत का नागरिक बता के वृत्त चित्रों में दिखाते थे। आज मोदी जी के आने के बाद 9 वर्ष का जो समय गुजरा है उसमें आज वही भारत का नौजवान हाथ में कंप्यूटर लिए हुए जब विदेश में जाता है तो अमेरिका ऐसे देश के राष्ट्रपति को कहना पड़ता है कि इंडियन से बच के रहो, ये ऐसा ना हो हमारे देश के नौजवानों का रोजगार छीन ले। ये मान्यवर, ये अर्थव्यवस्था का जो एक स्वरूप बदला है
उसका मूल कारण रहा कि क्रमागत तरीके से, एक विधि सम्मत तरीके से प्रत्येक बिंदुओं को छूने का प्रयास इस भारतवर्ष में 9 वर्षों से लगातार किया गया है। जो भी यहाँ की योजनाएं थी केंद्र सरकार की, उनका कनेक्शन एक योजना का दूसरे योजना से कनेक्शन रहा है। और जब हम सब जानते हैं कि जब जनधन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था तो लोग उपहास उड़ा रहे थे। 25 लाख के या उससे थोड़ा सा 50 लाख के अंदर खाते हुआ करते थे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के बीच में। आज 55 करोड़ के आसपास आज जनधन के खाते हैं। और मान्यवर बताते हुए ये मुझे प्रसन्नता होती है कि अर्थव्यवस्था का बदलाव कैसे हुआ कि आज उनमें जिन लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक निश्चित राशि को जमा करें, फिर भी हमारे देशवासियों का हौसला देखिए कि आज 4,000 रुपया से भी अधिक औसत जो बचत खातों में धनराशि है, इन 55 करोड़ जो खाते हैं उनमें 4,000 रुपए औसत खातों में आज जमा है। इसके समय हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप में ये प्रगति हमारे देश का परिचायक इस बात का है कि हमने स्वदेशी को अपनाया, हमने उत्पादन को बढ़ाया, हमने जो लघु उद्योग थे, जब गांधी जी कहा करते थे कि हमें बहुत बड़ा उत्पादन नहीं, हमें बहुत लोगों के द्वारा किया गया उत्पादन चाहिए, तो आज हमने ना केवल एमएसएमई को बढ़ाया, हमने न केवल मुद्रा लोन देकर करोड़ों लोगों को उद्यमी के रूप में परिलक्षित किया, बल्कि हमने स्टार्टअप के माध्यम से, हमने मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और हमने डिजिटल इंडिया के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में रोजगारों के सृजन की प्रक्रिया को तेज किया। मान्यवर, आज भारत एक तेज विकास गति से बढ़ने वाला देश बना है। भारत की मजबूत जो अर्थव्यवस्था है उसने भारत की जो छवि है, अंतर्राष्ट्रीय छवि, उसको बढ़ाया है। आज ये देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और इस 9 वर्षों में हम कह सकते हैं कि उस भारत में हर गांव में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के हम बिल्कुल निकट पहुंचे हैं। ये देश महिला, युवा, किसान, गरीब के कल्याण के लिए समर्पित लोगों का देश बन चुका है। आपके संज्ञान में ले जाना जरूरी है कि आज ये सरकार के समावेशी प्रयासों के माध्यम से सरकार ने 13.5 करोड़ के से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर किया है। आज पीएम किसान सहित कई योजनाओं के माध्यम से अन्नदाताओं जो को बड़े पैमाने पर सशक्त करने का प्रयोजन चला है। रोजगार मेलाओं ने बहुत सारे रोजगार पैदा किए हैं। आज भारत का रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन कर रहा है। कृषि उत्पादन के मामले में आज नित्य नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मान्यवर, ये वो भारत है जहां पर करों का भार पड़ा करता था। 17 करों का समावेशन करने के बाद में उनका सरलीकरण किया गया। आज कई गुना, मैं तो कहूंगा कि 50 गुना ज्यादा आज करों का जो संग्रह है, उस संग्रह ने आज पूरे भारतवर्ष को यह दिखाया है कि अब भारत याची नहीं है, भारत वो देश नहीं है जहां जरूरत पड़ने पर कांग्रेस शासनकाल में अमेरिका से सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं आता था और यहां आने के बाद राशन कार्ड में लोगों को वो बंटता था। वो लाल रंग का गेहूं वहां के जानवर नहीं खाते थे तो वो हिंदुस्तान को भेजा जाता था। आज इस देश में आप देखो तो यहां पर 5 किलो अन्न आज 2.5 वर्षों से कोरोना के बाद भी आज वहां मुफ्त में लोगों को देने का काम यहां पर किया जा रहा है और आज इसके कारण यहां को गरीबी रेखा से ऊपर उठने का क्रम सतत जारी है। मान्यवर, आज अभी हाल में वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के अनुसार भारत 2030 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि आज हम ये कहते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, हालांकि पहले हम 10वीं अर्थव्यवस्था में थे या उससे पहले 11वीं अर्थव्यवस्था में थे। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। लेकिन 5वीं अर्थव्यवस्था के बनने के पीछे मैं ये कह सकता हूं कि आज जो परचेजिंग पावर पैरिटी PPP जिसे बोलते हैं, उसका अगर आकलन किया जाए तो भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसरित हो चुका है। आज भारत का नागरिक जब विदेशों में जाता है तो भारत का नागरिक सर उठाकर देख सकता है और मैं ये कह सकता हूं कि जो GDP पिछली तिमाही में हमारा 7.6 हुआ है, इसने भी बहुत लोगों को चौंकाया है। आज चीन कराह रहा है मुद्रास्फीति के कारण, आज जर्मनी अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचा है मुद्रास्फीति के कारण, अमेरिका
में आज हलचल मचा हुआ है और ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ रहा है और आखिर में उसकी स्थिरता आ सके तो भी एक सनातनी को लाकर प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है और जब सनातनी आता है तो वहां की वो अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का काम करता है। लेकिन वही भारतवर्ष है जो आज नीचे से उठकर आज 7.6 जबकि विश्व की वैश्विक दर जो है वो आज 3% के आसपास है। आज IMF सराहना कर रहा है भारत की, ग्रेडिंग कम कर रहा है चाइना की और भारत आज विश्व नेतृत्वकर्ता के रूप में G20 में उभर कर आया। उसका मूल कारण यह था कि हमारे उत्पादन बढ़े हैं, हमारा उपभोक्ता का जो अंश था उसमें उपभोक्ता के अनुसार हमने डिमांड को क्रिएट किया है। आज हमारा ट्रेड बैलेंस फेवर में हुआ है। आज निर्यात संवर्धन की नीति आज पांव पसार रही है। आज आयात कम हुए हैं। आज स्वदेशी के कारण हमारा जो उत्पादन है, उत्पादन की लागत प्रति इकाई कम होती जा रही है। इसका यही वजह है कि भारत आज वो भारत बना है जैसी कि व्याख्या लोग कर रहे थे कि बंगाल 8.5% है। अरे बंगाल तो समृद्ध देश हुआ करता, समृद्ध प्रदेश हुआ करता था। अंग्रेज जो सोने की चिड़िया समझकर बंगाल में आए, हिंदुस्तान में आए थे तो सबसे पहले वो आर्थिक राजधानी के रूप में बंगाल में गए थे। बंगाल में विभिन्न प्रकार के जब शासन आए तो क्रमागत रूप में उनकी आर्थिक व्यवस्था का ह्रास होता गया। आज ये दुख की बात है कि एक समय रोजगार के लिए लोग कहीं जाते थे तो वो बंगाया करते थे। मुझे खुशी है कि कोरोना के कार्यकाल में तमाम लोग वापस उत्तर प्रदेश आए। मैं उत्तर प्रदेश से हूं और उत्तर प्रदेश में उनको स्वरोजगार मिला। आज बंगाल के लोगों को रोजगार खोजने के लिए दूसरे जगहों पर जाना पड़ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं श्रीमान कि आज की बदलती हुई स्थिति में ये 13.5 करोड़ लोगों को जो हमने हमारी सरकार ने गरीबी के रेखा से ऊपर किया है, PM किसान सहित योजनाओं ने अन्नदाताओं को बड़े पैमाने पर सशक्त किया है। रोजगार मेलाओं के माध्यम से आज रोजगारों का सृजन हुआ है। केवल नौकरी देने से रोजगार नहीं होता, हम अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार देते हैं। हम नौकरी भी देते हैं और स्टार्टअप से हम नौकरी को क्रिएट भी करते हैं। हम विभिन्न प्रकार का पूंजी निवेश को बढ़ाते हैं। हम सोना नहीं बेचते, हम अपनी निधि का सृजन स्वयं किया करते हैं। और आज अगर आप देखो तो निरंतर बढ़ते हुए जो UPI ट्रांजैक्शन है उससे डिजिटलीकरण के प्रतीक के रूप में भारत नित्य नए शिखरों को छू रहा है। अभी हमने त्योहार मनाया, दिवाली मनाई। हालांकि पहले तो त्योहार होते थे, हमारे उत्तर प्रदेश में तो कर्फ्यू लगा करते थे कि दिवाली आई तो कर्फ्यू, ईद आया तो कर्फ्यू। अब की दिवाली में पूरे देश ने 4 लाख करोड़ से ऊपर का व्यवसाय किया है। ये एक भारत की समृद्धता की तरफ बढ़ने का एक कदम है। लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आती है तो वो काशी का विश्वनाथ बाबा का जिक्र करती है, वो मथुरा का करती है, वो अयोध्या का करती है। लेकिन मोदी जी की सोच देखिए कि आज कै गुना जो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से कई गुना लोग आज वाराणसी में आने लगे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद। आज कई लाख लोग ज्यादा अयोध्या में आ रहे हैं जो श्री राम लला का मंदिर बनने के लिए जा रहा है। धार्मिक आस्था का भी सम्मान और साथ साथ में आर्थिक समृद्धि का भी आयाम। ये नीति केवल उसी की हो सकती है जो निष्पक्षता के भाव से काम करे। मान्यवर, आज जो वैश्विक रेटिंग हुई है उसमें 2030 तक अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था के बारे में कहा गया है। कुछ लोगों ने कहा है कि अर्थव्यवस्था जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी दुनिया की इकोनॉमिक पावर, वो 2027 तक भारतवर्ष बन जाएगा। भारतवर्ष में अगर देखो ये मुद्रा योजना मोदी जी लाए, आज 8 करोड़ लोग उद्यमी बन चुके हैं। अगर आप देखो ये कहते हैं रोजगार सृजन की बात, ये रोजगार सृजन के बाद 2014 में ये केवल 350 स्टार्टअप थे, आज 1,25,000 स्टार्टअप हैं और 110 से अधिक यूनिकॉर्न एक्टिव हैं। यह देश में लोगों की औसत आय भी बढ़ी है। मैं आपके संज्ञान में बताना चाहता हूं कि आज जो आयकर विभाग के जो आंकड़े हैं उन्होंने ये कहा कि 2014 में औसत आय 4 लाख रुपए थी, आज 2023 में बढ़कर ये 13 लाख रुपए हो गई है। ये समृद्धि, अरे आर्थिक ये विश्लेषण नहीं होता तो ये आय बढ़ती कैसे, कहां से पैसा आया,
ये ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो थे ऊपर ही हुए थे, उन पर रोक लगाई गई। जो भ्रष्टाचार था उन पर रोक लगाया गया, और उन पर रोक लगाने के बाद में जो पैसा आया, जनता का पैसा जनता के खातों में पहुंचाया गया। यह मोदी नीति है, और इस मोदी नीति के कारण आज बदला हुआ जो परिदृश्य है उसमें आज आईआईटी खुल रहे हैं, आज आईआईएम खुल रहे हैं, आज मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। ये आज ये सांप्रदायिक दंगों वाला प्रदेश नहीं है। आज ये सनातनियों का विरोध करने वाला देश, कुछ जगह पर लोग हो सकते हैं लेकिन पूरा देश नहीं है। आज ये देश का सम्मान बढ़ाने वाला देश बना है। ये अब सोने की चिड़िया नहीं रहा कि सोने की चिड़िया होती थी, विदेशी आते थे और पंख उखाड़ कर चले जाते थे। अब ये सोने का दहाड़ता हुआ शेर वाला देश बना है, और ये मोदी देश, ये इस देश की आर्थिक संपन्नता के लिए आगे जाने वाला है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मान्यवर, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि रोजगार कैसे बढ़ता है। 9 साल पहले खादी ग्राम उद्योग में केवल 25-30 हजार करोड़ रुपए का व्यवसाय था। आज 1,30,000 करोड़ से अधिक ये स्वदेशी उत्पाद बढ़ चुका है। ये स्वदेशीकरण की जो प्रक्रिया है, अब भारत हथियारों को खरीदने वाला नहीं है, अब हथियारों की सप्लाई करने वाला भी देश बन गया है। अब अगर आप देखो तो भारत ने 2022-23 में 15,920 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। ये पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा आज भारतवर्ष का ये एक आर्थिक स्वावलंबन बढ़ा है। आज मोबाइल के क्षेत्र में भारत पूरे दुनिया का नंबर 2 का बना है। मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में आईटी मंत्रालय मेरे पास में था, और मैंने देखा कोरोना के समय चाइना से कंपनी भाग रही थी, वो वियतनाम नहीं जा रही थी, वो कोरिया नहीं जा रही थी, वो हिंदुस्तान में आ रही थी, और हिंदुस्तान में भी वो उत्तर प्रदेश में आ रही थी। आज 100 मोबाइल बनता है तो 65 मोबाइल आज उत्तर प्रदेश में बनता है, और उसके उपकरण भी उत्तर प्रदेश में बनते हैं। ये बदलते हुए भारत है। ये केवल मोदी योजना जो थी, मोदी जी का जो एक निष्पक्ष भाव से, समर्पण भाव से अर्थव्यवस्था को ठीक करने का जो चक्र था, उसके कारण हुआ है। आज उपभोग साल दर बढ़ रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष डिजिटल ट्रांजैक्शन की संख्या 61% और डिजिटल ट्रांजैक्शन के राशि में 47% की बढ़ोतरी हुई है। यही नया भारत है, ये नव भारत का उत्थान है। ये वो भारत नहीं है कि अब वो कटोरा लेके दूसरे को वहां भीख मांगने जाएगा। हम याची नहीं हैं, हम दाता बन गए हैं। वही भारत जब यहाँ पर एड्स होता था, मलेरिया होता था, यहाँ पर डेंगू होता था, तो वो देश दूसरों के सामने हाथ फैलाता था कि टीका दे दो, टीका दे दो। कई गुना दामों पर वो टीका, वो वैक्सीन मिला करती थी हिंदुस्तान को, और सालों बीत जाते थे, हजारों लाखों लोग मर जाते थे। यही आया, कोरोना आया, पूरा विश्व कराहा, 10 लाख लोगों की मृत्यु अमेरिका ऐसे जगह पे हुई, लेकिन भारत में 3 वैक्सीन बनी, और भारत ने 120 देशों को वैक्सीन सप्लाई करने का काम किया। ये बढ़ता हुआ देश है मान्यवर, ये बढ़ता हुआ देश है। और आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा, लोग अमेरिकन डॉलर और ये डॉलर इसका उल्लेख किया करते थे। आज G20 का सिरमौर बनके जब से भारत आया है, 18 देशों में रुपयों में ट्रांजैक्शन होने लगा है। भारत की मुद्रा बढ़ रही है, भारत का अस्तित्व बढ़ रहा है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। और आपके संज्ञान में मैं ये भी लाना चाहूंगा कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम है, अब कोई कहने वाला नहीं है कि 100 रुपए भेजते हैं, केवल 85 का गबन हो जाता है, 15 रुपए पहुंचते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट स्कीम से 100 रुपए भेजते हैं, तो 100 का 100 रुपया आज जनता के खाते में पहुंचता है। ये बदलता हुआ भारत है, और इस बदलते हुए भारत में मैं कह सकता हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न का भी एक डाटा आया है, और उस डाटा में ये पता चलता है कि विभिन्न आय वर्गों में टैक्स बेस बढ़ा है। हर वर्ग टैक्स फाइलिंग में कम से कम 3 गुना की वृद्धि हुई है। ये पारदर्शिता है मान्यवर, ये ईमानदारी है मान्यवर, ये स्वच्छता के साथ में काम करने की प्रवृत्ति का नाम है कि आज लोग स्वेच्छा से करों को देने के लिए आगे आए हैं। मान्यवर, मैं एक अनुरोध करूंगा कि आज पहली बार आपके इस विद्वत समूह में बोलने का शुभ अवसर आपने मुझे प्रदान किया है, और ये मेरा एक बेनिफिट का एक अपेक्षा है कि मुझे कुछ समय आप दें। पहली बार मैं बोल रहा हूं, तो इसलिए मैं अपेक्षा ये करूंगा कि थोड़ी समय आप मुझे देंगे। मेरा हाथ तो बंधे हाथ है, जो टाइम अलॉट किया हुआ है उसी के हिसाब से। नहीं, पहली बार मैं बोल रहा हूं, इसलिए बेनिफिट मुझे आपको 15 मिनट दे चुके हैं, और 1 मिनट आप बोल दीजिए, और 1 मिनट बोलिए।
मान्यवर, मैं आज ये कह सकता हूं कि आज जो है पूरा भारतवर्ष जिस तरीके से तेजी से विकसित हुआ है, इस भारतवर्ष में आज जो लोगों की भावना बढ़ी है, उन्होंने भारत को कहा है भारत के बारे में कि ये वर्ष भारत का नहीं है, ये सदी भारत की होने वाली है। ये सदी भारत की है। अर्थव्यवस्था के मामले में ये सुदृढ़ होगा, आत्मनिर्भर होगा, विश्व का नेतृत्व करने वाला होगा। आखिर में मैं सम्मानित विपक्ष से कहूंगा, मैंने बड़े सपने संजोकर मैं आया था मान्यवर कि विद्वज्जनों के समूह में बोलने का अवसर मैं पाऊंगा। विद्वज्जन हैं भी, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे फुटबॉल का मैच होता है तो आप देखते हैं कि रेफरी भी दौड़ता है और फुटबॉल के खिलाड़ी भी दौड़ते हैं, लेकिन दोनों के उसमें अंतर आता है। खिलाड़ी दौड़ता है गोल करने के लिए और रेफरी दौड़ता है वो गलती निकालने के लिए। मैंने देखा कि विपक्ष की भूमिका रेफरी की भूमिका बनी है, लेकिन रेफरी भी नकारात्मक भूमिका में अगर आ जाए तो निश्चित रूप में गलत तथ्यों का प्रस्तुतीकरण थे। ये सरकार का एक सकारात्मक दृष्टि है। मैं तो आह्वान करूंगा कि विपक्ष आगे बढ़कर आए और मोदी जी के सुशासन का एक सहभागी बने। ये आर्थिक रूप में सुदृढ़ इस भारत राष्ट्र की संप्रभुता जो पूरे विश्व का सिरमौर बनने की तरफ अग्रसरित है, उसमें उसकी सहभागिता सुनिश्चित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत धन्यवाद। बहुत ही जोशीला भाषण था आपका, धन्यवाद। नाउ श्रीमती जेबी माथेर हिशम। Thank you, sir. I thank Congress Party, Congress President Mallikarjun Kharge ji, CPP Chairperson Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji, and CPP leadership for giving me this opportunity to make my maiden speech here in this august house, especially on the important topic of the state of economy of our nation. Today, we are at the very end of the second term of BJP government. Sir, we have had nearly 10 years of BJP and Modi ji's rule. And our Honorable Prime Minister loves to compare Congress Party's 60 years of governance with his 10 years. Sir, in 60 years of Congress rule, led by Nehru ji to Manmohan Singh ji, our nation grew from the depth of a resource-starved economy which the British left us with at the time of independence to, in 2014, to become one of the 10th largest economies of the world and having built the foundation and springboard to grow further. With this strong foundation laid by Congress Party, our nation's economy has grown naturally since independence and after 2014 also. However, the phase of growth which is claimed by BJP government is also under clouds of suspicion as several indicators such as poverty, unemployment, health on the ground points to the contrary. More importantly, sir, at what cost has this growth claimed by BJP government been since BJP came to power? This is an important question for us to decipher the cost of this growth claimed by BJP government that our nation has had to pay since BJP government came to power. Sir, let me put forth few important points in this regard. First, our nation's debt, which stood at rupees 58.60 lakh crore, that is 52.20% of GDP, as on 31st March 2014, today is rupees 155.60 lakh crore, that is 57.10% of GDP, which means the debt on every Indian has increased by 2.53 times in the last 9+ years. The astronomical increase in the government's debt due to the Modinomics
means that each Indian today has a debt. I mean, India's per capita debt is today rupees 1,09,373 compared to rupees 43,124 in 2014. I respectfully, very respectfully ask our Prime Minister, what is your answer to adding 66,249 debt in 10 years of your government versus 43,124 in 60 years of Congress governments onto the shoulders of every Indian in your 10 years of heading the government? Second, our nation had an unemployment rate of 4.90% in the financial year 2013-14 when Congress party was in power. The unemployment rate this financial year is hovering around 7.90% plus. I respectfully, very respectfully ask our Prime Minister, what is your answer to the unemployment rate in our nation, almost doubling in your 10-year term of heading the government? Third, India's ranking in Global Hunger Index was 55 in 2014. Today, India's ranking in the Global Hunger Index is 111 out of the 125 countries with sufficient data to calculate Global Hunger Index scores. I respectfully, very respectfully ask our Prime Minister, what is your answer to the ranking of the Global Hunger Index of our nation, falling from 55 to 111 in your 10 years term of heading the government? Fourth, India's ranking in the World Economic Forum Annual Gender Gap Report was 114 in 2014. Today, India's ranking in the World Economic Forum Annual Gender Gap Report is 127. I respectfully, very respectfully ask our Prime Minister, what is your answer to the ranking of the World Economic Forum Annual Gender Gap Report of our nation, falling from 114 to 117 in your 10 years term of heading the government? Fifth, as per the World Inequality Report 2022, the average household wealth in India today is around 9,83,010. The bottom 50% of the nation can be seen to own almost nothing, with an average wealth of rupees 66,280 per household, or 6% of the total wealth of the nation. The middle class is relatively poor, with an average wealth of 7,23,930 per household, or 29.50% of the total wealth of the nation. The top 10% household owns 65% of the nation wealth, averaging to 63,54,070 per household. And the top 1% household owns 33% of the nation's wealth, averaging rupees 3,24,49,360. I respectfully ask, very respectfully ask our Prime Minister, what is your answer to the status of our nation as one of the most unequal countries in the world, with rising poverty and an affluent elite in your 10 years term of heading the government? Six, reducing fuel prices was very dear to our Prime Minister during the 2014 election campaign. Obviously, fuel prices hit at the root of an economy, and more so Indian economy. However, from 2014 to 2023, petrol price increased from rupees 72.26 per litre to 100 plus per litre, and diesel price from rupees 55.49 per litre to rupees 90 plus per litre between 2014 and 2023.
Similar is the case with kerosene and LPG too. This, despite petroleum crude prices being exorbitantly high during 2014 versus the subsidized petroleum crude which we are getting from Russia since the Ukraine war. I respectfully, very respectfully ask our Prime Minister, what is your answer to the huge increase in the prices of petrol, diesel, kerosene and LPG in your 10 years term of heading the government? Most importantly, sir, this is the most important. Indian rupees exchange rate with US dollar on 31st March 2014 was rupees 59.90. Rupees exchange rate is by self-admission a matter very close to our Prime Minister's heart. Yesterday, Indian rupees exchange rate with US dollar fell to rupees 83.41, the lowest ever in the history of our country, the lowest ever in the history of our country. I respectfully ask our Prime Minister, what is your answer to the Indian rupee depreciating to its lowest ever rate in your 10-year term of heading the government? 8, in 60 years, Congress government built world-class infrastructure from effectively nothing in 1947. Today, the government, under the national monetization pipeline, is selling these national assets valued at an estimated rupees 6 lakh crore in public sector, one by one, to private sector, enriching the favorite friends of BJP. I respectfully, very respectfully ask the Prime Minister, what is your answer to your government handing over national assets to your favorite friends in your 10 years term of heading the government? I quote our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru ji, who our present government attacks for all issues they cannot find solutions for and for mistakes they cannot defend. Pandit Jawaharlal Nehru ji said, facts are facts and will not disappear on account of your likes. I can go on and on and on about various factors and statistics connected to the dismal state of economy, from inflation to price rise to Manrega state to Skill India to Beti Bachao to Beti Padhao and so on and so forth. Of course, then my senior colleagues from the treasury benches will ask few pointed questions. First question they would ask would be, isn't the economy growing? And we have our answer is, serious questions remain on the realness of the growth claimed by BJP government, as the economy is exhibiting several contra indicators to the claims of the BJP government. Another question which they would ask would be, isn't FDI coming to India? And what we wish to say is that it is only natural that FDI come to India based on the open door liberalized regime initiated by the Congress government and the reality that MNCs cannot ignore a market as large as India, which the stage was set by the Congress party. Yet another question, the chest-thumping question post the recent election is, did we not win the recent state election? My treasury, from the senior colleagues from the treasury benches, almost all said that. And we wish to say you did win, but very few media has reported that more Indian citizens, Hamare Deshwasi, voted for Congress party than BJP. About 11 lakhs more Indians voted for Congress party, where BJP polled 4.81 crore votes, Congress party polled 4.92 crore votes. So, we, the Congress party, has been in the heart of India for 138 years, and we, the Congress party, is in the heart of India now despite you wishing us away, and we, the Congress party, will remain in the heart of India despite you wishing for Congress Mukt Bharat.
We will continue to oppose your wrongdoings and we will continue to expose your jumlas. Our India is great. We will work to make her even greater and the greatest in the world. Jai Hind. Thank you. Now, Sri Jawahar Sarkar, your time is 5 minutes. 5 minutes. Thank you, sir. Mr. Jethmalani before me has described lies as lies, big lies or white lies, and statistics. There is a fourth category of lie that I would like to bring to your attention. Mr. Sarkar, 1 second. Sir? Lie is not allowed in Okay. Parliament. Modified, sir. But to the extent that I would like my friends in the House on both sides to be aware of the realities. They keep talking about GDP growth. I'll not contest it because it's too complicated for many to understand. But what does GDP growth mean where I am concerned and you are concerned? And that is per capita GDP, per person GDP. The GDP of Ambani and the GDP of Adani does not matter to me. On per capita GDP, we just had the G20 meeting, and there we made a calculation that the US has $63,000 by way of their per capita GDP. Australia has 61,000. Indonesia has $4,000 plus per person. And India is the lowest, I repeat, the lowest among the group that has just $2,085 per GDP. So look at realism. Don't go in for bravado and bragging. When you talk of GDP, you must remember that you are taking the wealth of the upper 5% to inflate your figures. I'm just giving an example of how the upper crust has increased its wealth. The Ambani wealth was 1.6 lakh crores in 2014. I repeat, 1.6 lakh crores in 2014. It is 8.6 lakh crores today, 5 times more. Please show me an Indian who has grown his income in the last 9 years by 5 times before you make further statements. Adani's went up from 1.2 lakh crore. This is more phenomenal, but I will not get into the details. 1.2 lakh crores, they have gone up to 6 lakh crores plus, which is again another 5 times growth. No Indian has ever gone through this growth during the last 9 years. So do not take credit for enriching the oligarchs. Do not take credit for enriching and fattening the capitalist class and then say, we grew as a whole. Now look at your reality. World Bank's unemployment figure. I'm quoting for the World Bank because most Indians and foreigners have given up on Indian statistics. It is so punctuated with untruths. Now, the World Bank's 2022 unemployment rate shows that India is 23.2%. 23% unemployment. Compare it with Pakistan, a failed state. Pakistan is 11%. Less than half. Compare it with Bangladesh. Once upon a time, a basket case. Bangladesh is 12.9, 13%, and we are 23%. Sharam se doobna chahiye sabko. Bhutan is 14.9%. So where are the realities that you are drumming about GDP and becoming the 4th biggest and 3rd biggest in the world? Come to reality. The annual survey of industries is pointing out that we are steadily moving towards contractual labor. We are turning a rightful, respectful wage earner into a product that is at the mercy of the employer insofar as labor, timing and everything is concerned. I come to the labor participation ratio. The labor participation ratio, the labor minister was here but doesn't seem to be too unduly interested. The LFPR, the labor force participation ratio in India is one of the worst in the world. I repeat, at the cost of perjury, one of the worst in the world.
it was 42 to 45% was the rate of unemployment participation of labor. That means the vast majority were outside the network of labor. Mercifully, it has gone up to 50% now. 50%, but look at the other countries. Nepal, 83%. Nepal is able to provide a labor force participation of 83%. Again, Bangladesh, twice more. China, 60%. So what are we talking about? I am talking, this one is of course relates to the female labor participation ratio, where I repeat the figures. India is only 20.5%, Nepal 83%, Bangladesh 30+%, China 60%, and even Sri Lanka, that was on the verge of collapse, they have a female labor participation ratio of 1.5 times ours. When it comes to male and female combined, we have been between 42 and 45% through the entire regime of the last 9 years. I repeat, 42 to 45%, one of the lowest in the world. It has just gone up to 50%, just gone up. We look at gender gap. Jebi already mentioned about the gender gap. I repeat, compare the gender gap of India at 28% with double that in Bangladesh. She also mentioned about the rising debt. I repeat, debt is increasing at a phenomenal rate, and we are binding future generations, your grandsons, your sons, my sons and my grandsons, to a debt that we are not entitled to. Thank you. Thank you, Mr. Sarkar. To GDP ratio. Sir, one moment. It's a debt to GDP ratio has come to almost 90%. Sir, just one last word on defaulters, on banks, just one word. We were coming around to the banks, defaults of the banks, and there, yesterday's figure, that's why I'm giving it to the House, is 14.5 lakh crores have been written off. Dr. Karad is sitting there. He insists that writing off means nothing, but I insist that writing off is actually the legitimization of the destruction of your funds and my funds kept in the bank. The corporate sector, Sorry, sir, I repeat before the House, and I can give the speaker. calculation, thanks to the cooperation, thanks to the transparent reply given by Dr. Karad and others, the corporate sector alone has liquidated 10 lakh crores in 9 years. 10 lakh crores has gone down the drain to save the corporate sector, whereas Narega, there was a minister somewhere here who alone has destroyed one state. The poor of the state, curse him morning and evening, curse him morning and evening. That. Sir, thank you. Sir, don't deduct it from my time, sir. No, Mr. Wilson, please. It is not being recorded. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, a lot of discussions has happened in this August House, and my earlier speakers have said about how the economic conditions of our country has deteriorated. Sir, I wanted to point out few. When you came to power in the year 2014 and re-elected in 2019, what did you promise? Did you implement these promises? I remind you some of the promises which you have made. You said you will reduce the LPG price, petrol and diesel price. You promised 15 lakhs in each of person's bank account. What happened to the same? You promised that you will link 60 rivers at the cost of 5.5 lakh crores. What happened to it? You promised 5 trillion economy in the year 2019 to win over for the second time. What is the economy today? In 2016, you promised double farmer income by 2022. What happened to it? You promised cleaning of Ganga.
you promised inland waterway transport system, you promised 2 crore jobs, controlling price. These all been reduced to mere words. Sir, today more than 10 lakh vacancies have been registered on the National Carrier Service portal. What steps have you taken to fill these vacancies? There is a failure in Make in India, Startup India, demonetization, GST regime. These policies have weakened the institutions and the economy, and these are the shining examples as to how today's economy is. Sir, Tamil Nadu is the 10th largest state in India, is the second wealthiest state by GDP, and is the second largest contributor to India's GDP. For every 1 rupee that Tamil Nadu contributes to the center, it gets only 29 paisa. This demonstrates the immense contribution made by our state. But what is the return? Today, I will delve into the stepmotherly treatment which my state is facing from the hands of the union government. However, the present government has been helping their corporate friends to earn homogeneous profits and showering non-existent promises to the citizens of the country. Sir, I wanted to ask a question whether the per capita income of every Indian citizen has increased. Sir, the villages are worst affected. There is no agriculture, there is no industrial growth, there is no jobs. Sir, the daily wages, low-income workers are the sufferers because of the price rise in the essential commodities. And sir, they lead a very miserable life. You have sold all the public sector undertakings which is available in India. The business owners have also been adversely affected by the rise in prices of the essential commodities, as they have been unable to cope up with the rising prices without having to raise the prices of their finished goods and making it difficult for them to survive in this competitive field. Sir, first of all, sir, I wanted to place how our state is meeting a stepmotherly treatment. Sir, there are 17 projects which were floated in Tamil Nadu by the National Highways Authority of India. About 11 projects are pending for more than 3 years because of non-allocation of necessary funds. Sir, the Ministry of Statistics and Programs, they themselves have uploaded in their website on 12/9/2023 that 42 projects in Tamil Nadu, that too important projects, including nuclear power projects, are delayed. Sir, my friend was talking about the corona and how it was dealt with. In Tamil Nadu, we have a vaccine park at Chengalpattu district. It was established at a cost of 2,000 crores. Tamil Nadu government has given vast lands. Sir, right from the day when that vaccine park came into existence and so much of investment is being made, not even one vial is being manufactured. Because of, sir, they wanted to promote some persons, private players in India, and they have kept these industries closed for many years. In spite of the Tamil Nadu government, our Chief Minister saying, please hand over this park to us. We will manufacture the vaccines. We will supply to the entire India during COVID time. The center showed their deaf ears. They refused to budge. Sir, insofar as the railway projects are concerned, sir, we have a bodybuilding, sir, a factory, that is integral coach factory in Avadi. Sir, if you see the railways, many of the units, sir, have been manufactured from this integral coach factory. But today, sir, saddest state is they are going to the foreign country and purchasing
these coaches, leaving behind the factory which is already available in Tamil Nadu. Sir, in Chennai Metro Rail projects, sir, phase 2 project, sir, is pending with the Cabinet Committee of Economic Affairs, and the clearances is not being given for the last 2 years in spite of repeated demands. Sir, so far as the Food Corporation of India, the subsidy of 6,500 crores for the PDS rice is not being distributed to Tamil Nadu. Likewise, sir, CMR subsidy of rupees 5,704.09 crores has not been disbursed, sir, to Tamil Nadu. Sir, in CMRL, 50-50 equity shares requested similar to phase 1 is pending with Government of India for cabinet approval. Sir, so far as the Election Commission expenses, sir, 213 crores are pending. Sir, in so far as the Home Guards is concerned, sir, 77.76 crores are pending. Sir, in Tamil Nadu, we have the highest toll plaza, sir. About 55 toll plazas are located, sir. Each and every nook and corner. Sir, as per the Act, you should have only one toll plaza with every 60 kilometers. You can see about 16 excess toll plazas, sir, in Tamil Nadu. All the money that is collected, sir, in these toll plazas are not being utilized, sir, for road infrastructure in Tamil Nadu. And it is drained off. And, sir, the saddest part is the toll fee is increased every year and without any application of mine. Sir, one stretch, our Chief Minister even called the Highway Minister and said that this stretch requires an immediate attention. Sir, sad to say that 6 months have gone, that stretch is yet to be repaired, sir. That is in the Vellore stretch. Sir, so far as the sugarcane growers is concerned, sir, they are selling their yield, sir, to the mill owners, and no price has been paid to them, sir, for last 5 years. And, sir, these mill owners, sir, they are getting protection from the NCLAT, and that is how they are denying the payments. Sir, so far as the spinning mills are concerned, sir, they are suffering heavy losses because of the increase in the price of the raw materials, high inflation, and slowdown in the global economy. Sir, in fact, our Chief Minister has written a letter requesting Union Government to provide financial support for MSME in textiles sector, restructure the existing loans under emergency credit line guarantee schemes, and disbursement of fresh loans under ECLGS by reducing regular interest to offset losses. Sir, in fact, we faced a cyclone recently, and 4 days we had a heavy rainfall. And even today, sir, we are receiving heavy rainfall. Sir, in fact, our Chief Minister, sir, has demanded a sum of rupees 5,000 crores as an interim financial assistance. I only request, sir, my good friends, to see that the said financial assistance is sanctioned and disbursed immediately, sir. Sir, one thing I have to bring to your attention, sir. Sir, you are also a learned member of our fraternity. Sir, they brought this Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Sir, this law is legislated for industrial friends who wants to acquire industry, sir. Sir, under the garb of legal procedure, sir, they are liquidating many industries. Sir, the principles such as waterfall mechanism, clean slate theory, haircut, written off, wipe off the debts, these are all, sir, are the nomenclature, or, sir, they use it a term in order to wipe away the industries for a song. Sir, the regime is nothing but a way to buy expensive assets in discounted rates as they are purchasing through public money, and the public money has no real value in this nation, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Now, Sri Vijaypal Singh ji. Vijaypal Singh Tomar ji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सबसे पहले अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री आपका समय 5 मिनट अलॉट किया गया है। 5 मिनट अलॉट किया गया है आपका समय। 5 मिनट? हाँ। तो मेरे हाथ में नहीं है। मुझे तो ज़्यादा बताया था। चलिए,
मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में विषम परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अपनी जीडीपी 7.6 है, जबकि चाइना की भी 4.9 रही है। और इसका कारण क्या है? कारण यह है कि प्रधानमंत्री जब आए, उन्होंने पार्लियामेंट की चौखट पर सिर नवा के 14 में ये कहा था, मेरी सरकार गरीब, वंचित, किसान और गांव को समर्पित है। तो कहा, जो संकल्प किया उस पर सिद्धि तक पहुंचाने का काम भी किया। महोदय, चौधरी चरण सिंह के साथ मैंने काम किया था। वो कहा करते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहान, गांव और गरीब के से होकर गुजरता है। जब विश्व का सबसे आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र था, तब देश के 80% लोग खेती में जुड़े हुए थे, गांव में रहते थे 82% लोग। आज मैं पूछना चाहता हूं 50 साल तक राज करने वालों से कि वो घट के गांव में रहने वालों की संख्या 62% और खेत में काम करने वालों की 55% क्यों रही? क्योंकि उनको गांव में शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सभी सहूलियतें नहीं उपलब्ध हुई। प्रति व्यक्ति गांव पर 1/3 भी खर्च नहीं हुआ शहर के मुकाबले। इसलिए किसान की हालत मजदूर से नीचे चली गई और हालत ये हुई कि किसान खेती छोड़ने लगे। महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता पर रहा कि हम किसान को, महिलाओं को, गांव को, गरीब को चिंता करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा हर किसी के पास मकान हो, मकान में शौचालय हो और उस मकान में गैस का कनेक्शन हो और बिजली का कनेक्शन हो और रहने वाला गरीब, उसका बच्चा बीमार है, मर ना जाए, उस बीमारी के लिए आयुष्मान भारत योजना का कार्ड हो। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण करीब 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास आए, जिसमें 68.9% महिलाओं के नाम है। इसी तरह से वहाँ 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मिले, 11.5 करोड़ शौचालय बने। मुझे मालूम है, कहा करते थे, शाम का टाइम होता था, चौधरी साहब हर भाषण में कहते थे कि जब गाड़ी जाती है महिलाएं खड़ी हो जाती सड़कों पर। क्यों? इसलिए कि रोशनी पड़ती है, उससे बचने के लिए। उससे इसकी किसी ने सोचा नहीं था, इस कार्य को करने का काम किया और करीब 12 करोड़ को, 60 करोड़ की जनता को कवर करते हैं, 12 करोड़ को आयुष्मान भारत के कार्ड देने का काम किया गया। महिलाओं को जहां मुद्रा बैंक से ऋण मिला है, वो भी करीब 58% से ऊपर महिलाओं को दिया गया है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की पहले एक प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा था हम तो 100 रुपये भेजते हैं, नीचे 15 पहुंचते हैं, 85 बीच में खाए जाते हैं। तो 2 ही काम प्रधानमंत्री जी ने किए। एक तो यह किया कि बीच की दलाली समाप्त, 100 भेजेंगे, 100 के 100 नीचे जाएंगे। और दूसरा काम यह किया कि जो गांव, गरीब और किसान को संबंधित थी, उसके लिए वरीयता रखी। और इसीलिए जब रोजगार की बात आती है तो रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी से नहीं है, रोजगार का मतलब अन्य क्षेत्रों से भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया है माननीय मोदी जी ने? आपने देखा कि जब सरकार 50-60 साल तक राज करने वाले बताएं कि देश भर में 14 से पहले केवल 723 विश्वविद्यालय थे, आज कितने हैं? 1113। देश भर में 5298 डिग्री कॉलेज थे, आज कितने हैं? इन 9 साल में बढ़ के 43,796। 8 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट थे, आज 23 हैं। 9 वर्ष में 15 बढ़े, 50-60 वर्ष में केवल 8 बने। 7 नए IIT, 7 नए IIM, नए 225 मेडिकल कॉलेज और 442 स्टार्टअप थे, जो आज 1 लाख से ऊपर हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भूतल परिवहन मंत्रालय है, इसका बजट आपके टाइम में कितना था? लास्ट ईयर का देखते हैं, लगभग 34,000 करोड़। और इसी साल का, पिछले साल का बजट भूतल परिवहन मंत्रालय का 2,70,435 करोड़। और प्रतिदिन इतनी बड़ी संख्या में आपके यहाँ 12 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी, अब 37 किलोमीटर हाईएस्ट रहा है। वैसे एवरेज भी 29 किलोमीटर पर डे का है।
दुनिया का सेकंड नेटवर्क है। ये काम नहीं हो रहा, इतना पैसा है, रोजगार इसमें भी तो रोजगार होता है। इसी तरह मेट्रो रेल का है, 2014 तक 5 शहरों में 229 किलोमीटर तो 13 किलोमीटर का हुआ था और इन 9 वर्षों में 58,424 किलोमीटर का हो गया। किसानों का बजट भी 6 गुनी वृद्धि की है। आपका 9-10 का बजट मैंने देखा, किसानों का कृषि का 12,000 करोड़ यूपीए के टाइम का, और 5 साल का लगाओ तो 1,23,000 करोड़, हमारा 1,25,000 करोड़ का पिछले साल का बजट था। तभी तो किसानों को हम उनकी सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। 2,54,000 करोड़ की सब्सिडी दी है। अभी कल माननीय मोदी जी ने भी कहा, एक डीएपी का बैग, मैं भी गांव से ही आता हूं, किसान से, एक डीएपी के बैग की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 4,070। हमारे किसान को कितने का मिल रहा है? हमारे किसान को मिल रहा है 1,370 का। एक यूरिया के बैग की कीमत है 2,450, हमारे किसान को मिल रहा है 266 का। और ऊपर का कौन दे रहा है? मोदी जी की सरकार दे रही है। एनपी के एमओपी जो 3200-2700 के हैं, वो 1,300 और 1,700 के मिल रहे हैं। तो इस तरह किसान को सब्सिडी देकर उसकी लागत नहीं बढ़े, एमएसपी 1.5 गुना करने का काम किया। 6 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आ गई थी, आपने क्यों नहीं किया? हमारी सरकार ने आने के बाद स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की, 6 गुना किया। इस साल भी धान का 150 से बढ़ा के 400 रुपये मूंग पे प्रति क्विंटल बढ़े हैं। एमएसपी बढ़ाने का काम किया, खरीदारी करने का काम किया। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे किसानों के जो इंटरनेशनल मार्केट में ये बचत हुई है, 2700 रुपये प्रति बैग की हुई है। यूरिया पर करीब 2450 रुपये प्रति बैग की हुई है। और साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हमारे रक्षा के क्षेत्र में अभी दिनेश जी ने बताया, माननीय दिनेश जी ने, 16,000 करोड़ के यंत्र हम निर्यात कर रहे हैं। पहले आयात किया करते थे, 4100 ऐसे आइटम्स हैं जो उसका आयात बंद हो गया है, यही निर्मित होने लगे हैं, सर्विस को बढ़ावा देने के लगे हैं। हमारे जो 50 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खोले गए हैं, 80 करोड़ से अधिक मुफ्त राशन दिया गया है। जब दुनिया देख रही थी कोरोना में कि कोरोना में लोग मर रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री को यूएनओ में कहा था कि यूरोप तो संपन्न देश है, भारत का क्या होगा? मोदी जी ने जब बुला करके अपने डॉक्टर्स को, अपने यहाँ के वैज्ञानिकों को, फार्मा कंपनियों को बुलाया और कहा सबसे पहला आनी चाहिए, 3 वैक्सीन पहले आई और अपने 222 डोज लगाई देश में और 110 देशों को भेजने का काम किया। और आज दुनिया को हम देने वाले हैं, आज लेने वाले नहीं हैं। भारत बदला है, ये मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ भारत है। आज हर घर नल से जल पहुंचाने की बात आई। माननीय प्रोफेसर साहब ने कहा, हाँ एक मिनट, प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं गांव में जाता हूं, मैं भी गांव में जाता हूं, मुझे तो कोई घर ऐसा नहीं मिलता। मैंने कहा अब तो इस जाड़े का सीजन आ गया, मक्का की रोटी बनाओ और साग, चूल्हा किसी का नहीं है। आज हर घर में गैस है और चल रही है, पाइपलाइन बिछी हुई है हर गांव में, वो लग गई हैं, पानी जा रहा है। करीब 8 पॉइंट इतने करोड़ हैं, 8.5 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच चुका है। मैं ये भी कहना चाहता हूं 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस के कनेक्शन चले गए हैं। और जो कल भी बात आई थी, गरीब महिलाओं को किस तरह से मदद करने का काम किया, 27 करोड़ को सैनिटरी पैड समय हमारे, धन्यवाद, हमारे करीब 10,000 जनऔषधि केंद्र थे, अब 20,024 तक खुलने जा रहे हैं। सस्ती दवा गरीब को उपलब्ध हो, कोई गरीब का बच्चा मर ना जाए, इसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया है। तेज गति से आगे बढ़ रहा है, 27 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसे निश्चित रूप से सिद्धि तक पहुंचाने का काम करेंगे और 47 तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री राघव चड्ढा जी। माइक। अच्छे दिन जनता पार्टी सरकार में आई, अच्छा दिन तो आ गया, और 2014 के बाद आज तक अच्छे दिन का शायद ही को कि हम एक न्यू इंडिया बनाएंगे और 2022 जब भारत देगा, न्यू इंडिया आएगा और हम ये बड़ी चीजें करेंगे। अब 24 का चुनाव आ गया, कम से कम 24 के चुनाव से पहले जो न्यू इंडिया का वायदा था और 25 बड़े वादे
जो इन्होंने किए थे कि हम 2022 तक ये हासिल कर लेंगे, उसका आकलन होना चाहिए। आज मैं वादा बनाम वास्तविकता की, वादा बनाम सच्चाई की पूरी सूची लेकर आया हूं और आपके सामने रखना चाहूं। पहला वादा था कि 2022 तक भारत देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। ये नहीं बनेगा। अगर सरकार अपनी उंगली भी ना उठाए तो भी हम बन जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि बनेंगे कब, 2027 में, 28 में या 30 में। लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरा वादा किया कि हर भारतीय के पास एक बैंक अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पेंशन और रिटायरमेंट प्लानिंग सेवाएं होंगी 2022 तक। सरकार को में मात्र 3 लोग ऐसे हैं, मात्र 3 लोग जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस है, और हर 100 लोगों में मात्र एक आदमी, एक औरत ऐसी है जिसके पास अतिरिक्त इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस छोड़कर है। यह सच्चाई है। जनधन योजना में अकाउंट तो खुलवा लिए, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, कभी मुड़कर उन अकाउंट्स की ओर भी देखा कि कितने खाते खाली हैं, कितने अकाउंट डोरमेंट हो गए। तीसरा वादा जो इन लोगों ने किया था वो था कि किसानों की आय को 2022 तक दुगना कर देंगे। अब इस वादे की बात भी नहीं करते मैम। और आय तो छोड़िए, किसान का कर्जा दुगना करने का काम पिछले 5 सालों में सरकार ने किया। पिछले 18 क्वार्टर्स की सबसे लोएस्ट ग्रोथ एग्रीकल्चरल सेक्टर में इस क्वार्टर में देखी जा रही है, जो चौंका देने वाले आंकड़े हैं। चौथा वादा जो किया था वो था कि 2022 तक हर भारतीय के पास अपना घर होगा। सच्चाई आप जानती हैं कितने भारतीयों के पास अपना घर है। घर तो आम आदमी का घर छोड़िए, सांसदों तक का घर छीना जा रहा है यहां पे, ये सच्चाई है। पांचवा वादा किया था हर भारतीय के पास 2022 तक शौचालय होगा, यानी कि एक्सेस टू टॉयलेट होगा। अगर ये वादा पूरा हो गया होता तो ओपन डेफिकेशन भारत में बढ़ता नहीं, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट ये नहीं बताता कि लगभग 20% इंडियन हाउसहोल्ड्स आज ऐसे हैं जो बिना टॉयलेट फैसिलिटी के जी रहे हैं, और जहां जहां एक कमरे का नाम के वास्ते टॉयलेट बना भी दिया, वहां पानी का सप्लाई नहीं पहुंचा, सिर्फ इमारत खड़ी हो गई। छठा वादा किया कि 2022 तक हर भारतीय के पास 24 घंटे 7 दिन बिजली होगी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को छोड़कर किसी एक सूबे में भी अगर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आती है भारत देश में, तो मैं चुनौती देता हूं सरकार के मंत्री मुझे बताएं आज 24/7 इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के गांव जाने की आवश्यकता नहीं है मैम। नोएडा चले जाइए और बताइए, अगर नोएडा में भी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देने का काम 2022 तक इन लोगों ने पूरा किया हो। आज भी घंटों घंटों के पावर कट लग रहे हैं। सातवां वादा, एवरी हाउसहोल्ड विल हैव एलपीजी सिलेंडर। 2022 तक हर घर के पास एलपीजी सिलेंडर होगा। वास्तविकता यह है कि एलपीजी के प्राइस बढ़ गए, सब्सिडी बंद हो गई, और उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी थे आज वो एक बार सिलेंडर रिफिल कराने में भी उनकी नानी याद आ जाती है। जेब पे इतनी डकैती डाली जा रही है। आठवां वादा था एवरी इंडियन इन रूरल एरियाज विल हैव अ वाटर कनेक्शन बाय 2022। मैडम जस्ट लेट मी कंप्लीट। सांसद जी, डकैती शब्द सुबह, अच्छा मैं उसको विड्रॉ करता हूं। आठवां, डकैती शब्द को विड्रॉ करता हूं। आठवां वादा, हर भारतीय के पास जो ग्रामीण इलाकों में रहता है 2022 तक अपना पानी का कनेक्शन होगा। सरकार के खुद के मंत्री ने अप्रैल 2023 में राज्यसभा के पटल पर जवाब देते हुए बताया कि 40% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों, रूरल हाउसहोल्ड्स के पास आज भी टैप वाटर सप्लाई नहीं आता, नलके में पानी नहीं आता, ना नलका है ना पानी है। आगे चलता हूं। 10वां वादा सरकार ने किया था, 9वां वादा सरकार ने किया था कि 2022 तक भारत देश मैल न्यूट्रिशन मुक्त हो जाएगा, यानी कि कुपोषण भारत देश से 2022 तक खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सच्चाई यह है कि आज चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन में भारत देश दुनिया के मुकाबले सबसे खराब स्थिति में खड़ा हुआ है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताती है कि 121 देशों में भारत की रैंकिंग 107, 108 पे खड़ी हुई है। यह स्थिति है। 74% भारत देश की आबादी हेल्दी फूड अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी कि लगभग 100 करोड़ के आसपास लोगों के पास इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन पहुंच रहा है। यह सच्चाई है। 10वां वादा किया कि हर ग्राम पंचायत के पास अपना फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होगा 2022 आते आते। सच्चाई यह है कि आज तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की जो स्थिति रूरल एरियाज में है उसका एक जायजा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले ले तो पता लग जाएगा। लगभग
65% आबादी हमारे देश की गांव में बसती है मैम, लेकिन वहां ब्रॉडबैंड इंटरनेट अभी तक ग्राम पंचायतों के पास नहीं पहुंचा। 11वां वादा किया था कि 100% डिजिटल लिटरेसी 2022 तक आ जाएगी। सच्चाई यह है कि एनएसएसओ का डेटा आपको बताएगा कि अभी आप अपना आधा लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाए हैं। 12वां और बड़ा दिलचस्प वादा, 2022 तक बुलेट ट्रेन दौड़ेगी हिंदुस्तान की सड़कों पे। अब तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाजपा का नारा है बुलेट ट्रेन में बिठाएंगे, देश की सैर कराएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आगे चलता हूं। 13th प्रॉमिस जो भारत सरकार ने किया था अपनी रिपोर्ट के माध्यम से, वो ये था कि 2022 तक रेल दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या को हम 0 कर देंगे, यानी कि एक भी मौत नहीं होगी। इसी साल हमने वो त्रासदियां देखी उड़ीसा में, बालासोर में, आंध्र प्रदेश में, जिसने हमारी आंखें खोल के रख दी, हमारी आत्मा को झंझोड़ दिया, जो हालात रेल दुर्घटना से हमारे सामने आए। 14वां वादा किया था कि ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल डबल बाय 2022, लगभग 14% के आसपास हम लाके खड़ा करेंगे। 14% तो छोड़िए, पिछले 2 वित्तीय वर्षों से 5 या 6% पे हम मंडरा रहे हैं। आरबीआई का अपना खुद का टारगेट 6.5% पर है। 15वां वादा कि 20 मेडिकल फ्री जोन्स बनाएंगे टू अट्रैक्ट मेडिकल टूरिज्म, सिर्फ वादा था, कोई डिलीवरी नहीं। 16वां वादा किया 100 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेंगी अंडर डेवलप्ड इलाके में, सिर्फ वादा था, कोई काम नहीं किया। 17वां वादा था 10 नए इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट बनेंगे जहां पे एंटरप्रेन्योर्स, डिजाइनर्स लिव वर्क एंड प्ले की नीति के तहत काम कर पाएंगे, सिर्फ वादा था, कोई काम नहीं किया। 18वां वादा मैनुअल स्कैवेंजिंग से होने वाली मौतों को हम 0 पर लाकर खड़ा कर देंगे। 2022 तक मैनुअल स्कैवेंजिंग विल बी इरेडिकेटेड। सच्चाई यह है कि मंत्री जी खुद अपने जवाब में सदन में बताते हैं कि पिछले 5 सालों में 339 डेथ्स सेप्टिक टैंक्स में हुई और 2022 अकेले वर्ष में 66 रिपोर्टेड डेथ्स मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से हुई। न जाने कितनी अनरिपोर्टेड डेथ्स, उनका तो आंकड़ा ही नहीं है। 19वां वादा कि प्रपोर्शन ऑफ फॉर्मली स्किल्ड लेबर टू वर्कफोर्स हम बढ़ाकर 15% कर देंगे। सच्चाई यह है कि 2023 खत्म होने को आ रहा है, 15% तो छोड़िए फॉर्मली स्किल्ड लेबर, हम आज 5% पे 5% पे मंडरा रहे हैं, जहां यूके में यह आंकड़ा 68%, जर्मनी में 75%, यूएस में 52%, जापान में 80% है। भारत देश 5% के आसपास खड़ा हुआ है। 20वां वादा किया था कि नई नौकरियां देंगे, 3 मिलियन जॉब्स इन हेल्थ केयर, 40 मिलियन जॉब्स इन टूरिज्म, 5 मिलियन जॉब्स इन माइंस एंड मिनरल्स। नौकरी की तो जितनी बात करी जाए उतनी कम है, मिलने की बजाय नौकरियां जा रही हैं। 21वां वादा सिंगल प्लास्टिक यूज बैन हो जाएगा 2022 तक। नोटिफिकेशन लाकर बैन तो कर दिया, लागू कितना हुआ ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। 14 मिलियन टन प्लास्टिक इस साल भी हिंदुस्तान में यूज किया गया। 22वां वादा, बस समाप्त कर रहा हूं, इंपोर्ट जो है क्रूड ऑयल के और गैस के, वो 10% से घटा दिए जाएंगे 2022 आते आते। 10% तो छोड़िए, क्रूड ऑयल की जो हमारा बिल है, इंपोर्ट बिल, उसके चलते वो डबल हो गया। गैस, क्रूड, सबकी इंपोर्ट्स भारत देश में बढ़ते जा रहे हैं। 23rd वादा, 23वां वादा कि नेशनल हाईवे की लेंथ को बढ़ाकर हम 2 लाख किलोमीटर कर देंगे। सच्चाई यह है कि 2 लाख किलोमीटर तो छोड़िए, 30 नवंबर 2022 को गवर्नमेंट का अपना आंकड़ा बताता है कि हम लगभग 1,44,000 किलोमीटर के आसपास खड़े हैं, यानी कि इस वादे फेल हो गए। 24वां वादा बड़ा दिलचस्प है, सुनिएगा आप, नो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड PM 2.5 लेवल्स विल कम डाउन बाय 50 बाय 2022, यानी कि 50 से नीचे आ जाएगा PM 2.5 का लेवल। सच्चाई यह है कि आज भी पूरा उत्तर भारत गैस चेंबर बना हुआ है, केवल दिल्ली चंडीगढ़ नहीं, लखनऊ वाराणसी में भी वायु प्रदूषण है। सरकार को इसका समाधान ढूंढना चाहिए। और 25वां और आखिरी वादा किया था कि वी विल अचीव a doctor population ratio of at least 1:1400 and a nurse population ratio of at least 1:1500। ये वादा पूरा करने में भी फेल रही। सच्चाई ये है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो या CHCs हो, इन सब में डॉक्टर्स, नर्सेज की शॉर्टेज है। बढ़ाना तो दूर, जो ज्यादा जो एग्जिस्टिंग सेंटर्स हैं उसमें भी आज फोर्स नहीं। और आखिरी में, अंत में बस इतना कहूंगा कि 25 वादे सरकार ने करे थे कि ये बड़े वादे हम 2022 तक पूरे करेंगे। इन 25 में से एक वादा भी पूरा नहीं किया। अब क्या मुंह दिखाकर ये 2024 में लोगों से वोट डालने जाएंगे? कोई साधारण आदमी अगर वादा कर वादा खिलाफी करता है तो उस पे कार्रवाई होती है, उस पे पर्चा दर्ज हो जाता है, 420 की धाराएं लग जाती हैं। जब सरकार वादा कर मुकरती है तो जनता की अदालत उसका फैसला करेगी। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।
माननीय श्री अमर पटनायक जी। Thank you, Honorable Deputy Chairman, ma'am. Ma'am, I would like to, first of all, congratulate the government and the Honorable Finance Minister, she's not here, for the kind of direction that has come to the economy, which is reflected in the last quarterly result of the GDP. 7.6% in the July-September quarter of financial year 24, beating all expectations by all the rating agencies. I'm also happy by the fact that under the leadership of our Chief Minister Naveen Patnaik, our state also has been beating the national growth rate consistently for the last 10 years. The trajectory of growth that has been set in motion by the government during the last 5 or 6 budget, particular emphasis on capital expenditure, I think is in the right direction. The policy push has been reflected in the consistent economic growth. Now I would like to draw attention, ma'am, to a few of the global economies, how they have fared during this period, because that would set the context for how Indian economy has performed during this period. 2022 GDP growth figures, India 7.2%, IMF, I'm quoting the IMF figures, China 3%, UK 4.1%, US 2.1%, Germany 1.8%, IMF's projected GDP growth rate for India 2023 is 6.3%. If we go by what has happened today, I think we are going in the right direction, would probably be beating that particular projection. Now, I have heard from the opposition benches here, from many of my colleagues have said about a number of things that India should have been doing, India should have been achieving. But for all that, we need the GDP to grow, and that is what is happening. So I think the thrust of this current debate that we are having under this short duration discussion is where are we as far as the Indian economy is concerned. I think we are in good wicket, on a strong wicket. But having said so, I would like to also say, I would like to state that if we look into the granular details of what has spurred this growth and what has to be done further, I think it is important, because what I'm going to say now is that we are in a very nice position to bring in structural changes in the economy. We are going in that direction. Over-reliance on private consumption expenditure to shift towards an investment-oriented growth strategy is, I think, a step in the right direction. But for that, the policy push has to be stable and consistent. Now, let me look at the real gross value added. Real gross value added, because that indicates the actual value addition that has taken place in the economy. Now, that is the latest figures I am taking. Here there are some concerns, and therefore my suggestion to the Treasury benches would be just to somehow ensure that these fault lines are addressed. Agriculture, forestry and fishing. If we look at the figures from 2019 onwards, ma'am, it has consistently decreased. Agriculture, forestry, fishing, it has consistently declined. It has come to 1.22% in 2023. Now, this is a cause of worry, because food security, whatever said and done, is, I think, one of the most important requirements of a growing economy and a growing population. Agriculture, allied sectors has seen this steady decline from 4.3%. It grew during the pandemic years, which made us survive the pandemic, to 1.2%. And what it calls for is investment in agriculture, and therefore the government came with the Agriculture Infrastructure Fund. However, against a projection of 1 lakh crore spending in agriculture sector under this particular scheme, only 26,000 crores have been sanctioned and 21,000 has been spent. I think a lot is to be done in the rural sector. The Swaminathan Committee report, which has been talked about for increasing the income of the farmers, fixing the minimum support price, is yet to be done based on the C2, that is the composite price, which has been the consistent demand of our party, Biju Janata Dal, our Chief Minister Naveen Patnaik, and we have been saying it in all fora. Now that has not happened. That has to happen.
the deceleration in the agricultural sector translates into some stress in the rural sector. And this has to be recognized because rural economy has to go up in case we have to maintain this growth momentum, and the structural shift remains where it is and it doesn't frequently change its position year on year. Now, if we come to the services, the growth rate in the services has come down to 5.8%, and this is a deceleration. Previously, our economy was heavily dependent on services. But if the services come down, and particularly trade, hotels, transport, communication, broadcasting services, it has just grown by 4%. Now, these are the sectors which provide jobs. Now, unless we can grow in these sectors by consistent policy efforts, by budgetary allocation, by increasing private investment in these sectors, jobs will not be created, and the unemployment problem will consistently haunt us. And therefore, I think this is something which the government has to think about. The other point that I wanted to talk about is on the social sector, ma'am. Ma'am, in the social sector, the last economic survey said that out-of-pocket expenses are 48%. Now, this has to decrease, and therefore, expenditure on health has to increase. Now, this has not happened. This has to be consistently made, given the fact that our economy is growing at a healthy rate. So, madam, the growth of the economy, Indian economy, depends on the growth of the state economies. Now, the growth of the state economies can increase only when the central allocation by way of devolution of funds increases. What we have seen is that this has consistently decreased and currently at about 30%, which I think is not doing well, good to the economic situation in the states. We have to ensure that the regional imbalance that exists between several states in terms of attracting foreign investment because of the infrastructure which is already there. Now, that has to be addressed by either declaring special focus state to some of the states like Orissa or Andhra Pradesh, or making an infra push in these sectors which will actually lift them to a level in which foreign direct investment can also come into these sectors. Ma'am, there is a point that I wanted to make relating to tax to GDP ratio. Tax to GDP ratio had shown a good trend recently. The GST collection has increased, which basically means that formalization of the economy is taking place. But at the same time, 90% of the people are still employed in informal economy. Now, this is a contradiction which I think the government has to address at some point of time, because unless this is addressed, a structural problem may still remain in the economy even as we are growing in GDP terms. Ma'am, the tax to GDP ratio at 11.1% is at par with 2020-23 revised estimates, but it is less than the average of many emerging economies, including the OECD economies, where it is 33%. So we have to bring this structural change in our economy in terms of revenue collection, tax as a percentage of GDP. The another point, the last point, ma'am, I want to make is relating to private sector investment. The investment that has already happened, which is spurring this economic growth, which our economic analysts are also saying is basically backed by government's emphasis on capital expenditure, which is welcome. But this capital expenditure has to be backed by private sector investment from the private sector in the economy. The household sector's investment in the economy is already happening, but the private sector's investment is not happening. This is a cause for worry, and for that, I think several more policy push have to be made, because this would be another source in which jobs can be created, employment opportunities can be created, and unemployment can be addressed. Lastly, madam, there was a talk about female labor force participation. Ma'am, last point, female labor force participation. There was a discussion as to the stark reality of our female labor force participation being very low compared to other countries. But ma'am, just a point that actually there is an increase in female labor force participation thanks to the government by 37% in 2023. Several such measures will have to be taken to bring it to a level in which we can be comparable to other countries. So overall, in short, ma'am, I would like to say that economy is in good hands, but there are fault lines. These fault lines have to be addressed. And if that happens, then the country's growth trajectory will be more inclusive,
more sustainable, and it will benefit all sections of society. Thank you so much, ma'am. Thank you. Manya Sansad, Shri Ayodhya Rami Reddy Alaji. At the outset, I would like to thank the Honorable Vice Chairman, ma'am, for giving me the opportunity to speak on the economic situation prevailing in the country. Ma'am, I would like to emphatically state that 20th century belonged to China, but 21st century belongs to India. India has emerged as one of the fastest growing economies in the world despite challenges in the global environment. Though challenges include the rise in geopolitical tensions, disruptions of supply chains, and a global tightening of monetary policies and inflationary pressures. The economy is projected to grow at 6.5 to 7% rate in the fiscal year 2024, but the country's economy expanded 7.6% in July-September quarter, surpassing the projections of 6.5% growth estimate by RBI. India's growth rate is almost twice the average of emerging market economies. What is really working for us? India's economic progression is being powered by the government's emphasis on public infrastructure investment, capital expenditure, and increased bank rate growth. Government spending has been up by 12.4%. Manufacturing and construction sectors have also seen growth with the rise in demand for new projects. The biggest boost in the growth came from services sector, which grew at 10.3% in the first quarter, up from 6.9% in the previous quarter. This can be attributed to strong growth in the financial, agri, real estate, and other services sectors as well. As an emerging economy, India has been able to control its inflation while many advanced economies are dealing with severe inflation and have not yet been able to stabilize these economies. According to IMF estimates, the Indian economy will emerge as the world's third largest economy by 2027, surpassing Japan and Germany's GDP as we are going to cross $5 trillion. Madam, India's digital infrastructure is the best in the world. Our digital infrastructure development has helped in faster delivery of financial services and helped make a positive impact on financial inclusion. According to the G20 policy document prepared by the World Bank, India has achieved a remarkable 80% financial inclusion rate in just 6 years, a feat that would have taken nearly 5 decades without a digital public infrastructure approach. Andhra Pradesh government, under the able and dynamic leadership of Mr. Jagan Mohan Reddy, has used this digital infrastructure to transform the state to next level. Madam, I would like to say what are all the developmental statistics that Andhra Pradesh has given in the economic situation of our country. Madam, AP records 50% GSDP growth in 4 years, jumping from 16 to 4. March 2019, Andhra Pradesh rank in terms of growth rate was 16 out of 28 states with a GSDP of 8.7 lakh crore. However, as per the latest RBI report, 2022-23, Andhra Pradesh jumped to rank 4th in terms of GSDP growth in the country with a GSDP of 13.17 lakh crore. The state recorded 50% GSDP growth in the last 4 years. The second point, significant uptick in per capita income. AP moves from spot 17 to 9. In March 2019, Andhra Pradesh ranked 17th in the country with a per capita income of 1.5 lakh. In just 4.5 years of CM Jagan-led government, the per capita income has increased to 2.1 lakh rupees and currently has acquired 9th spot among the other states. These are all
RBI's handbook statistics, madam. The third one, the debt GDP, the debt growth, the debt growth rate down by 111%, from 169% in 2014 to 58% in 2023. Under the Chandrababu Naidu's government in 2014, the debt growth rate of state was high as 169%. Sir, name may not be However, mentioned. after gaining power, Mr. Jagan Mohan Reddy not only took measures to elevate the state's economic growth, but also ensured that the debt growth slid down. Madam, after 4.5 years, the debt growth rate has drastically come down from 110% to 58%. This is also as per the records available. The record generation of government jobs, madam, till during 2014 to 2019, there were only 34,000 government jobs were filled. But in the last 4.5 years of YSRCP government, 4.93 lakh government jobs Sir, please are refrain created. from mentioning names, sir. Please. Madam, ascending agricultural growth from second last, this is all contributed to the nation's economy, my friend. My friend, you have to understand this. Ascending agricultural growth from second last to number 7 in India. In March 2019, AP growth, agriculture sector growth was ranked 27th in the country with a negative growth rate of 6.5%. However, in a significant change, that state has ascended to 7th position in the last 4.5 years. AP's agricultural growth rate now has been recorded as positive 5.5%. This is again handbook statistics of RBI, madam. 3 times growth in industrial sector performance. During the 2019, the industrial growth rate was a meager 3.2%. But today, under the CM Jagan's government, the industrial growth rate has increased to 10.59%. Again, this is from RBI statistics. AP tops consecutively for 2 years in ease of doing business. This is also again from Ministry of Commerce and Industry, Government of India source. Record 5 times growth in MSME in the last 4 years. During 2019, when my CM took over, it was only 37,956 MSMEs. But in the last 4.5 years, it has gone up to 1.88 lakh MSMEs. This is also, again the statistics that are available on record. Industrial stalwarts always look to Andhra Pradesh. Madam, I would like to tell, Andhra Pradesh received the highest ever investment of 13.5 lakh crore during a single global investor summit held in March 2023. All the top industrialists have invested to the huge extent and committed. These are all, again, as per the statistics available. Madam, I think my colleague has to understand. Thank you, sir. Ravindra, please. Then finally, ma'am, revolution in school infrastructure. Madam, in the last 4 years, 7,112 crores has been spent in government schools. More than, madam, introduction of English medium is one of the best governance and best input that has come from Andhra Pradesh government. 46% exponential rise in healthcare infrastructure. It has increased from 28,000 to 41,000 crores. The CM Jagan government has developed more than 10,000 YSR village health clinics, which were never looked at it. Arogya Suraksha programs and also free medical camps, whatnot, there's a huge, massive infrastructure boost. More than 4 ports, 10 fishing harbors, 2 airports, 17 medical colleges, 3 industrial corridors with 5 nodes, 10,078 Rait Bharosa Kendras, 15,000 Gram Sachivalayams, 10,000 YSR health clinics, and all over
31 lakh house pattas to poor and other. 22 lakh houses are under construction. Madam, I have few suggestions. For Government of India to evolve into a $5 trillion economy. India must focus on several key areas, especially in new and emerging fields. Digital infrastructure and technology certainly need to be focused. Renewable energy, it need to be focused. Financial sector reforms need to be focused. International trade and relations should be focused. Research and development initiatives should be focused. Judicial sector reforms must be focused. Bureaucracy reforms should be focused. Madam, I must tell you one thing. Under Prime Minister Modi's governance, this country has seen a lot of safety and security. There is a lot of discipline that has come in the system. I must tell you, starting from the shareholders to the investors to the industries, banking system, all the people that are there in the system understand the importance of governance, and everybody is following a disciplined route. Madam, I would like to congratulate the Honorable Prime Minister and the Finance Minister steering our country during huge global uncertainties in an effective manner while bringing the maximum benefits to the Indian economy through all the diplomatic outreach initiatives. Thank you very much, Madam. Thank you, Madam. माननीय सांसद श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी. चेयरपर्सन, थैंक यू. मैं माननीय चेयरमैन का शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होने का हमें मौका दिया. ये विपक्ष की मांग रही है कि अर्थव्यवस्था पे चर्चा हो. उन्होंने ये कहा है और उन्होंने ये परमिशन दी है, तो मैं उनकी आभारी हूँ. मैम, लास्ट फ्यू स्पीकर्स होने का फ़ायदा ये होता है कि हमने सबकी फैक्ट फ्री डिफेंस सुना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सांसदों की तरफ से. क्या हो गया माइक को? आवाज़ कम है. मैम, यू कैन हियर मी? Excuse me for a second, Dr. John Britters, I'm sorry. After her, please. Thank you. Ma'am, add 30 seconds to this disruption. So, 5. Oh, please stop. So, ma'am, what I want to say is, मुझे पूरा समय मिला सबकी बातें सुनने का, और ख़ास करके कुछ सांसदों का जहाँ कह रहे थे मनरेगा की डिमांड आधी हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े आधे हो चुके हैं. तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि अगर उनके आंकड़े सही हैं तो मनरेगा में जो अखबार हमें बताते हैं और जो रिपोर्ट आती है, मनरेगा की भारी मांग क्यों हो गई है, दुगनी क्यों हो गई है. साथ ही साथ रूरल मिनिस्ट्री की मांग है, 60,000 करोड़ का बजट था मनरेगा का. इस आने वाले बजट की उनकी मांग है कि 1.1 लाख करोड़ मनरेगा को बजट एलोकेट करना चाहिए. ये किस वजह से हो रहा है अगर मनरेगा की डिमांड आधी हो गई है तो? दूसरी बात मेरे समझ में नहीं आई, जब एक माननीय सांसद कह रहे थे, जिनकी आदत है टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल, कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन से जनता को किसी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए उनको चुनाव में भारी बहुमत मिल रहा है. तो अगर उनको किसी तरीके का दुख नहीं है इन्फ्लेशन, महंगाई को लेकर, या अनएम्प्लॉयमेंट आधा हो गया है, तो मैं पूछना चाहूँगी 80 करोड़ देश की जनता को जो राशन मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है? या तो उनके पास रोज़गार है, और अगर रोज़गार है तो उनको ये 80 करोड़ लोगों को ये राशन की ज़रूरत क्यों आ पड़ी है? जीडीपी की बात हो रही थी, और एक और चीज़ उन्होंने कही थी कि आरबीआई के आंकड़े ब्रीच नहीं हुए हैं इन्फ्लेशन के. मैं उनको याद दिला दूं, जैन 2023 में 6.52% इन्फ्लेशन था, फेब 2023 में 6.44% था, जैन 2022 में 6.01% था, फेब 2022 में 6.07% था, मार्च 2022 में 6.95% था, और अप्रैल में 7.79% था. ये इन्फ्लेशन जो ब्रीच किया है आरबीआई के आंकड़ों का 6% का. बार बार जीडीपी की बात हो रही है. मैं जीडीपी से ज़्यादा मैं पर कैपिटा इनकम में ध्यान देना चाहूँगी. एक माननीय सांसद ने कहा कि मैं अगल बगल की राज्यों की देशों की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं अमेरिका, यूरोपियन यूनियन से हमारे देश की कंपैरिजन करना चाहूँगा. तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पर कैपिटा इनकम उन देशों के कंपैरिजन में इंडिया के पर कैपिटा इनकम पर ध्यान दें.
यूएसए है पर एनम इनकम 2022 के आंकड़े मैम 63,41,117, चाइना 10,51,610, इंडिया कहाँ पे है 1,98,287। पिछले 2014 से जो पर कैपिटा इनकम देश के देशवासियों की बढ़ी है वो करीब 35% बढ़ी है। मैं उनसे ये क्रेडिट छीनना नहीं चाहूँगी, पर जो उनकी महंगाई बढ़ी है वो 123% बढ़ी है। तो आमदनी चवन्नी खर्चा रुपया जो कहा जाता था वो आज इन्होंने पूरा कर दिया है। अगर आप कहेंगे कि मैं दाल चावल सबका दाम भी दूं कितना बड़ा है, तो वो जिस आंकड़ों पे पर कैपिटा इनकम बढ़ा है उससे ज़्यादा ही बढ़ा है। मैं 2 मिनट लूँगी, बस 1 मिनट और। आप भी महिला, मैं भी महिला, पहली बार। जो रुपी डेप्रिसिएशन की बात हुई थी, मुझे याद है जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे प्रधानमंत्री जी, वो रुपी के गिरने पे कितना अफसोस जताया करते थे। कितने उनके भाषण हैं, कहते थे पाकिस्तान की रुपी स्ट्रॉन्गर हो रहा है, बाकी देशों का करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हमारे देश का ही क्यों वीक हो रहा है। और आज दिल दुखी होता है जब पढ़ता है कि हम लोग हिस्टोरिकल लो पे जा रहे हैं। इंडियन रुपी हिस्टोरिकल लो पे है अगेंस्ट द डॉलर। वो किसकी नीतियों की वजह से हुआ है वो देश, आई एम श्योर माननीय वित्त मंत्री हमें बताएंगी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी। और जब ये पढ़ते हैं पुअरेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी नेशन, मैम बस एक लास्ट मिनट, 1 लास्ट मिनट मैम प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े मैं उस पे जाना, मैम प्लीज 1 लास्ट मिनट, 1 लास्ट मिनट। लास्ट में मैम लोन राइट ऑफ्स के बारे में कहना चाहूँगी। बहुत बार ये बात हुई है कि गरीबों का ध्यान दिया है, गरीबों का उत्थान किया है। 10.6 लाख करोड़ लोन राइट ऑफ हुआ है, जिसमें से 50% जो लोन राइट ऑफ हुआ है उन कैपिटलिस्ट का हुआ है जिनका पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी का है। तो आप जब गरीबी की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो सही मायने में देश में सबका साथ और सबका विकास लाएं। आपकी आभारी हूं मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर जॉन ब्रिटस, माननीय सांसद जी। Thank you very much, madam. Madam, I am a strong feminist and I need to get 2 or 3 minutes more from you, madam. Madam, see, a miracle has happened. After the speeches of Rajesh Sinha and others, when I was coming from South Avenue, there is some changes that has happened to the boat club. Instead of water, it is full of honey and milk. ये पानी शहद हो गया और दूध हो गया. After 2014, this country has drastically changed, madam. You know that, no? How it has changed. All the indices have been doled out here, and I will not refer to you, madam. But I will specifically come to certain concerns of my state. Madam, the other day I had asked a question to the Honorable Finance Minister as to the borrowing limits of the states. I got an answer from the minister. She said that we are strict on borrowing limits because the 15th Finance Commission has given a recommendation. And I asked her, what is the recommendation? It is like this. Governments at all tiers may observe strict discipline by resisting any further additions to the stock of off-budget transactions. Fine, madam. Perfectly okay. Is not union government a government? Are they not part of the governments which have been referred to by the 15th Finance Commission? They want all the state governments to shed the borrowing of the PSUs or SPVs. When it comes to the central government, just see the National Highway Authority of India. I asked a question. You know what is the loan debt of NHA? Madam, you would be surprised. 3.4 lakh crore. There are other agencies also. They want to discipline state governments. What is the total debt of the union government, ma'am? 157 lakh crore. A humongous figure. They are trying to blame the state government, sir. Madam, now I am coming from Kerala.
See, the Kerala social indices are at par with the Western countries. What is this economy, madam? Economy is for the society, for the people. Is it just because you want to stack some cash in your house? Is that economy? No. The welfare of the people. The average lifespan of a Malayali is more than 12 years of that state from Rajesh Sinha or other state. What is the meaning of that? We live more than those people who are in the north. Madam, I will just come to another topic. Madam, I want your protection. It's a very serious matter. Now, the point is that we are being penalized. You know what is the new slogan? The Prime Minister was harping about cooperative federalism. It's not cooperative federalism, madam. This is crony federalism. You know why? See, 18% of the population, South India, we contribute 35% of the GDP. We are being penalized for the performance. You mop up so much of resources through surcharges, 7 lakh crore in a year, then you bring centrally sponsored scheme, which cannot be implemented in a state like Kerala because we have crossed the threshold. You want us to open schools. We have already schools there. Madam, please give me. You have been liberal to everybody. Now what is happening? Now, there is a strange phenomenon. Somebody was talking about selfie corners in higher education institute. Arey, Modi saab to sabhi jagah pe yaar. You want to add everywhere? Now, one more thing, madam. They are contributing 1/5 for the housing scheme, whereas 3/4 is being contributed by state of Kerala. They want to brand the houses which are built. The self-respect of the people. Do you want to have branded houses? Please conclude, We said, sir. madam, I'm just winding up. We said, no need of branding. We should uphold the self-respect of the people. Instead of that, they want to name everything in the name of Prime Minister. Madam, my only submission to you is that the entire credibility of this government rests with the fact that the slogan, you need to have prosperous states, instead of fleecing the states, you should allow the state governments to have the resources. You should make sure that there should be an equitable, divisive process that is happening whereby resources are given to the states. Thank you very much, ma'am. Thank you. Mananiya Samsad Shri Nagendra Ray ji. Thank you, madam. Chairperson, in the chairperson, मैं भारत के आर्थिक व्यवस्था संबंधी कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमें ये ध्यान रहे कि हमारे अतीत थे तो आप वर्तमान है तो भविष्य में भी रहेंगे। हमारे आर्थिक व्यवस्थापना हम अतीत में देखें, एक नज़र डाले तो देखिए हमारे देश कुबेर का था, कुबेर धन, और देखे तो स्वर्णपुर। हेलो मैडम, हमारे देश का नाम था रत्नपीठ, स्वर्णपीठ। तो ये कुछ दिन का बाद 14 से पहले यार की तो देखा जाए हमारे आर्थिक व्यवस्थापना एकदम लाचार हो गई थी। भारत के आर्थिक व्यवस्थापना एकदम लाचार हो गई थी। तो हमारे आर्थिक भंडार को हमने गिरवी हमारे सोने को गिरवी रखना पड़ता था। इतना आमागा आप देखें, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब ये भारत को संभाला तब से देखें तो आज तक अभी तक 2022 से 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 7.2% थी और ये वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से
बढ़ते अर्थव्यवस्था की स्थिति। भारतीय व्यवस्था में भारतीय व्यवस्था को दुनिया में ब्राइट स्पॉट कहा जा रहे हैं। पिछले 9 वर्षों से भारत की एक उल्लेखनीय आर्थिक प्रक्षेपक की मतलब ये आर्थिक व्यवस्थापना का जो नीति है, ये दुनिया की नज़र हमारे आर्थिक व्यवस्थापना का सराहनीय करते हैं। तो मैडम मैं कहना चाहता हूँ जे हमारे अभी जो आर्थिक व्यवस्थापना है इसको कुछ इलाका में डेवलप की कमी है। देखिए ये जो डेवलप आर्थिक व्यवस्थापना ग्रोथ हुआ है, लेकिन हमारे नॉर्थ बंगाल, बिहार की उत्तर पूर्वी इलाका, आसाम का इलाका में, नॉर्थ ईस्ट इलाका में एकदम नैरो है। तो हम गवर्नमेंट से विनती करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे उधर का आर्थिक व्यवस्थापना दुरुस्त हो। अभी बोलने दीजिए। फिर आर्थिक व्यवस्थापना दुरुस्त हो, इसीलिए गवर्नमेंट से मैं आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे उत्तर पूर्व भारत को, नॉर्थ ईस्ट साइड को डेवलप किया जाए। तो हमारे जो मुद्दा है, देखिए ये दुनिया का अभी हम चाहते हैं कि हमारे ये लक्ष्य पूरी करे, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आर्थिक मुद्दा का नीति जो जीडीपी है सर्वश्रेष्ठ स्थान में पहुंच जाए। मैडम मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, इसीलिए मैं अपना वक्तव्य को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री विवेक तनखा। मेरा अब मैं बोल लूं, उसके बाद बोल लीजिएगा। जो उन्होंने बोला कि जब ये हमारे ये हो गए थे, जब सोना गिरवी रख गया था, उसके बाद फिर मोदी जी ने आकर उसको संभाला। अरे उसके बाद तो नरसिम्हा राव जो आए थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने सारी अर्थव्यवस्था संभाली थी। 2005 का उन्होंने सही बताया कि मनमोहन सिंह रिजीम में 7 से ऊपर जीडीपी थी, लेकिन आज वो जीडीपी नहीं है। तो फैक्ट्स को जो है सुधार के वक्त बोलें, यही मेरा अनुरोध है। ठीक है। माननीय श्री विवेक तनखा। टाइम शुरू से स्टार्ट करें। मैं बहुत देर से सभी मेंबर्स को बहुत सीरियसली सुन रहा था, और सुन रहा था कि हर व्यक्ति अपने तरीके से इकोनॉमी के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे थे। लोगों ने एम्प्लॉयमेंट की बात की, लोगों ने जीडीपी की बात की, ग्रोथ की बात की, एजुकेशन की बात की, हेल्थ की बात की, सबकी बात की। बट मैं पहली चीज़ आपसे बोलना चाहता हूं कि मैं जब इकोनॉमी को देखता हूं तो मैं अपने शहर से देखता हूं। मेरे शहर की व्यवस्था क्या है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, जबलपुर में रहता था। वहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, करीब 6 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, जहां 1 लाख से ऊपर लोग काम करते थे। और ये 50-60 साल की व्यवस्था है। आई एम श्योर बहुत सारे सांसद यहाँ के जब जबलपुर आए होंगे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज उन्होंने देखी होंगी। समस्या ये है कि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहाँ 1-1.5 लाख लोग काम करते थे, आज मुश्किल से 10,000 लोग काम करते हैं। तो मैं कैसे मानूं कि इंडिया की इकोनॉमी इज डूइंग वेल। इकोनॉमी तब अच्छा करती है जब लोगों को नौकरी मिलती है, खर्चे, इन्फ्लेशन कम रहता है, चीज़ें सस्ती होती हैं, आराम से ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। मैं फिगर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े फिगर्स मेरे पास भी हैं। बट मैं जब देखता हूँ कि जब एंसिलरीज बंद पड़ी हैं, आप कहते हो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब है। कौन सा मैन्युफैक्चरिंग हब है? एक डिजिटल हब है खाली, थोड़ा सा। जो डिजिटल मार्केट एक नया क्रिएट हुआ है, जो आईटी का एक मार्केट क्रिएट हुआ है, उसकी कुछ चीज़ें नोएडा आ गई हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना में हुआ करती थी,
थी या बाहर और देशों में होती थी, वो यहाँ थोड़ी शिफ्ट हुई है। जो हैवी इंजीनियरिंग वगैरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आज भी नहीं आई है यहाँ पर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं मोदी जी को सुनता हूँ या मंत्रियों को सुनता हूँ और सब बात कर, कोई इनमें से एजुकेशन की बात कम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते, ग्रोथ की बात हार्डली करते हैं, मिडिल क्लास के बारे में हमको कुछ ज़्यादा नहीं बता पाते, एक इंक्लूसिवनेस जो होनी चाहिए देश में उसके बारे में चुप रहते हैं, स्किल डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताते, और जो बताते हैं वो बहुत थोड़ा है। तो मेरा ये कहना है कि जब जॉब्स हैं वैनिश, जॉब जब चली गई हैं, तो हमको आजकल क्या शब्द मिलते हैं? घमंडिया, अमृतकाल। अब आप पूरे विपक्ष को घमंडिया बोलते रहो, बट उससे चीज़ें तो नहीं बदलने वाली हैं। मेरा कहना है इस देश में लास्ट 9 साल से खाली जुमला और एम्प्टी प्रॉमिसेस दिए गए हैं। और मुझे आज याद आ रहा है, एक अपने सनी देओल साहब लोकसभा के मेंबर भी हैं, एक मूवी थी जिसमें वो कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख माय लॉर्ड, पर इंसाफ नहीं मिला। तो इसी तरह मैं मोदी जी और बीजेपी से कहना चाहता हूँ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख माय लॉर्ड, मगर हमको विकास नहीं मिला। तो विकास एक्चुअली नहीं मिला, आपने हमको तारीखें दी, आपने 16 दी, 17 दी, 18 दी, 19 दी, 20 दी, 22 दी, बट वो विकास कहाँ है जिस विकास की आप बात करते हो? और मैं आगे बताना चाहता हूँ, मेरे पास 6 इंडेक्सेस होते हैं, विकास के 6 इंडेक्सेस होते हैं। एक है इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ इज जब रियल वेजेस, नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन जो होता है, जो फार्मर होता है, उसके वेजेस में क्या इजाफा हुआ। सितंबर 2017 से 22 में इट हैज डिक्लाइंड बाय 0.9%। बिटवीन 2017 एंड 2021 रेगुलर, मैडम मेरे तो 7-8 मिनट थे। टाइम हो गया, 4 मिनट का। अरे मेरे को 7-8 मिनट थे मैडम, अभी तो ना वो लिखे। और रेगुलर वर्कर्स हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 0.7% टू 1.3%। मैं इसी तरह बताना चाहता हूँ, कुकिंग गैस 100 रुपए की थी, 200 हो गई पर लीटर। मिल्क 35 था, 65 हो गया। पल्सेस 75 थे, 180 हो गए। फ्लावर, आटा 20 रुपए पर केजी था, 45 हो गया। शुगर 35 था, 55 हो गया। पेट्रोल 70 था, 105 हो गया। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करिए। एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन जो है, इस unemployment rate is 42%. Labor force participation rate has fallen to 40%, as already from an already low of 47%. In 5 years, while the total working population has gone up by 12 crores, the number of people with jobs have gone down to 80 lakhs. इसी तरह मैं बताना चाहता हूँ एग्रीकल्चर का फेलियर, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। रूपी कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं रुपया गिरा नहीं, डॉलर मजबूत हुआ। हमारा कहना है रुपया इज टुडे सीन एज द वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन इकोनॉमी। तो मेरा ये कहना है, वेदर इनइक्वालिटी है, एग्रीकल्चर ग्रोथ है, रूपी का डिक्लाइन है, फाइनेंशियल स्कैंडल्स हैं, आपकी ग्रोथ हुई कहाँ है? ये ग्रोथ तो मुझे कहीं दिखती भी नहीं है। मुझे खाली ये दिखता है कि आप ऑपोजिशन के अगेंस्ट फुल टिरेड आप लोग लॉन्च करते हैं, ऑपोजिशन को एक बैड नेम देते हैं, कभी कह देते हैं ये अमृतकाल है, कभी कह देते हैं ये घमंडिया है। इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप चाहते हैं इंडिया की ग्रोथ हो, इट हैज टू बी ऑन दी 7 इंडेक्सेस जो मैं बोल रहा था। इट हैज टू बी एन इंक्लूसिव ग्रोथ, इट हैज टू बी ग्रोथ ऑफ इट्स वर्कर्स, इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर, इट्स टाउन्स, इट्स वर्कर्स एंड इट्स यूथ, इट्स वुमेन, इट्स ST, SC, OBC, एवरीबडी। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय श्री अबीर रंजन विश्वास, 9 मिनट। Madam, we are discussing the state of economy in India, but anyone listening to this debate since yesterday will realize that when it comes to facts and figures and insights, members of the opposition parties are giving clear arguments to make a strong case. On the other hand, the BJP is having a competition of what, madam? As to how many times they can mention the name of the Prime Minister, Honorable Prime Minister. Well, of course, we don't have any problem regarding that. But I would like to know, why don't they give us
facts and figures. The previous speakers from my party, the previous three speakers, of course, have made one common point. What are the points? Why is the wealth that is created not being equally distributed? Where? Firstly, equally among all the people. Secondly, among the states, irrespective of their political ideologies. Now, as you know, let me make a charge which I can substantiate with data. The non-BJP states like Bengal, Tamil Nadu, and the Congress-run states are deprived. The unspoken catchline seems to be, support us politically and we will raise funds. Support us politically and we will not send the CBI and ED behind you. Madam, I will give you one example about MG and RGA. 5 points I will raise about MG and RGA. Firstly, Madam, it's an act of parliament, as we all know. It is a right and not a gift, depending on the whims and fancies of the central government. Secondly, as per the act, the payment to a worker who was worked under this scheme is to be made within 15 days. So if 100 people have worked on a scheme and if there are any discrepancies arising out of it, if 2 of them are found guilty, I would like to know why are the rest 98% or 98 people deprived. This is most unfortunate and most undesirable, but this is what is being done. The budget of the MG and RGA has been cut by about 30% with respect to last year. But we are not surprised, as in 2014, on the floor of this parliament, the Honorable PM had called it Gadda Khodne Ka scheme, most unfortunately. Gadda Khodne Ka scheme. No. Fourth point is, Madam, MG and RGA mandates nation over are falling, but the government, the ruling party, the BJPs are celebrating it. Today, one of their MPs have called this an indicator of development. This is their way of looking at the economy, but our approach is different. Speaking of the fifth point, speaking about job cards, about 7,40,000 job cards have been found to be fake in Uttar Pradesh. That means of the total figures, about half Uttar Pradesh account for. Bengal had about 5,000 fake job cards. I would like to know, have the funds to Uttar Pradesh being stopped? I'm sure the answer is known to all. Now, let me read from the BJP manifesto of 2014. I'm mentioning about it. They are spoken of doubling farmers' incomes. Did it happen in 2019? No. Again, did it happen in 2023? No. At current growth estimates, the farmers' incomes will not double before 2030. In Bengal, in 2011, a promise was made by the Honorable Chief Minister. Most interestingly, it was about doubling farmers' income, and I take pride, as I come from Bengal, in mentioning that as of today, it is not doubled, but it is increased threefold as in the current date. Now, Madam, let me come to public sector undertakings, the PSUs. Madam, we have withstood the shock and trauma of demonetization. But how many of us have heard of monetization? This is the instrument of the Niti Aayog to sell out the people's assets, as the name reflects, public sector undertakings. It belongs to the public. It is the asset of the public. And the government is hell-bent upon selling it. Madam, it's like selling the family jewelry. As you can name it, Rail, Air India, BHEL, BSNL, LIC, and the list is unending. These were created over decades, but now we want to strip the nation of these assets. I proudly belong to the scheduled caste community, and every time this happens, I'm hurt, and hurt dearly. As every time a PSU is sold, a young SC boy or girl is deprived of their right to secure a job. And worse still, there is also unemployment. There is also in employment, contractual engaging is taking the front seat, where you don't have any, you're not going for reservations.
That is a very big concern. And moreover, whenever a PSU is sold, often these people are rendered jobless, and it creates unending miseries for the family. Madam, now, in understanding the union condition of the current economy, we have to understand the condition of the state economies. So it is very important to discuss cooperative federalism. Our present Honorable Prime Minister and Home Ministers were both Chief Ministers and Home Ministers of a state. So they should understand better what the problem of the states are. But most unfortunately, when they are in Delhi, they have also adopted the zamindari culture, as if the money is for distribution at their will. But it is, as we all know, is to be done as per constitutional guidelines, which are flouted day in and day out. Madam, I appeal to you that next week we should have a short duration discussion on the issue of cooperative federalism. Madam, if you notice, the House is running so smoothly and it's so good for all of us. Next week also, the opposition should get one short duration discussion on one colleague attention, wherein they can express their concern as opposition and they can at least speak out of the pain the states are in. They can make their points so that the states are to benefit. But also, there is a flip side to it. The BJP will also benefit from this, as even if their speeches remain devoid of facts, figures, or any reasoning, at least their speeches will have multiple mentions of the name of the Honorable PM. To summarize, I would say, the way the government is conducting itself, in a nutshell, we can say their catchline is the rich should get richer and the poor should get poorer. Now, the way the present government is exploiting the financial interests of the state, and that is most implorably much higher than the colonial rule. So I expect there will be a change of stance. We would think much more about cooperative federalism and act in that direction for the benefit of one and all and the nation as a whole. Thank you, Madam. धन्यवाद. माननीय श्रीमती सुलता देव. जय जगन्नाथ. ऑनरेबल वाइस चेयरमैन मैडम, मुझे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक में बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ. 7 मिनट है. 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक तो हम पहुँच ही गए. फिर देखा जाए तो कितने मुश्किल से भी पहुँचे. रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, कोविड के चलते आज हम यहाँ तक पहुँच गए. मेरे पूर्वज सारे वक्ता आंकड़े दिए, मुद्रास्फीति का और जीडीपी का, ग्रोथ का, सबका. वो आंकड़ा मैं नहीं देना चाहूँगी. मैं एक महिला हूँ. मैं जो गाँव में और जो रूरल एरिया में जो महिला बिलोंग्स करती है, सारे ये भारतवर्ष में मैं शायद उनके तरफ से जैसे मुझे लगता है वही बोलना चाहूँगी जो दिल से बोलूँगी. ये बात है कि मैं एक महिला हूँ. पहले मैं किचन से बात करूँगी, क्योंकि जीडीपी कितना भी बढ़ जाए, देश हमारा आगे बढ़ रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है. इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री को तहे दिल से शुक्रगुजार करूँगी कि हमारा देश बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है. मगर मैं फिर भी वही आऊँगी किचन में. मैं क्योंकि एक महिला हूँ, हम कहीं भी जाए मगर किचन में अगर एक गरीब की थाली में सब चीज़ ना हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधूरा ही लगता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ही खलती है. आज सबको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो महंगाई के चलते गरीब की थाली में बहुत सारे चीज़ बहुत मुश्किल से आ रहा है. जिस दिन गरीब की थाली भरा हो जाएगा ना, उस दिन पूरा देश हंसेगा, उस दिन जीडीपी भी ग्रोथ होगा, जितना भी ग्रोथ होगा. हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि
एक पॉन्ड है जिसमें बड़ी मछली भी रहे और छोटी मछली भी रहे। ऐसा ना हो कि बड़ी मछली सारे छोटी मछलियों को निगल ले। ऐसे अर्थव्यवस्था होना चाहिए जैसे कॉरपोरेट सेक्टर भी ग्रो करे और छोटे से छोटे जैसे मैक्रो इकोनॉमिक भी बढ़े और माइक्रो इकोनॉमिक भी बढ़े। जैसे साधारण लोगों के पास हाथ में पैसा जाए तो ये पैसा देश में रहेगा। अगर FDI इन्वेस्टमेंट आती है, ये बहुत अच्छी बात है। जिस बड़े से बड़े कॉरपोरेट हाउस के पास में जो पैसा रहेगा ना, वो ज़्यादातर पैसा विदेश में जाएगा। हम लोग हमारे देश के पैसा छोटे से छोटे जो लोग काम करते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए खर्चा करें। खासकर मैं एक बात बोलूँगी कि जब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात आती है तो मैं महिलाओं को भी साथ में लूँगी, क्योंकि हमारे आबादी 50 से अधिक % महिला है और महिला एम्प्लॉयमेंट, महिला वर्कर को कैसे काम करें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए। जब आंकड़ा देता है कि 22% सिर्फ महिला है तो कैसे बढ़ाया जाए। मैं तो तहे दिल से शुक्रगुजार करूँगी मेरे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का, जो 7 लाख SHG बना के 70 लाख महिलाओं को काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। और उनके घर देखा जाए तो महिला के पास अगर कुछ पैसा हो तो वो बच्चे को अच्छे से रख सकती है, घर को अच्छे से संभाल सकती है। वो SHG आज SME में परिवर्तन हो चुका है। आज अगर देखा जाए चूल्हा चौके चलाने वाली महिला हमारे यहाँ पर लैपटॉप चलाती है और देखा जाए तो फ्लिपकार्ट में, अमेज़न में बिजनेस भी करती है, एंटरप्रेन्योर भी बन चुकी है। इसके लिए मेरा गवर्नमेंट ने उनको इतना प्रोत्साहन दे रखा है कि कैसे मार्केट लिंकिंग किया जाए, अगर देखा जाए किस तरह से उन लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए। हमको मालूम है वो जो सारे महिला है ना, वो मिशन शक्ति के महिला है, वही हमारे नवीन ओडिशा की मुख्य। मेरा टाइम कितना हो गया सर? 4 मिनट हुआ, मुझे 7 मिनट। सर रिक्वेस्ट है, many more years to come। हाँ, तो ये क्या हुआ ना, तो इन लोगों को ये मैं बोलूँगी कि ये जो नवीन ओडिशा होता है ना, नवीन ओडिशा, नवीन मतलब नया ओडिशा के गठन के यही सब सारथी बनेंगे महिला। मैं चाहती हूँ कि महिला लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लिया जाए, महिला लोगों के लिए ज़्यादा स्कोप क्रिएट किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे में। और एक बात है, उड़ीसा जैसे मनरेगा के बारे में बात हो रहा था, मनरेगा में ज़्यादा से ज़्यादा काम भी लेना चाहिए। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है, आपको भी मालूम है, नेचुरल कैलामिटीज़ बहुत होता है, डिजास्टर बहुत होता है। हम लोग हमेशा बार बार मांग करते हैं कि हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए, स्पेशल अगर नहीं हो सके तो स्पेशल फोकस स्टेट का स्टेटस दीजिए, जिससे सारे राज्यों का एक ही साथ में विकास हो। अगर देखा जाए तो जब माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उड़ीसा का शासन भार लिए थे तभी 11,108 करोड़ का बजट था। अभी हमारे मुख्यमंत्री का बजट, हमारे स्टेट का बजट 2,30,000 का है। अगर ये ऐसा चलता रहेगा तो आगे भी देश बढ़ेगा, सब भी बढ़ेंगे। मगर ये जो मैं बोल रही हूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो काम है, जो स्किल का हो रहा है, ओडिशा में जो स्किल सेंटर से जितने छोटे से छोटे बच्चे भी स्किल हो रहे हैं, उनके लिए ऐसा प्रावधान हो कि वो सारे जगह में जा सके, सारे जगह जाकर काम कर सके। और जब हम इकोनॉमी के बात कर रहे हैं, 7-5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बात कर रहे हैं, तभी हम लोग कैसे करके रेलवे कनेक्टिविटी हो, नेट कनेक्टिविटी हो, बैंक कनेक्टिविटी हो। आज भी हमारे 8 जिला में रेलवे नहीं है। आज भी 74% नेट कनेक्टिविटी हमारे पास है, जबकि देखा जाए तो 85% नेशनल एवरेज है। आज भी हमारे पास 4,549 गाँव में नेट कनेक्टिविटी नहीं है, बैंक का कनेक्टिविटी भी नहीं है, बहुत सारे बैंक नहीं। जब सरकार डीबीटी के बात करती है तो बैंक ना हो तो डीबीटी कैसा हो। मैं अभी बोलूँगी कि डीबीटी के बारे में जब बात करेंगे तो ओडिशा ही पहला स्टेट है जब 2007-8 फाइनेंशियल ईयर में नरेगा प्रोजेक्ट में गंजाम जिला, मुख्यमंत्री के जिला में पहले जिलापाल VK पांडियन सर ने डीबीटी के पहले बार इंट्रोड्यूस किया था। ये है ओडिशा जो मार्ग दिखाता है। इसके बाद में डीबीटी आया, मगर डीबीटी के लिए फिर बैंक का जरूरत होता है। मैं फिर भी बोलूँगी, आज भी सारे बैंक, गाँव में बैंक के लिए माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आमो बैंक की तरह एक योजना खोली है, जो बैंक हमारे हर गांव में होगा। मैं अभी भी फिर भी बोलूंगी, हमारे ममता, थैंक यू। एक मिनट सर, मैं कंक्लूड कर, एक ममता स्कीम है हमारा। हम लोग चाहते हैं, क्या नाम है? व्हाट्स द नेम? ममता
ये आपके बहुत करीब नाम है सर, मुझे पता है, थैंक यू सो मच। ये ममता योजना है जो हमारे सारे ओडिशा के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए है, जो देखा जाए तो ड्रास्टिकली मातृमूत्रहार और शिशु मूत्र MMR IMR कमाया। मैं अभी भी बोलूँगी, फार्मर इनकम कहीं डबल हुआ ना हुआ हो, हमारे पिछले 2 साल से हमारे यहाँ का फार्मर्स का दुगनी इनकम भी हो रहा है। अगर ये सबको साथ में लेके अगर चलेंगे ना सारे स्टेट को, तो सारा दुनिया हंसेगा। ये मैं अभी भी बोलूँगी, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये हमारी हिंदुस्तान है ना, सबसे अच्छा है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। सबका एक ही साथ में अगर देखा जाए तो इक्वली डेवलपमेंट हो तो कहीं ना कहीं भारत भी हंसेगा, सबको ही हंसेंगे। मैं इतना ही बोलूँगी। थैंक यू सो मच। वंदे उत्कल जननी, जय जगन्नाथ। Honorable members, some speakers are yet left. We will take them tomorrow. I will now continue with the special mentions. Oh, please. No, sir. Actually, thank you. No. It's on this only. Nothing. One thing. It's on this. Actually, so yesterday you gave one thing. Actually, Derek, you started it so wholesomely that no, that is the problem. I have got requests from large number of members that don't curtail our time. We can't have it full say. I told them I have not been very fair to the first speaker. No, I have not been fair to the first speaker. I gave him only 12 minutes. If I were to increase the time, he would have got more. Okay, what have we to say? No, sir, the issue is we've had a good debate. Yesterday was 3.5 hours. Now today is 3.5 hours. So now you're saying it will continue tomorrow. For half an hour. For half an hour. Yes. So let me make my position clear. Otherwise tomorrow you will wonder why I've gone missing. Because as per the rule, the minister will reply and then that is the end of the discussion. So lest you do not misunderstand me, tomorrow is a very important day. I seek your indulgence. Our friends in the Congress party are swearing in their chief minister in Telangana. We'll be happy to be with them. So I'll be missing tomorrow. It's not any boycott. It's a celebration. That's all, sir. We'll consider, but you know the outcome. Thank you. We'll consider Shri KRN Rajesh Kumar, demand for establishment of District Central Cooperative Bank, the Namakkal district of Tamil Nadu. Is the honorable member here? Not present. Dr. Kirodi Lal Meena. Demand to declare cow as national animal to protect our culture. महोदय, गाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। गाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय संस्कृति में गाय को पूजा जाता है। ये समय की मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हम जानते हैं कि जब किसी देश की संस्कृति और उसकी आस्था को ठेस पहुंचती है तो देश कमज़ोर होता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि किसी देश को नष्ट करना है तो पहले उसकी संस्कृति नष्ट कर दो, देश स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बहुतायत राज्यों में गौहत्या प्रतिबंधित है। सनातन धर्म में गाय को माता मानकर पूजा जाता है। गाय हिंदू संस्कृति का मजबूत प्रतीक एवं आस्था का केंद्र है। इसलिए जब कोई भी गौहत्या करता है तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाता है। गाय का मांस खाना किसी भी प्रकार से किसी का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता, बल्कि जो लोग गाय की पूजा करते हैं, गाय की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। लोग आर्थिक रूप से भी
गाय पर निर्भर हैं। गौरक्षा किसी धर्म से जुड़ा विषय नहीं है। मुस्लिम शासकों ने भी गाय को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना था। बाबर, हुमायूं और अकबर सहित कम से कम 5 मुस्लिम शासकों ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। अतः सरकार से मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। श्री A. Rahim, concern over children with type 1 diabetes. Thank you, sir. Thank you for this opportunity. Type 1 diabetes is a chronic autoimmune condition that affects individuals of all ages, but is particularly challenging for children and their families due to its early onset and lifelong impact. It requires continuous management, including regular blood glucose monitoring, insulin injections or pump therapy, and adherence to strict diet and exercise regimen. For children, this can significantly disrupt their daily lives, impacting their education, social interactions, and overall well-being. Access to essential medical supplies such as insulin, glucose monitoring devices, and other diabetic care essentials remains a significant concern, especially for families from economically disadvantaged backgrounds. The high cost of these supplies creates a barrier to effective management and often leads to compromised health outcomes for these children. In India, the number of children diagnosed with type 1 diabetes is steadily rising. I have raised questions on this issue in the 260th session of the Parliament. The government doesn't have any data on children with type 1 diabetes and doesn't have any scheme for the health care of children. Addressing the needs of children with type 1 diabetes requires a multifaceted approach involving healthcare systems, education, accessibility to resource, research advancements, and public awareness. I urge the government to take proper action to ensure the well-being of children. I also urge to make insurance available to other healthcare facilities, and this matter should be taken up by the House immediately. Thank you, sir. Thank you. Honorable Sri Samirul Islam, MP, need to address the conditions of tea plantation workers in West Bengal. Respected Sir, there are around 300 tea estates across Darjeeling, Alipurduar, Karsiong and Jalpaiguri. More than 3 lakh laborers work in nearly 400 tea gardens in North Bengal. And none of them has land rights on a estate where they have been living for generations. The union government is responsible for securing better working conditions for the workers. It has the authority to take over the management of a tea company which fails to comply with the Tea Act 1953. The West Bengal government is proactively acting against organizations who are not paying provident fund and gratuity. Under Chasundari scheme, the Bengal government is building over 4,000 homes for tea garden workers. We have already finished construction of 1,200 houses. On the other hand, the union government has failed to fulfill its promise of taking over 7 tea gardens. Only approved text. The promise was made by a union government during 2016 Assembly election campaign. Tea estates in other parts of the country such as Assam need urgent attention. You have to read only approved text, nothing else than that. It will not go on record. Attention of the union government. Okay. There is no provision of ensuring of giving them their due provident fund by the union government. However, there are no scholarships and stipends promised to tea garden workers' children. There is a dire need to address the condition of tea plantation workers. I urge the government to discuss the same and work towards ensuring
better condition for tea workers to promote the industry. Thank you. Thank you, sir. Only a proof text will go in the record. Mani Ajay Pratap Singh, concern over stray animals. Mani Ajay Pratap Singh. माननीय उपसभापति महोदय, आज सड़कों पर आवारा पशुओं की भरमार है। इन आवारा पशुओं के कारण प्रतिवर्ष 1350 से 1400 व्यक्तियों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो रही है। इनके कारण प्रत्येक गांव में सैकड़ों एकड़ जमीन परती रह जाती है तथा सैकड़ों एकड़ जमीनों पर खड़ी फसलों को ये आवारा पशु नुकसान पहुंचाते हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि पशुपालक इन पशुओं को पालने के लिए तभी तैयार होगा जब ये पशु आर्थिक रूप से उपयोगी होंगे। इसलिए इन पशुओं में नर पशुओं का व्यापक बंध्याकरण अभियान चलाया जाए, जिससे इनकी वंश वृद्धि रुके तथा मादा पशुओं के मध्य व्यापक नस्ल सुधार का कार्यक्रम भी चलाया जाए, जिससे दुधारू नस्ल के उपयोगी पशु तैयार हो सकें, जिन्हें पालने के लिए पशुपालक प्रोत्साहित हो। सरकार को बजट 2022-2023 में उल्लेखित गोवर्धन संयंत्रों को शीघ्र स्थापित करना चाहिए, जिससे पशुपालकों को गोबर गोमूत्र का भी मूल्य प्राप्त हो सके। सरकार पशु संरक्षण अधिनियम को कड़ाई से लागू करने का निर्देश संबंधित पक्षों को दे, जिससे जिस व्यक्ति के पशु आवारा घूमें, फसलों का नुकसान करें अथवा किसी के जान माल का नुकसान करें, उस पशुपालक को कठोर दंड का प्रावधान किया जाए। प्रत्येक पशु का ग्राम स्तर पर रजिस्ट्रेशन तथा बीमाकरण अनिवार्य किया जाए, जिससे कि पशु संरक्षण अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। धन्यवाद उपसभापति महोदय। धन्यवाद माननीय अजय जी। ऑनरेबल श्री सुजीत कुमार जी, डिमांड फॉर इंक्लूडिंग प्राइम टूरिस्ट साइट्स ऑफ ओडिशा into iconic sites list. Sir, thank you, sir. Sir, my special mention is to request and urge the government to include prime tourist sites of Odisha into the iconic sites list. Sir, in the year 2019-20 budget speech, the Honorable Finance Minister declared 17 tourist sites as iconic sites, intended for development into world-class destinations to set an example for other sites. The list didn't include any site from the state of Odisha, despite the state's robust tourism infrastructure, cultural richness, natural beauty, and great historical significance. Sir, Odisha alone had a total tourist footfall of 1,31 lakhs in the year 2016-17, majorly to the five prime tourist sites, namely Konark Sun Temple, Chilika Lake, Bhitarkanika National Park, Simlipal National Park, and the Diamond Triangle Buddhist Circuit. Since then, the state has maintained a growth rate of 8% every year except 2021 due to the pandemic. The continuous efforts and initiatives of the state government in organizing events like the World Tourism Day 2020, Konark Festival 2020, Mukteswar Dance Festival 2021, and the Men's Hockey World Cup in partnership with the International Hockey Federation twice in a row, sir, in 2018 and 2022, have led to 110% growth of tourism in Odisha post-pandemic. Furthermore, tourist sites like the Konark Sun Temple, which is a UNESCO World Heritage Site, stands out among the 10 most popular centrally protected monuments in India, according to the Tourism Ministry data. Sir, thus I would request the Government of India to formally include at least 2 of the 5 prime tourist sites of Odisha in the list of iconic sites, which has also been a long pending request by the state government since the year 2019. Dhanyawad, Sujit. Honorable Sri Vinay Vishwam ji, need for adequate social trains in festive season to Kerala. Thank you, sir. Sir, the Indian Railways is the lifeline of India. In light of the exorbitant prices charged by the airlines during the festive seasons, the railway play a pivotal role in helping ordinary citizens travel to their homes. During the recent Diwali season, it was recently reported that thousands of people were waitlisted and could not get trains booked home
back home. The hardships caused by such waitlisting is significant as people eagerly waiting to join their families to celebrate festivals were denied the opportunity. It has also come to notice that this helpless plight had led several passengers to enter trains without confirmed tickets, causing overcrowding of trains. It is observed that due to overcrowding, people travel risking their lives at times of festivals. Every year, thousands of Malayalis travel back to Kerala during the festival seasons of Onam, Christmas, Eid and New Year. Now comes Christmas and New Year. Many of them are disappointed due to the lack of trains and tickets and have to suffer. In this context, I urge the Honourable Railway Minister to ensure adequate special trains to Kerala to meet the demands of the festive season. Thank you. Thank you, Honourable Viswanji. Manni Sri Sant Balveer Singh ji. We say concern over exploitation of the women of the country, especially the women of Punjab in the Gulf. बहुत धन्यवाद सत्कारयोग उप चेयरमैन साहब ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 60 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ट्रैवल एजेंट गरीब घर दियाँ औरतां लड़कियां फसा रहे हैं जो बहुत छोटियां हैं उन्होंने वेटर वीजे ते खाड़ी देशों में वेच रहे हैं जिथे उन्हों का शोषण किया जा रहा उन्होंने घर या रेस्टोरेंटा काम करने का झांसा दे के दिता जाता है कि 35 तो 40 हज़ार तक तनख्वाह का झूठा भरोसा दिता जाता है तो फिर उत्थे इन्हां औरतां नूं अरबी भाषा में लिख के लिखे एक समझौते ते दस्तखत करन लई कहा जाता है जिसका वो नजायज़ फायदा उठा रहे हैं ये कारकुनां का एक वड्डा समूह है जिसका नैटवर्क देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों में फैलिया होया है वापस आईयां लड़कियां ने दस्सिया है कि उन्हां विच नेपाल दीयां औरतां भी हन जिस तो साबित होंदा है कि ये गिरोह अंतरराष्ट्रीय है हैरानी की गल यह है कि इन्हां औरतां नूं इराक विच भी भेजिया जा रहा है जिथे जाना बहुत मुश्किल है असीं खाड़ी देशों विच भारतीय दूतावासां दा धन्नवाद करते हैं जिन्हां ने अपने देश के दुखी नागरिकों नूं कढण विच मदद की है चेयरमैन साहब तुहाडे राहीं असीं विदेश मंत्रालय नूं बेनती करते हैं कि इस गोरख धंधे विच नाल जुड़े हुए लोगों दीयां गतिविधियां ते नज़र रखी जाए ਅਤੇ देश ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ट्रैवल ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ सख्त कार्रवाई की जाए थैंक यू धन्यवाद चेयरमैन साहब धन्यवाद Honorable Sri M. Muhammad Abdullah request to give preference to the online railway ticket holders for the parcel service as well. Honorable Deputy Chairman sir, thanks for the opportunity given me to speak on this special mention. Sir, the world's 4th largest Indian railways, which operate with more than 80% of passengers reserving online, is facing major problems in freight services. The reason is the meager availability of parcel service at intermediary stations. The parcel box at each train is filled from the source station, and the majority of the parcels loaded are to the destination station of the train. The passengers from intermediary stations are suffering a lot due to these preferential parcel services, and their parcels booked online are kept waiting at the intermediary station of the train, which is the source station of the passenger, for more than a week or some months. For example, if the person is traveling to a different location due to some necessity, and if he is sending his bike via railway parcel service, the bike must wait at the booking station for more than a week or months, and it might get damaged or rusted. The material loss is completely attributed to the poor passenger. Sir, it is even more pathetic if the passengers
source station and the destination station are intermediaries to the train. Sir, railways are still a preferential mode of transport for many of the passengers in India because of their affordability. Hence, I humbly request the Honorable Railway Minister via this August House to take necessary steps to work on the possible way to track and send the parcel based on parcel booking date on priority basis, so that no parcel should wait longer at the railway stations. Thank you, sir. Thank you, Mohammad Abdullah ji. Manye Shri Kailash Soni ji, concern over rising cases of destruction by wild boar. माननीय उपसभापति जी, मान्यवर, देश भर में जंगली सूअरों के कारण ग्रामीण जनजीवन को संकट उपस्थित हो गया है। जंगलों से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में इनके कारण आतंक मचा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भय व्याप्त है। आए दिन कृषकों के ऊपर इनके द्वारा हमले किए जाते हैं, जिससे अनेकों कृषकों की जानें जा चुकी हैं। अनेकों ग्रामीण जन घायल हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनके द्वारा कृषि उपज को भी भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। विशेषकर हमारे मध्य प्रदेश में गन्ना की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे। इसके लिए भारत सरकार से मांग है, सूअरों को मारने का कानून शीघ्र बनाने की आवश्यकता है। साथ ही जंगली सूअरों से फसल एवं जनजीवन की सुरक्षा के लिए कृषकों को बाड़ लगाने, बिजली के तार जो मानव जीवन के लिए नुकसान रहित हों की व्यवस्था के लिए कानून बनाने व अनुदान का प्रावधान किए जाने की जनहित एवं खेती की सुरक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। मेरी भारत सरकार से अपेक्षा है कि देश में जितने भी बंदूक लाइसेंसधारी हैं, उन्हें कृषि के समय, विशेषकर मध्य प्रदेश में गन्ना के सीजन के निश्चित अवधि के लिए इन्हें मारने की अनुमति देने के लिए जिला कलेक्टरों एवं अनुविभागीय स्तर के अधिकारियों को अनुमति देने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद माननीय सोनी जी। माननीय नीरज डांगी जी, डिमांड फॉर ए पॉलिसी फॉर फिलिंग अप सीट इन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय को सदन में रखने का अवसर प्रदान किया। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) द्वारा 8 विभिन्न विशिष्टताओं में राज्य के मेडिकल कॉलेजों एवं संबद्ध चिकित्सालयों के लिए कुल 496 पोस्ट MBBS डिप्लोमा सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई है। NBE के पत्र दिनांक 2/6/2022 के अनुसार इसमें से 50% तक सीटें सेवारत डॉक्टर से भरे जाने का प्रावधान है। यह भी उल्लेखित है कि काउंसिल Prime Minister Narendra Modi's vision of a digitally empowered nation has given rise to an extraordinary journey. Welcome to Prime Minister Narendra Modi's Digital India Revolution. Launched on July 1st, 2015, the Digital India program stands as a testament to the transformative power of technology. Its ripple effects have reached every corner of the nation, leaving no one untouched by the winds of change. एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ भारत के भविष्य को बदलने का एक खाका खींचा है और जिस बारीकी से सारी योजना की रचना की है, मुझे विश्वास है कि करोड़ों देशवासी जिन सपनों को संजो रहे हैं, वे सपने साकार होके रहेंगे। In the heart of rural India, the echoes of change resonate through the Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan, the world's largest digital literacy program. Over 6.1 crore citizens in rural areas have been empowered, their lives forever altered as they step into the realm of digital literacy. Imagine a world where physical presence is no longer a barrier to accessing essential services.
Jeevan Praman has shattered this barrier, generating over 7.18 crore digital life certificates and ushering in a new era of efficiency and convenience for our pensioners. कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। The beating heart of the Digital India revolution lies in the success of public digital platforms, Aadhaar, UPI, DigiLocker, Umang, Jeevan Praman and others. These platforms are not just tools, they are enablers of ease of living, transforming the lives of ordinary citizens across the nation. The initiatives born from this revolution embody the spirit of minimum government, maximum governance. As a result, India stands at the cusp of international recognition for its groundbreaking contributions to the digital world. हमारी अप्रोच टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि होलिस्टिक होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए जरूरी था कि वो इस सेक्टर के सभी आयामों को एक साथ कवर करे। Witness the birth of India Stack Global, a platform designed to showcase India's digital prowess to the world. A digital atlas featuring 12 key projects including Aadhaar, UPI, CoWIN and more, available in all UN languages. It's not just a portal, it's an invitation to the world to partake in the advancements of the world's largest democracy. The Digital India initiative was launched in 2015, laying the foundation for a comprehensive overhaul of our digital ecosystem. Let's explore the major initiatives that have not only shaped but revolutionized India's digital landscape over the past 9 years. In the span of these 9 years, the internet subscription has surged by 150% in both rural and urban areas.